बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। और ये सब कंसेप्ट पूरे हो जाने के बाद हम लास्ट में इस वीडियो को एंड करेंगे विद मिनी प्रोजेक्ट्स और फाइनल रिकैप के साथ। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं विद सेटिंग अप एंड इंस्टॉलिंग पाइथन एंड VS Code। लेट्स गो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन और VS Code, जिसमें हम पाइथन को लिखेंगे। उसको इंस्टॉल और सेटअप करने में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कहाँ से और कैसे पाइथन और VS Code को इंस्टॉल करना है और उन्हें कैसे सेटअप करना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपको इशू ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पाइथन को डाउनलोड करके। आप कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं और उसमें आप एड्रेस बार में लिख सकते हैं पाइथन डाउनलोड। आप जैसे लिखेंगे तो हमें आपको कोई और भी साइट नहीं, बस इस वाली साइट जो आपको दिख सकती है python.org से भी आपको बस ये डाउनलोड करना है। आप ये खोलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पेज खुल जाता है। आप नीचे आएंगे तो हमें बहुत सारे पाइथन्स के वर्जन दिखेंगे। अ, आप नीचे जाएं तो हमें बहुत पुराने भी वर्जन दिखते हैं, पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं होगी। हम बस लेटेस्ट वाले पाइथन डाउनलोड करेंगे और उसी में हम अपना सीखेंगे सब चीज़। आप इसमें डाउनलोड क्लिक कीजिए। नीचे जाइए और फिर आप अपने कोई भी अ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप कोई भी इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉलर है, विंडोज़ है तो मैं इसे विंडोज़ पे डाउनलोड करूँगा। फिर आप नीचे आइए, डाउनलोड इंस्टॉलर। और ये जैसे आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड स्टार्ट किया। अब हम इसे डाउनलोड होने देते हैं जब तक आप VS कोड का भी डाउनलोड करते हैं। अब आप नया टैब खोलिए और उसमें ओपन कीजिए VS कोड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे जाके इसमें पढ़ भी सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं कि इस VS कोड में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप उसमें फीचर्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं आप। पर अभी हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये VS कोड सपोर्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हम इसमें कोई भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अम, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें और सब क्या क्या फीचर हैं। आप इसमें वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गिट सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल होता है जिससे हमें कोड रन करने के लिए कोई और बाहर नहीं जाना पड़ता, हम VS कोड में कोड रन कर पाते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ दबाएंगे और एक नया पेज खुलेगा और आपका डाउनलोड खुद स्टार्ट होता है। तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप डायरेक्ट डाउनलोड लिख लगा सकते हैं। तो अब हमारा
पाइथन एंड VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पाइथन है और यह है VS कोड। सो पहले हम करते हैं VS कोड इंस्टॉल। जैसे आप ये खोलेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। हम इसमें करेंगे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। फिर आप चाहें तो इसमें आप डेस्कटॉप आइकन बना सकते हैं। फिर मैं रिकमेंड करूँगा ऐड ओपन विद प्रोटेक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये बहुत यूज़फुल रहता है। फिर आप ये दोनों टिक कर सकते हैं, ये भी आपके यूज़फुल रहते हैं इन फ्यूचर। Then click next and then click install and it will install your VS Code। मेरे में ये हो चुका है पहले से इंस्टॉल, तो मैं इसे अभी फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसके बाद सिंपल है, बस वो इंस्टॉल होगा और आपको VS Code आपकी विंडोज़ में दिखने लगेगा जैसे ये। इसके बाद हम करते हैं पाइथन इंस्टॉल। तो आपका ये डाउनलोड हुआ होगा, आपको इसे ओपन करना है। मेन में पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे को ये लॉन्च पाइथन एंड री इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं इसे री इंस्टॉल करूँगा। मैं इसे करूँगा लॉन्च। सो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यस यस करते जाना है। Then yeah, add commands directly to your path. Yes. For yes, you just need to write y। फिर आपको सी पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। नो, आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली आप अगर पाइथन लिखेंगे तो आपका पाइथन आ चुका होगा यहाँ पे। और अगर आपको चेक करना है कि पाइथन का कौन इंस्टॉल अच्छे से हुआ है कि नहीं, आप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट हो सकते हैं बाय राइटिंग CMD, प्रेस एंटर, आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए पाइथन माइनस माइनस वर्जन। इससे आपका जो भी पाइथन इंस्टॉल हुआ है वो वर्जन आपको दिख जाएगा, इसका मतलब है पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड को कैसे सेटअप करना है और उसमें हमें पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम सीधे एक नया फोल्डर बनाएंगे बाय गोइंग टू न्यू फोल्डर। इसमें हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रखना हूँ पाइथन। हम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे क्लिक करें और यहाँ पे आपका खुल जाएगा VS कोड इस फोल्डर में। अब आप जो भी फाइल इस एडिटर में ऐड करेंगे वो सीधा इस फोल्डर में जाके ऐड हो जाएगा। तो अब हम खोलते हैं VS कोड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्लेन टेक्स्ट के इनपुट ये ले रहा है, इसे नहीं पता है कि जो कोड हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि ये अ, अभी इनपुट ले रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ना कि पाइथन। अब तो इसे हमें बताने के लिए कि ये पाइथन जैसे इनपुट ले, फर्स्ट हम करेंगे इंस्टॉल एक्सटेंशन। आप इसे दबाएं, इस एक्सटेंशन को। इधर हमें सर्च करना है पाइथन। फिर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको ये सब आ जाएंगे, आपको सिंपली ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर अगर आप चाहें तो आप दूसरे एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जो है कोड रनर, कोड को रन करने में हेल्प करता है। आप सिंपली यहाँ पे रन दबाते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये वैसे भी हो जाता है पर इससे थोड़ा इजी रहता है और दूसरे लैंग्वेजेस में भी ये हेल्प करता है। दैट्स इट, यही मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अगर आपको चाहिए कि
आपको अपना VS कोड को सुंदर दिखना है तो आप कोई भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने मोनिफाई पूरा कर रखा है। आप इसे क्लोज कर दीजिए। और यही था बस पाइथन इंस्टॉलेशन और VS कोड सेटअप करने के लिए। हाँ, अगर आपको चाहिए कि VS कोड एक्सेप्ट करे पाइथन को, कोड को, और उसे समझे और उसे एग्जीक्यूट करे, तो आप इसमें जस्ट प्लेन टेक्स्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ऊपर मेन्यू खुलेगा, इसमें पाइथन सर्च कीजिए और पाइथन। तो आप देख सकते हैं अब ये कलर हो चुका है। कलर हो चुका है उसका मतलब है कि VS कोड ने इसे इंटरप्ट इंटरप्रेट कर लिया है एज अ पाइथन कोड। अब ना इसमें हम इसमें रन कोड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो। सो यही था इंस्टॉलेशन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने ये कोड कैसे लिखा, ये बहुत सिंपल कोड है। और हम नेक्स्ट सीखेंगे कि इस कोड का मतलब क्या है। सी यू। तो पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले मैंने VS कोड कैसे खोल लिया है पाइथन फोल्डर में ही। पहले हम कुछ भी स्टार्ट करें तो पहले हम समझते हैं VS कोड है क्या। तो VS कोड एक IDE है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमने पाइथन इंस्टॉल तो कर लिया है, पर एक क्वेश्चन है कोड लिखने का। टेक्निकली हम नोटपैड में भी पाइथन कोड लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डेवलपर्स IDE या कोड एडिटर यूज करते हैं। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमें कोड लिखने, एरर आइडेंटिफाई करने और डिबगिंग करने और प्रोजेक्ट मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इस कोर्स में हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल जो आपके सामने है। तो अब हमने ये सब क्लियर कर लिया है तो हम अपना पहले फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे इन VS कोड। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ नहीं, जो मैंने आपको करके दिखाया वही करेंगे, बट इस बार मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोड में क्या हो रहा है। सो द कोड इज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोड VS कोड इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन पाइथन, देन हाँ ये इट गॉट रिकॉग्नाइज। सो अब इस कोड को हम रन करते हैं। अगर आपके VS कोड में रन बटन दिख रहा है तो उससे क्लिक कर सकते हैं, या फिर टर्मिनल ओपन कमांड करके भी लिख सकते हैं, बट हम कोड रनर डाउनलोड किया है और हमें रन बटन दिख रहा है तो हम सीधे इसे रन करेंगे। हम या तो क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन भी दबा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट। तो हम इसे रन करेंगे एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। अब इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंट। इसका काम होता है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस आती हैं, फिर कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पाइथन इस पूरी लाइन को पढ़ता है और कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। सिंपल सा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगर हम मैसेज चेंज करते हैं तो क्या होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड से हम कर देते हैं वेलकम टू पाइथन। अब इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट चेंज हो गया है, हेलो वर्ल्ड से वेलकम टू पाइथन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय नेम इज राहुल। सो फिर से रन करते हैं। आउटपुट में वही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो हम कोड्स के अंदर लिखेंगे। दैट्स
That's the idea, simple it is. माय नेम इज राहुल, हमने जो लिखा कोट्स के अंदर वही यहाँ पे प्रिंट। अब हमने एक प्रिंट लाइन प्रिंट करके दिखाई। एक प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही लाइन के लिए नहीं होता। हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे यू कैन राइट एंटर। हमें सब चीज कोट्स के अंदर लिखनी है। अब हम इसे नोटिस रन करेंगे तो हम ये नोटिस करते हैं कि हर प्रिंट स्टेटमेंट अलग लाइन में आउटपुट दे रहा है। जैसे ये वेलकम टू पाइथन एक संग नहीं है, ये वेलकम टू पाइथन अलग अलग लाइन में। यही पाइथन प्रिंट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि वो हर एक लाइन एंड करती है विद अ न्यू लाइन। तो यहाँ पे वेलकम के बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट होती है, जैसे टू, देन टू के बाद अलग न्यू लाइन हो जाता है पाइथन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। क्या प्रिंट सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। हम नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन सबको हटाएं और लिखें से रन करें, नोटिस करिए यहाँ नंबर से के अराउंड कोट्स नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं न्यूमेरिकल है। उनकी डेटा टाइप अलग है, तो हम उन्हें अलग तरह से लिखते हैं और वो पाइथन अलग तरीके से उन्हें ट्रीट भी करता है। सो पाइथन सिर्फ नंबर प्रिंट नहीं करता, वो कैलकुलेशन भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम बस नंबर प्रिंट करें। पाइथन एक हम बहुत इजीली हमें कैलकुलेशन अलाउ करता है नंबर के साथ। जैसे अगर हम इसे रन करें तो पहले पाइथन इस चीज को कैलकुलेट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है और फिर उससे डिस्प्ले पे आउटपुट देता है, दैट इज 30। यू कैन सी। सो क्योंकि पाइथन ने पहले एडिशन कैलकुलेट की और फिर रिजल्ट प्रिंट किया। अ, और हम यहाँ पे सिर्फ एडिशन नहीं, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक ऑपरेशन लिख के दिखा दूँ कि what are the operations that we can do in Python. We have addition, we have subtraction, they are simple symbols, and for division we have this slash. Then for multiplication we have this। जो मैं आपको एक और ऑपरेशन बताता हूँ, वो जो है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन कुछ नहीं, बस सिंपल डिवीजन है, जिसमें पाइथन जो है जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पॉइंट है उन्हें हटा देता है, वो हम देखेंगे जो आउटपुट में। एंड देन देयर इज रिमाइंडर, जो रिप्रेजेंट होता है बाय परसेंटेज साइन। इसका ये बस रिमाइंडर बताता है, जैसे 10 divided by 3, what is the remainder? That is 1. That will be the output of this operation. So हम अभी ये प्रिंट करके देखेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, वो क्या आउटपुट देते हैं। जैसे दिस इज माइनस multiplication, and we have division, we have floor division, it removes the part after the point, and we have remainder। आप ट्राई कर सकते हैं गैस करने के लिए इन सब पे क्या आउटपुट होगी। आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार गैस करने का ट्राई कीजिए। तो तुरंत करता हूँ, आपने गैस कर लिया है तो दिस इज द आउटपुट। 15 minus 15, that is 35। 6 into 8, 48। 20 divided by 5 is 4। Division का output is always a decimal, a number with point, that is in Python called as float number। Then we have float division. See, it simply removes the number after the point, that is point 0 is not there. Then remainder, it returns the remainder।
and we can say 10 divided by 3, we get remainder 1, so that is that. तो अब एक छोटा सा प्रिडिक्शन गेम खेलते हैं फिर से। मैं कोड लिख रहा हूँ और आप पूरा पॉज कीजिए और प्रिडिक्ट कीजिए आउटपुट क्या होगा। सो वी हैव run and the output is 100. अब एक और एग्जांपल, if we have we write this, what do you think will be the output? Again 100। ये भी प्रिंट 100 प्रिंट कर रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में 100 एक स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट, दूसरे वाले एग्जांपल में 100 एक इंटीजर है यानी नंबर। अभी शायद ये डिफरेंस विजिबल ना हो लेकिन जब हम वेरिएबल और कैलकुलेशन सीखेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो वी विल से इट नेक्स्ट। तो अब तक हमने देखा कि प्रिंट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हैं लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। हम प्रिंट फंक्शन को डिटेल में समझेंगे क्योंकि आगे पूरे कोर्स में हम इसे बार बार यूज करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि अब से आप सिर्फ देखना नहीं, हर एग्जाम्पल को मेरे साथ टाइप भी करें। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे और खुद कोड नहीं लिखोगे तो प्रोग्रामिंग सीखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो VS कोड ओपन रखिए और हर एग्जाम्पल के बाद कोड रन भी कीजिए। यहाँ पे थोड़ा रिपीटेशन हो सकता है क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा आपको पहले से सिखाया, पर उस वो मैं आपको बस थोड़ा एक्सपोजर देना चाह रहा था एज अ योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा एक और बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ताकि एक सेक्शन वाइज वीडियो बन सके। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर से जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम में बनाया होता है, दैट इज हाउ टू प्रिंट टेक्स्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे आप सोच ही सकते होंगे इसे हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। फिर भी आ, मैं आप अभी इस बार से जो मैं लिख रहा हूँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और गेस करने की ट्राई कीजिए कि आउटपुट क्या होगा। सो रन करते हैं एंड द आउटपुट इज हेलो। यहाँ एक चीज नोटिस करिए, जो टेक्स्ट कोड के अंदर लिखा हुआ था वही एग्जैक्टली में आउटपुट में प्रिंट हुआ। पाइथन उस टेक्स्ट को चेंज नहीं करता है, बिल्कुल भी जो लिखोगे वही डिस्प्ले होगा। So we move on to next example. We try to print another text. Say welcome to Python. हम इसे रन करेंगे। जैसा आउटपुट में वही सेंटेंस डिस्प्ले हुआ एज इट इज, कोई भी वेलकम का डब्ल्यू छोटा बड़ा नहीं हुआ, जो हमने एज इट इज लिखा वही एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हुआ। इसका मतलब प्रिंट का बेसिक काम है, जो इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर देते हैं उसे स्क्रीन पर दिखाना। जैसे हमने पहले भी देखा, ये टेक्स्ट नहीं, ये नंबर पे प्रिंट फंक्शन एक नंबर प्रिंट कर सकता है, जैसे 10 विदाउट कोट्स, आउटपुट 10। अब एक और, अगर हम नंबर को चेंज कर दें to 1000, तो आउटपुट विल ऑल्सो चेंज to 1000। यहाँ नंबर के अराउंड कोट्स नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं लिखूं प्रिंट विथ कोट्स तो आउटपुट क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए और खुद प्रिडिक्ट करिए। आपने ये गैस करने का ट्राई किया होगा कि आउटपुट क्या होगा, शायद आप गैस भी कर लिए होंगे। चलिए रन करते हैं। मेरे स्टेप इंटरेस्टिंग बात ये है कि आउटपुट सेम दिख रहा है लेकिन इंटरनली ये नंबर नहीं, ये टेक्स्ट है। अभी दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन फ्यूचर लेक्चर में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब इन दोनों को
का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ आता है। तो अब हम चलते हैं यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट मल्टीपल लाइन्स, जैसा हमने पिछले बार सेक्शन में भी किया था आपको इन योर फर्स्ट प्रोग्राम। हम फिर से वही करेंगे, दैट इज प्रिंटिंग मल्टीपल लाइन्स। और अगर हम टेक्स्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम we will use double quotes. We can also use single quotes, but for we are using double quotes. We will explain. I will explain that what they mean, what's the difference between them. So अब सपोज मुझे तीन अलग अलग मैसेज प्रिंट करने हैं, जैसे एप्पल, हाँ ये तीनों हमने कोट्स के अंदर तीन अलग लैंग्वेज लिखे हैं। नोटिस करिए हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट एक न्यू लाइन में आउटपुट दे रहा है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। इसलिए जब भी अलग लाइन में आउटपुट चाहिए होता है, हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले बार देखा था, हम पाइथन से पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते, हम कैलकुलेशन प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे तो पाइथन पहले इन्हें कैलकुलेट करेगा और फिर उसे प्रिंट करेगा। You can see first it add the value and then it printed it on the display. एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, अब यहाँ पे पाइथन पहले इन नंबर को सब्सट्रैक्ट करेगा और फिर प्रिंट करेगा। We can see that in the output. Similarly, we can do multiplication like this. This 56. Division, as you can see, division gives us a floating number, float number, a number with decimal point. तो नोटिस करिए आउटपुट चार नहीं बल्कि 4.0 आया। क्यों? इसका आंसर हम डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, मैं कोड लिखूंगा और आप आउटपुट गेस करिए। इट्स अ इजी वन फॉर द फर्स्ट। तो पॉज करिए और इसका आउटपुट गेस करिए। चलिए रन करते हैं। दैट इज 15। नाउ द सेम थिंग आई विल राइट, but like this. We have 5 inside quotes, then 10 inside quotes. Now pause the video and try to guess what will be the output. अब इसे रन करते हैं। Hmm, ये देख के बहुत बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं आंसर 59, लेकिन नहीं। यहाँ दोनों वैल्यूज टेक्स्ट पाइथन उन्हें ऐड नहीं करता, सिर्फ जोड़ देता है। इस प्रोसेस को कंकैटिनेशन कहते हैं। स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में हम इसे और डिटेल में समझेंगे, अभी आपको इसकी टेंशन नहीं की जरूरत। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट का एक और यूजफुल फीचर है, दैट इज प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। अगर हम लिखें प्रिंट quotes, we need to write text, so we write quotes and comma, then number. We have written two different values inside the print function.
That is age, which is a text, and 20 or numerical value. Now, pause the video and try to guess what will be the output. Now I will run it and see. The output is age, the text part, and 20. So we are printing multiple values in a single line by separating them with a comma. तो पाइथन ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज के बीच में एक स्पेस ऐड कर देता है तो क्यों करता है और कैसे करता है वी विल सी इन फ्यूचर वीडियोस बट अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि if you want to print multiple values just add a comma between. Now another example, try to guess it also. Now it will be easy for you to guess. Pause the video and try to guess. Yeah, as expected, we get the first text, then a space, and then another text where the space is represented by the comma here. Now, if for example, similar होगा, pause the video and try to guess the output. I know you will guess it right now. Now I will run it, and then as expected, we get the output marks, space, and pickup. अब देखते हैं बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स तो ये सब मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती कि बेसिक नॉलेज उनकी क्लियर नहीं होती तो अभी हम बेसिक्स बनाएंगे बट अब अगर आपको ये एरर पता होंगे पहले से तो आप ये नहीं करेंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज you can VS Code you can say is very intelligent and you can spot the error and mistakes on its own but still I will give you time to try to guess what is the error here. So we will run and see. We got an error. And we can see the error is named error name hello is not defined. You will be able to understand this error in future, but the question error क्यों है? क्योंकि पाइथन सोच रहा है hello एक वेरिएबल लेकिन हम टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते थे टेक्स्ट को हमेशा कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है Python is treating this as a variable. We will see what is a variable in next lecture, but we don't want hello as a variable but as a text. So we will add quotes around it, which represents the text. So now we have print hello and that's inside the quotes. That is the text. Now we will print it, run it, see. Now there's no. Now another mistakes that beginners very commonly do is try to guess. Pause the video, what's from here. VS Code is obviously giving you a hint here, so we can't do anything about it. Let's run it. Yeah. See, now the problem is not hello because it's a text, because it's written inside quotes. But the problem is print. So reason Python case sensitive language है स्मॉल पी और कैपिटल पी दोनों डिफरेंट होते हैं इसलिए फंक्शन का नाम हमेशा लोअर केस में लिखें सो here print which is a function defined as print with a small p if we write it with capital P it will give us an error because Python is a case sensitive language so we will write it with small p
See, the error is sorted. Now, we will see another common mistake that beginners do. That is the common mistake 3. This mistake is hard to do in VS Code because it auto close the quotes. Means if we start with the double quotes, it will end automatically end it with double quotes also. But if you're using another editor and don't have this feature, this mistake is very possible. So we use double quotes and then it got ended with a single quote. Then if we try to run it, it obviously gives us the error that the text should start and end with the same type of quote. If it was a single quote at the start, this would have run fine because Python allows text to be enclosed with double or single quotes. Both are allowed. Now, another mistake then, common mistake number 4 that a beginner can do is this. Again, very hard mistake to do in code editors like VS Code because it auto close the brackets, but still a thing to keep in mind. See, it says bracket was not closed. So we will close it, run it again, and now that is sorted. Uh, Now, common mistake 5 that some people can mistakenly do is this. They can close an already closed bracket. So you can already guess what is going to happen. Uh, yeah, because we use double quotes here, we can use a limit. So thing is clear. अब मैं इंटेंशनली कुछ गलत कोड लिखूंगा मैं चाहता हूँ आप पहले खुद मिस्टेक आइडेंटिफाई करो वीडियो पॉज करिए 3 मिस्टेक आइडेंटिफाई करिए जो मैं खुद आपके सामने लिखने वाला हूँ मेरे को पता है एक इजी है प्रीवियस कोड आपको बहुत अच्छा हिंट भी दे रहा है यहाँ पे but that's what make VS Code so good. It make it hard to do mistakes. So video pause करिए and guess the error. तो चलिए देखते हैं yeah so we got only a single error that's a thing to notice that is we have 3 errors here but only the first one got uh, recognized and Python throw the error immediately without उसने देखा नहीं कि आगे की 2 लाइन में भी error उसने बस फर्स्ट लाइन में error देखा और error थ्रो कर the first line capital E we will fix it and see what we get see now uh, when हमने कर दिया हमने फर्स्ट मिस्टेक रिमूव की तो पाइथन सेकेंड लाइन में एरर देखता है और उसको थ्रो कर देता है और वो चेक भी नहीं करता कि थर्ड लाइन में भी एरर है इसलिए थर्ड लाइन इज नॉट इंक्लूडेड फिक्स the code. Now see the 2 lines don't have error these 2 lines so it executes them successfully but fine see these are executed error in the third line and it gets blacked out as in so we will fix the error that is adding the double quotes on the text and we'll run it. Now the 3 lines are error free since we don't got that. अगर आपने ये 3 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली हैं तो आप डिबंकिंग का फर्स्ट स्टेप समझ चुके हैं अब एक क्विज करते हैं क्वेश्चन वर्क what will be the answer
So we will run it, and as everybody can guess, it's 30. It gets calculated, and then output is printed. Now, what will be the output now? We have seen this problem already, but still try to guess the answer. Will it be 30? Let's no, because these are treated as text and are just added, concatenated into each other, not added, and are not treated as numbers. Now, another simple question, what will be the output of this? Take a guess. We run it as we all know it's a text, so it got printed normally without Python interfering here. अब आपके लिए एक छोटी प्रैक्टिस वीडियो पॉज करिए और ये प्रोग्राम खुलिए एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें फर्स्ट लाइन विल बी माय नेम इज एंड योर नेम सेकंड लाइन विल बी आई एम लर्निंग पाइथन थर्ड line will be my favorite game is dash you can write any of your favorite game in the dash my favorite movie is your favorite movie these are will be the four line each will be a new line. Then in fifth line, print 300 by adding two numbers. You don't have to use double quotes or text. You have to use addition to print 300. Then in the sixth line, you have to print 100 by multiplying two numbers without using any quotes or any other text. Just use number. So pause the video and come back here to see the solution. I will now write the solution. It's an easy one. So as I said, print my name is what? Then the next line we want my I am number 5. Third line will be my favorite. You can write anything here. I am just writing mine. Mm, Then we have to write 300 by adding two numbers, so take these comparing two numbers without using quotes. So we will go 150 plus 150, that will be 300. And then we have to write 100 by multiplying two numbers, which can be anything, or multiplying 25 by 4. We can do anything but use multiplication without using text or double quotes. We'll run it, and we don't get any error, and we got everything as we needed. अगर आउटपुट सही आ रहा है बहुत बढ़िया अगर एरर आ रहा है तो घबराइए मत प्रोग्राम में एक नॉर्मल पार्ट है एरर्स को पढ़ना और उन्हें फिक्स करना हर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी डिवेलपिंग करता है ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग आ जाए तो आप एरर नहीं करेंगे बिल्कुल भी हाँ, तो अब हम आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना सीख चुके हैं लेकिन चीज़ें दिखाना सीख चुके हैं हाउ टू शो टेक्स्ट नंबर्स एंड हाउ टू डू ऑपरेशन एंड शो द टेक्स्ट लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी तक हम हर वैल्यू मैनुअली लिख रहे हैं अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नेम बार बार यूज़ करना हो तो या कोई एक ही जगह स्टोर करना हो तो हर बार मैनुअली लिखना प्रैक्टिकल नहीं है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर कैसा होता है वेरिएबल्स क्या हैं और उनका यूज़ क्या है और यूज़ कैसे करते हैं सो वी विल मूव see that in the next section. Thank you.
तो वेलकम बैक एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन इंस्टॉल किया, वीएस कोड सेटअप किया और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा। हमने प्रिंट फंक्शन को भी डिटेल में समझा और देखा कि स्क्रीन पर आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है। सपोज मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ और मुझे एक स्टूडेंट का नाम 20 अलग जगह यूज करना। अगर मैं हर जगह मैन्युअली राहुल लिखूंगा और बाद में नाम चेंज करना पड़े तो मुझे 20 जगह एडिट करनी पड़ेगी। या अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 100 जगह से यूज हो रही है तो हर बार वैल्यू दोबारा लिखना प्रैक्टिकल नहीं है। प्रोग्रामिंग में हमें रिपीटिशन अवॉइड करना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। सो हम इसे रियल लाइफ एनालॉजी से समझेंगे। से वेरिएबल्स को समझने का सबसे इजी तरीका है एक रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वाटर बोतल, बॉटल के अंदर पानी है। अब अगर मैं बॉटल का पानी निकाल कर जूस भर दूं तो बॉटल वही है, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई। वेरिएबल भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वेरिएबल एक कंटेनर है और उसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज पानी या फिर जूस। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे घर में लॉकर्स। हर लॉकर का एक नंबर है। तुम किसी लॉकर में डॉक्यूमेंट रख सकते हो, किसी लॉकर में ज्वेलरी, किसी और लॉकर में कैश। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स वैसे ही लॉकर्स की तरह होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लॉकर्स की जगह कंप्यूटर मेमोरी होती है और डॉक्यूमेंट्स की जगह डेटा, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है। टेक्स्ट, नंबर, boolean value that is true or false, or any other data type, list, dictionary, tuples. We will see all of them later. तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या डेफिनेशन पूछी जाए, क्योंकि डेफिनेशन पता होना भी जरूरी है फॉर क्लैरिटी, what is variables exactly in concise form. A variable is a named memory location used to store data. सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल एक नाम है जो एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू जहां हम डेटा को मेमोरी में स्टोर और एक्सेस करते हैं यूजिंग दैट नेम। तो थ्योरी काफी गई। अब को लिखते हैं और समझते हैं वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो। जो हम बीएस कोड में है जैसा देख सकते हैं। We will save this first. You can simply press Ctrl S, Ctrl plus S. We will name it as variables.py. By adding .py, you have it already, so I'll name it anything else. Variables1.py. When you add .py and the name of the file and save it, see, VS Code automatically change the format of the page from plain text to Python. You don't need to go through the process of doing that. So that was one thing I needed to state to you guys. So अब शुरू करते हैं कि हम वेरिएबल कैसे लिखें। तो हाँ, ये है एक वेरिएबल लिखने का तरीका। ये हमारा पहला वेरिएबल है। अब इस लाइन को ध्यान से समझते हैं। लेफ्ट साइड में है नेम, ये वेरिएबल का नाम है। बीच में एक इक्वल का साइन है और राइट में है राहुल। पाइथन इसका मतलब समझता है। राहुल जो कि एक वैल्यू है, उस वो
एक डेटा है जो हमने असाइन किया है एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम। तो ना अब पाइथन ने एक नेम नाम का वेरिएबल बना रखा है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा स्टोरेज, डेटा मेमोरी को हमारे कंप्यूटर में, और जिसको पाइथन ने वैल्यू दी है राहुल। और ये वैल्यू देता है पाइथन बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल्स टू। तो अब नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर्ड है एक टेक्स्ट जिसे हम पढ़ सकते हैं एज राहुल। सो एक अगर ये टेक्स्ट है और प्रिंट फंक्शन एक टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, तो वी कैन राइट that is print will print the value stored inside this variable, which is, so it's basically written as, but we don't have to write Rahul but again, and we can simply write name, and it will use the value stored inside the name, that is the same. So now run करते हैं, we have to say we don't need to write name again and again. We can simply do name again without having to write Rahul again. We will get the and see, we have printed Rahul two times, but say we don't, the name is changed. We need some another name, say Gaurav. So instead of having to change the two lines or multiple lines where this variable is used, we can change the value stored inside it. And then if we run it, see, it got changed everywhere. We don't need to have to go to every place where Gaurav was written and change it individually. So हमने print राहुल नहीं लिखा, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा। पाइथन ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अब एक क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए और प्रिडिक्ट करिए आउटपुट क्या होगा। वी हैव एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर फिर अब हम इसे रन करते हैं, and the answer as we all know is Delhi। बिल्कुल सही। नाउ वेरिएबल सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, हम इसमें चाहे तो कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जो भी पाइथन लैंग्वेज में डिफाइन। जैसे हमने एक और डेटा टाइप देखा, other than text, that is a number. So we can write a variable named age, assignment operator, assigning the variable of numerical value, say print, and now the variable is print function we will use to show the output on the screen, as print can also print the numerical value in the screen. We will directly do that. And we got, and we will the this can happen sometimes because VS Code has not refreshed like the text with that we have written. It would have seen this only. So that's can happen sometimes. We just need to run it again. एक और एग्जांपल देखते हैं, let's go now. Print one. Camera, and we got the value printed which is stored inside them. अब हम देखते हैं, ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड टेक्सचुअल। बट व्हाट इफ
we want to store a value that have a decimal point in it, say CGPA, which is a number that have a point in it. What will happen if we try to print? So will it give us error? No, because this is also another data type called as float, and it also gets printed easily by the print function. Now we have another data type. We will see all of these data types in details in future, but I'm just showing you the values that the variable can store inside them. This is a Boolean variable. Boolean simply means true or false. There are two values possible only, and we can even print these Boolean type values, and it will be shown in the output. ये values are future में conditions और decision making में use करेंगे जो if else while और बहुत से चीज़ों में use होगा. एक प्रोग्राम हम अब बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करेंगे सिर्फ एक वेरिएबल में नहीं. से we have a variable named Rahul, a variable storing a numerical value of 19, a variable storing the scripting names. Now we will print each of this variable, not the variable, the value stored inside. And as each print statement print the value in a new line, you obviously can predict what will be done. Still, pause the video and try to figure. Let's get it. Yeah, we got the Rahul 18 value in the same sequence as we have recently. Now we don't have to write like each value in one in multiple lines as print statement can print multiple values in a single line. First pause the video and try to print the same thing but in a single line, not in a new line. I hope you are doing it. So let's me show you how it's done. Yes, name, comma, age. Um, So this is the way of printing a value, multiple values in a single line in a print by using for. The spaces are added automatically. See, and we can make it a bit more better by adding text to make it more meaningful. Like my name is. We don't need to add space here, comma, will represent space here. Inputs. And run it. Especially here, we forgot a comma. I did an extra space. That's not required. Let's run it and see. It's much better. I use all. It's just clean and now input. Now अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैंने लिखा है because 4 is equals to 50. अब मैं इसमें रन करूंगा हमें मेरा फंक्शन अब मैं इसको चेंज करता हूँ we have seen it but still try to guess what will the output will this code remain same or it will also change on the screen
as we would have guessed, it will change. वेरिएबल वही है, सेल्फ वैल्यू चेंज हुई, इसकी वजह से इसका नाम वेरिएबल है। नाउ आउटपुट कैसे करें? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट कैन बी अ कंफ्यूजन। So what you guys think will get printed? Yes, pause the video, try to guess it. And so let's see the output, and it's fixed. We don't got error. You may have think we will get error क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देती है इन फाइव। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो भी आपको मिला। अब हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं जो बिजनेस करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, सिंपल सी मिस्टेक है, बट स्टिल वर्थ डिस्कस। We have print media. So what do you think is the problem? See, we will run it. Error. क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं। The problem is variable हमने बनाया नहीं। So Python searched for it, but couldn't find it, so it gave an error. Name is undefined. Now we have defined the name, so we will not get the error. Now we will move on to the another mistake that people can easily do is to try to find the error here. So what is the error here? Pause the video and try. So as you may have guessed by this red line here, see it is showing name is not defined, but we have defined the name. The problem is Python is again case sensitive, so it tried to find name variable with n as small, but it couldn't find it, so it gave an n. Solution: focus on the case of the variable name that will solve the problem. See, we got no. Now in हमने समझ लिया वेरिएबल्स क्या हैं, वो सारे डेटा टाइप्स कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। बट हम कोई भी वेरिएबल पे कुछ भी नाम नहीं दे सकते, उसके जो रूल्स होते हैं और कन्वेंशंस होते हैं जो फॉलो होने चाहिए फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। सो टूल वन लेटर्स अलाउड है, जैसे हमने ये लिखा दिस इज फाइन, देयर इज नो एरर हियर। Second rules, numbers are allowed also. So we can write in the we can use number in the variables. See, there is no red line and we will limit no error. But the problem is, the thing to consider is these number can never appear at the starting of the name of the variable. So if we try to write, see, it gives an error. Number at the starting of the name or variable name is not allowed. It can be anywhere but not at the start. So we can have it here, we can give a small, not at the start. Then the third tool is underscores are allowed. So what is underscore? This is an underscore. So we can write student underscore name. As you may have guessed,
Spaces are not allowed in variable names, so we can write students space in this will be wrong. So as we can't write it, we replace space with the underscore which is allowed in variable name. So this is the right way of writing variable name. Uh, when space is allowed in here, that's why we use underscore. Then another rule, rule number 4 or 5, for keywords are not allowed as variables names. So we have if, else, while, many other keywords that we will see. These are reserved in Python and cannot be used as variable names. So if we run, say it gives an error because it is a keyword. So we can't use keyword as variable name. Now, there are some these were all the rules that you need to focus on. That is, use letters, use numbers but not at the start, use underscore, they can be used anywhere, and spaces are not allowed, and keywords are not allowed as variable name. But not every variable name which is legal is a good name, uh, as variables are read by the developers themselves. If we have written code and if another person is reading this code, that person should be able to understand it. But if variable names are not written अच्छे से, then that will be a mess. So what are bad, good names of variables? So say you need to store name of student and you store it like this as shortcut. Yeah, it will make writing variable names faster and you can write it first or multiple times. That's it. But if any other person use same variable a, means if a person see a in anywhere in hundreds of lines down below, because programs are very large, then they will never be able to understand that a stores a name. So these variable names should be meaningful and should be named such, such as like this, or it can also be this. What it do, it makes variable name meaningful, and if these two are used anywhere on thousands of lines below, you will still be able to understand that this stores some name. You may not able to guess it from what name, but still you will know that it represents a student name, not anything else, not a number or anything. सो प्रोग्रामिंग सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं लिखी जाती, हम ह्यूमंस भी कोड पढ़ते हैं। रीडेबल्स ने फ्यूचर में डिबगिंग और मेंटेनेंस को बहुत इजी बना देते। सो नाउ चलिए अब हम आते हैं क्विज टाइम पे। So I will write some simple questions that we have discussed in this section of the video, and you guys will like to guess the answer. It's very simple. First reading and answer the question. I will show you the output. 18, that was easy. Now again, let's test your memory. If you can answer the question, it's very simple. Now, what will be the output? Pause the video and try to answer. Let's see the answer. And yes, the latest value of the variable is considered. Old value is discarded simply. The older value is simply not stored anywhere. Now, is this
variable name is valid or not. Pause the video and try to guess. Eliminate if there is error, it's not valid. So there is no error, so it's a valid name. Now, is this a valid variable name? Pause the video and try to guess it. As you can say, it's already marked correct. So you already know the answer. It's wrong because numbers can be used in variables, but not at the starting. Now, टैक्टिक्स एक्सरसाइज अब आपकी बारी है। वीडियो पॉज करिए और ये प्रोग्राम को लिखिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखना है। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक नेम वेरिएबल बनाए उसमें आपका नाम स्टोर करे, एक एज वेरिएबल बनाए उसमें आपका एज स्टोर करे, एक स्कूल वेरिएबल या कॉलेज वेरिएबल बनाए उसमें आपका कॉलेज का नाम स्टोर करे, एक सिटी वेरिएबल बनाए और उसमें आपका सिटी का नाम स्टोर करे। और इन सब चीज को आपको एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना है, नॉट इन मल्टीपल लाइन्स। पॉज द वीडियो, ट्राई एट दिस क्वेश्चन। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ, इसे आपने खुद से मैच करने की ट्राई करें। So we have it. If we have it in the same thing, we will get the same output, that is the correct answer. अब एक चैलेंज। अब इसमें दो और वेरिएबल ऐड करिए, एक फेवरेट गेम का और एक फेवरेट मूवी का, और सबको प्रिंट करिए एक सिंगल लाइन में। ये भी सिंगल चीज है, ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉज करिए और ट्राई करिए। आपने कर लिया होगा। मैंने आपके लिखना है the solution, see if you have it right or not. Open your space inside there. It's mostly just use that the point. अब हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना सीख गए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथन को कैसे पता चलता है कि कोई वैल्यू नंबर है, टेक्स्ट है या डेसिमल है? इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है डेटा टाइप्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे कि पाइथन इंटरनली डेटा को क्लासिफाई कैसे करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू। सो वेलकम बैक एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। लेकिन एक क्वेश्चन, सपोज मैं एक वेरिएबल में 25 स्टोर कर रहा हूँ, 25 नंबर। एक दूसरे वेरिएबल में राहुल स्टोर करता हूँ, एक टेक्स्ट। और तीसरे वेरिएबल में 9.56 स्टोर करता हूँ, एक फ्लोट वैल्यू।
क्या पाइथन इन तीनों को सेम तरह ट्रीट करेगा? बिल्कुल नहीं। पाइथन को पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, क्योंकि हर टाइप के साथ एक सा, हर डेटा टाइप के साथ ऑपरेशंस भी अलग होते हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे घर में अलग अलग कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर्स में चावल रखे हैं, एक में दूध, एक में पानी, एक में शुगर। एक सब कंटेनर्स हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट अलग है। इसी तरह वेरिएबल्स कंटेनर हैं और डेटा टाइप्स बताते हैं कि उनके अंदर किस टाइप का डेटा है। So, what is data type? Simple definition: a data type tells Python what kind of value is stored in a variable. यानी अगर वेरिएबल के अंदर नंबर है तो पाइथन उस नंबर की तरह उसे नंबर की तरह ट्रीट करेगा। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की तरह, अगर डेसिमल है तो डेसिमल की तरह, और अगर ट्रू या फॉल्स है तो बूलियन की तरह। आज हम पाइथन के चार बेसिक टाइप्स सीखेंगे: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ये बिगिनर लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। पाइथन में और भी डेटा टाइप्स हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक्स हैं और इन्हें भी हम ऊपर ऊपर से करेंगे अभी। इन्हें डीपली हम आगे और पढ़ें। तो सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूरे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल: so age is equals to 20, marks is equals to 95, temperature is equals to -5. So यहाँ पे हमारे पास पूरे नंबर हैं, बट इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं, तो इन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स। अगर हम इन्हें रन करेंगे तो सिंपली नो एरर बिकॉज ये नंबर। इन्हें हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। age, हाँ, रन करेंगे और हमें सिंपल वैल्यू मिली। अब आते हैं फ्लोट पर। फ्लोट वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। मीन्स हम एग्जांपल लें 6। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा सा। ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें जो डेटा स्टोर है वो नंबर्स हैं, बट इनमें डेटा पॉइंट डेसिमल पॉइंट है। तो ये इंटीजर्स नहीं, ये फ्लोट्स है। प्रिंट करके देखेंगे। ये नाम पता प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज नंबर विद डेसिमल। अब आते हैं हम स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग सिंपली टेक्स्ट होता है। जो भी चीज कोड्स के अंदर होती है पाइथन उसे स्ट्रिंग्स मानता है। ये कोड सिंगल हो सकते हैं या डबल, या थ्री डबल या थ्री सिंगल्स कोड्स भी हो सकते हैं। हम इन्हें डीपली बाद में पढ़ेंगे, बट सिंपली आप इसे समझ सकते हैं। एनीथिंग विद इन double or single quotes is a text in Python. For example, will so these are text as they're enclosed within double quotes. It can also be a single quotes. So maybe not very thick.
They are treated as text. Both data type है boolean. boolean सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, दैट इज ट्रू या फॉल्स, बस। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू boolean नहीं है। सो हम इससे ऐसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे दैट इज as we are asking a question in the variable is logged, means if the user is logged in the system or not. It's true, so we store true. It's student if the user is student. False, so the user is not student. So it carry a meaning, and the important thing is that both of these are started with a capital letter. That is, it should be capital T or capital F. It can't be F, small f. It will be not considered a boolean value. It should be capital F. So now printing them will be simple and normal. Set. We will now print it. That's it. So now one question. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम हमें कभी नहीं हमने कहीं नहीं लिखा कि एज इज इंटीजर या नेम स्ट्रिंग है, फिर पाइथन को कैसे पता चले? पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब पाइथन खुद ऑटोमेटिकली डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है। प्रोग्रामर को मैन्युअली टाइप डिक्लेयर करना नहीं पड़ता। अब सपोज मुझे चेक करना है कि किस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है, उसका नाम है टाइप फंक्शन। तो written like this, एग्जाम्पल है, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 20। हमें पता है कि ईच वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर, पर हमें वो चेक करना है, तो हम यूज कर सकते हैं टाइप फंक्शन, और इसके अंदर हम इस फंक्शन के अंदर हम इनपुट डालते हैं द वेरिएबल जिसका टाइप हमें पता है। तो अगर हम इसे रन करें, तो पाइथन हमें रिटर्न करता है क्लास int, means the data type of the variable age is int, which means integer. Same चीज अगर हम करें with other variables of different data types, say CGPA, अब हमें CGP वेरिएबल का टाइप पाइथन रिटर्न करेगा, that is float, which in Python means the number with decimal point. Similarly, अगर हम दूसरे वेरिएबल्स लें जिसमें है of type string, इसका भी हमें टाइप मिल जाएगा, which would be string. Same thing is for boolean value. तो अब हम अपने एक क्विज करेंगे छोटा सा, जिसमें मैं आपको कोड दूंगा और आप ये पॉज करेंगे और उसको गेस करेंगे कि हमें पाइथन क्या आउटपुट देगा। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? This time we have not used any variable, we directly have used the value. So what do you think will be the output? Pause करो और आंसर।
तो होपफुली तुमने कर लिया होगा। हम उससे रन करेंगे तो हमें मिला integer because 100 is a number without any decimal point, so it is an integer. Next हम सेम चीज करेंगे with another value. So now we know what the real answers, but still false and true. So I will run it, and it's true because it has a decimal point. Now, what do you guys think will be the output of this? Pause the video and try. Let's see what will be the answer, and it's true because it's a number, but it's inside double quotes. So I can treat it as a text or string and see that the outputs. So notice करिए 100 यहाँ नहीं है, quote से अंदर है इसलिए string. So क्या beginner students के लिए बहुत important concept है, that is the difference between 100 and 100 with quotes. Now एक string और integer की property कह सकते हैं. So let me ask you a question. What will be the output of this and this? Pause the video and try. We have done this type of question. So as you would have guessed, it's 600 and it's 150. Answer 150 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नंबर नहीं, सॉरी 600 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है. पाइथन इन्हें एंड नहीं करता, ये दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है. इस प्रोसेस को स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं. इसके बारे में हम स्ट्रिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. So now I will discuss the common mistakes that the beginners do. So for example, we have age as a text. Pause the video and think what's the issue here. So now we will run it, and so you can see the error is that can only concatenate string, not into string. So reason, age text है 5 number है. Python strings और integer को directly add नहीं कर सकता क्योंकि वो simply नहीं add हो सकती है दो data types. Second mistake we have was 199. So what do you think the output will be? So कुछ students बोलते हैं integer लेकिन decimal इसलिए float. Mistake 3. So what you guys think will be the output? Pause the video and yeah. So many of you have thought the answer will be true, but no, it's a string because ये boolean नहीं है. ये string है because there are quotes around it. So the correct answer is it's a boolean. So now I will ask you some questions for a quiz. You will have to pause the video and try to answer the question correctly. So what will be the answer? So as you would have said, it, it's going to be int because it's a number. Now
If we change it to this, again try it. We have done it already, so it should be upload because it have a decimal point. And now, what we say, what it will be, float or string. So, as you would have said, yeah, as number is enclosed between the double quotes, it's still a text no matter how it is. Now, अब आपकी बारी है आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप चार वेरिएबल लेंगे एक वेरिएबल होगा नेम जिसमें आप अपना नाम लिखोगे एज जो उसमें आप एक इंटीजर वैल्यू लिखोगे सीजीपीए जिसमें आप फ्लोट वैल्यू लिखोगे एंड स्टूडेंट जिसमें आप एक बूलियन वैल्यू लिखोगे और आपको अगली चार लाइन में उन चारों वेरिएबल्स का टाइप प्रिंट करना आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए और ये कोड अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए होपफुली आप सबने ये ट्राई किया होगा मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ see if you have done it right on um, this is the program simple it is you will learn it and you got what we have taught so now it's string 20 it's integer it will call it float and 2 is a boolean value so खुद ट्राई करिए एक इंटीजर वेरिएबल बनाइए एक फ्लोट एक स्ट्रिंग एक बूलियन और सबका टाइप प्रिंट करिए आप एक घर में ऐसे सिंगल प्रोग्राम और बना सकते हैं सो अब क्विक रिकैप आज हमने सीखा कि पाइथन में अलग अलग टाइप्स के डेटा होता है इंटीजर पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है फ्लोट डेसिमल नंबर्स को दैट इज नंबर विद डेसिमल पॉइंट स्ट्रिंग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और एनक्लोज होता है डबल एंड सिंगल कोट्स में एंड बूलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है और हमने ये भी सीखा कि पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है और टाइप फंक्शन से हम किसी भी वैल्यू का टाइप चेक कर सकते हैं अब एक प्रॉब्लम आती है अभी तक हम हर वैल्यू मैनुअली कोड के अंदर लिख रहे थे लेकिन अगर मुझे यूजर से नाम पूछना हो या एज इनपुट लेनी हो या मार्क्स इंटर करवाना हो प्रोग्रामिंग तभी यूजफुल बनती है जब यूजर भी उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और इस इंटरेक्शन के लिए पाइथन हमें देता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज इनपुट फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजर इनपुट लेना टाइप कन्वर्जन करना और यूजर के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाना सीखें सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक पिछले लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग और बूलियन को समझा और ये भी देखा कि टाइप फंक्शन से हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम्स लिख रहे थे उनमें सारी वैल्यू हम खुद कोड के अंदर लिख रहे थे एग्जाम्पल के लिए नेम राहुल सो यहाँ नाम पहले से ही लिखा था लेकिन अगर यू प्रोग्राम यूज करने वाला यूजर अपना नाम
खुद एंटर करना चाहे तो, या एज एंटर करना चाहे, या मार्क्स एंटर करना चाहे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर पहले से यूजर का डेटा नहीं जानता। प्रोग्राम को यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। इसी काम के लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड एज input function. So this is the function that we will use to take input from the user. So we don't have to provide the program the hard-coded values, and so the program can accept the values from the user and then use those user provided values to perform some tasks that are useful for us. So what is input function? तो इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम होता है कीबोर्ड से यूजर की इंफॉर्मेशन लेना। जब पाइथन इनपुट फंक्शन देखता है तो प्रोग्राम रुक जाता और वेट करता है कि यूजर कीबोर्ड से कुछ टाइप करे। जैसे कि जैसे ही यूजर एंटर प्रेस करता है कुछ भी टाइप करने के बाद या फिर बिना टाइप करे, पाइथन उस वैल्यू को रिसीव कर लेता। सो चलिए अपना पहला इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र का नेम यूज़र से ही इनपुट करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। We will create a variable and we will take the input from the user using the input function. Inside the in this function, input function, we will write a prompt. That's all. And then we will so पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा कि इधर क्या हो रहा है। So we will run this program and see we got this text here, including the space. So use this and see it's the program यहाँ पे रुका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ा। और जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर अपने कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर ना करे और फिर उसके बाद एंटर ना लगाए। सो मैं लिखूंगा no, and then I will press enter and see the it as soon as I press enter, it received the value in the variable name and then it printed the value using the print function. It is print. So congratulations, अब हमारा प्रोग्राम यूजर से बात कर रहा है। सो अब हम इसे लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले हमने यूज किया इनपुट फंक्शन जो कि एग्जीक्यूट होगा और ये कीबोर्ड से इनपुट लेगा। अब हमने ये टेक्स्ट लिखी इन इनपुट फंक्शन के अंदर, उससे इस चीज को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये सिर्फ यूजर को गाइड करता है कि क्या एंटर करना है, दैट इज दिस मैसेज। तो यूजर नो कि उसे क्या इनपुट करना है उस टेक्स्ट बॉक्स में, दैट वाज दिस। अब यहाँ यूजर जो भी टाइप करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हमें सिर्फ ये फंक्शन लिखना है और ये फंक्शन इनपुट देगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर सिंपली एक जो भी चीज़ स्टोर हुई है वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। नाउ मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करनी है और आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। इट्स सिंपल and it's the same thing that I have said. We have city. So pause the video and predict what will be the output here and what will user will see, what will user do, and what will user get after pressing the enter. So I will run the program and as you have predicted, we got the same prompt, means different prompt, but in the same way we will uh, give to you
the value that the prompt is asking us for, that's for what they are, and press enter, and it will get stored in the city, the value entered by the user, and it entered here, which you can see. It's simple. एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर पैटर्न का पेज इनपुट पेज so you can see how we are using the prompts. They are just there to guide the user that what they have put in the box, and we provided the input and what is printed using the print function. Now, आप एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संग देखें। इसमें हम एक नेम को इनपुट देंगे, इसमें हम अपना फेवरेट गेम इनपुट देंगे फ्रॉम द यूजर and favorite movie of the user we will take as input, and then we will print both of these in two separate files. Or we can do is that we will add a simple line whose value will be filled in by the user by the input. We will see what I am talking about. Say, okay, we will take the input from the user and ask the user to their favorite game. And in the second one, we will ask for the favorite movie of the user. We will give another from the user, set, and then we will print it in a interactive file. I'm embedding these value inputted by the user in our sentence. That is, you like, comma, game, and the movie name. So now whatever the user will input here and here, it will automatically get amended in this sentence because of comma, and so it will get a bit of interactive for the user as they will just enter the input and it will automatically get filtered. So we will run it. So we read it from here. So there was nothing wrong, it was just edited. So say we see as I press enter, the next prompt for the next input function okay, automatically. Uh, I will press enter and see what will be the output. You like service support, love the movie name pattern. So you see the game automatically game movie name automatically get inputted here. So that's the power of input function here. So now we will make another similar program where we will ask for the from the user the name, age, and city of the user, and we will then print them in a uh, pretty manner. So you will try this program yourself first. So what you have to do, get three variables and get input and add from the user name, age, city with prompt you will like to give to them.
Then uh, print a line named student details, and below this print name and the name of the user, age of the user, city and city of the user. Print it in the most prettiest way you think. So pause the video and do it yourself. So now I will do it. Hopefully you all would have tried it. So this is the program. There is the master, user for the content. We will add space, it makes the input perfect. Otherwise the column get attached to the input to user program. Each input function comes in a union, so it already looks full. And we will add a print function that is empty print function. It will add a new line without any text. So it will keep a break between the input and the uh, output we are trying to print. We will add some dashes to make it look a bit cleaner. So then we will print the user details. I need a space here. So that was it. It's an easy program to me. Now we will run it, and hopefully it will do what we want it. Maybe let's put it so interview, server, page, so wiki, so what's happening? We run it. I the 18. So, okay, and let's see what will we get when we press enter. And so it looks good. We got a new line. So this new line will put this into print function when we get print details and the way we want it. So it's good. It's look clean and pretty. So ये हमारा पहला इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट था एक छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अगर यूज़र कीबोर्ड से 20 एंटर करे तो क्या पाइथन उसे इंटीजर मानता है वीडियो पॉज करिए और सोचिए तो आंसर नहीं ये बिगनर की सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग so let's see with demonstration so we have age input input. So yeah, we want the input to be understand recognized as an integer because age में integer जैसी चाहिए हमें text नहीं चाहिए but Python अपने आप ये नहीं समझ सकता कि age should be an integer so what it think it is let's try to run it and use the type function from the previous lesson to see what type of data type is the variable age or the value stored in the variable age. So age,
Okay, educated in, so let's say 20. And now you can say it's it's getting recognized as a string, not as integer. So notice करिए हमने नंबर एंटर किया था लेकिन पाइथन ने उसे स्ट्रिंग माना रीजन इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है वाई अगर कीबोर्ड से हम ए या बी लिखें या 20 लिखें पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट इसलिए डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि जो भी यूजर टाइप करेगा वो स्ट्रिंग माना जाएगा सो अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जो इस इशू से अराइज हो सकती है फॉर एग्जांपल we have this program enter age so say we have need a program which returns the age of the user after 5 years so if we don't know that input function returns a string not integer on its own we would do this mistake. That is, we are trying to add here a string which is a number but enclosed in set quotes and adding it with an integer which will give us an error as we have seen in previous lectures. Alright, uh, the answer should be 30 but we get the error because we cannot concatenate string to integer. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पास एक सॉल्यूशन है दैट इज टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना सो वी विल गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप कन्वर्जन और फर्स्ट हम seeking how to convert the input we take from the user in the form of string to integer to make the program be returned to me. So first we will have the program conceptor searching and as you know it will give the error. So to fix the error we will use type conversion and for that we will use the function int. So this function is there to convert any suitable data type to integer type. So using this function, we can convert the string which contain integer type to integer by enclosing the whole function in the brackets of int function. So now hopefully this should run fine in the way we want. Let's we try run 25. Now the answer should be 30. Yeah, okay. So what we did here, the input function took the input from the keyboard in the form of string. It got converted into integer, and this integer value gets stored inside the variable age. You can see here, its age is a integer data type. So हम यहाँ पे क्या हो रहा है तो जब इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और स्ट्रिंग लेता है जो इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है टू द इंट फंक्शन और इंट फंक्शन उस इनपुट को कन्वर्ट कर देता है इन अ इंटीजर डेटा टाइप जो कि स्टोर हो जाता है एज फंक्शन हम इसे ये देख भी सकते हैं बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन इफ
age as input or we call argument in a type function, then we get the output as int because the user input get converted into the int type. But there is another problem that if the user didn't understand what they have to enter here or mistakenly entered something like this. Say hello. It's a text, uh, but the int function is expecting a numerical value to be entered here inside the quotes, but numerical value. But if we get a input like this, the int function will try to convert into a integer, but it will be not able to because it's simply not a number, and hence we get a error. So it's a thing to consider that the input should not be any text, but it should be a number enclosed within the double or single quote through input function. Now, similar to int function, we have float function that converts the input from the user or any number entered inside this function into float data types. So now we will see how to use this. So we will make a variable, we will make float function. So instead say let's take we will take an input from the user, we will ask for enter your which and the output this input function will give is will be a string. So we will convert that output into float by enclosing the it inside the float type conversion function. And then we can print it or simply use type function to see the type of the variable of the data being stored in the CDP variable. Now we will run it, and as we all know, the output will be float because the float function simply converted it to float data type. Now, as we have int function, float function, basically we have string function that is written like this, str, and what it do? So it simply converts anything that is written as argument inside the function into string. So say we have marks and its value is 95 and we have say marks 2 and its value is 100. So if we add them here, so it's normally it will give us 195 as both of them are integers. Let's do this. But if we use string function like this, it will convert both of these value that is 95 and 100 integer value into string. And as we know, when we add string, they get concatenated and we will get output of this. So एक और हम common mistakes discuss करते हैं कि what are the common mistakes that are done generally by the beginners. Uh, the one we have already discussed, a simple mistake that many people do is taking input as a string of a value that they think is an integer and then trying to treat that value as a integer, but internally it's a string internal. So we get the error as we are trying to add an integer with a string. So now the second mistake that people generally do is they can they do consider the input as a
int, but sometimes they end up adding the int with a string at last. This is not a common scenario, but it still can occur in different circumstances, not in this case. See, so we have to focus on what we are trying to add and what we are converting or not converting. It's an important aspect. So now we will do a quiz from what we have learned till now. So try to answer the question, pause the review, and see if you can answer it right. So what do you think will be the output of this lab? Pause the review and try to think it. We will run it, and as many of you have answered it correctly, it will be mm, yeah, provide input. Yeah, the answer will be string no matter what input we provide. We even if we even if we provide a numerical input, it will still be a string because input function different from string data type. Now, second question. So, what will be the output of we have done it just now, so can easily answer it. But I'll pause the video and try to answer this question. So let's see the answer. Yeah. And as you can see, when we don't provide any prompt inside the input function, we simply get the program just gets stuck without providing any information that what it wants and what type of value it wants. So it's important to write meaningful prompts inside the input function. So now we will so see we get our integer value because we use int type conversion function. Now similarly, what the answer of this? It's very simple, just like the previous question. I will not give. I don't think we will make time for it. Because yeah, it will be called as beyond. Now we will do a quick mini project जिसमें हम बताएंगे calculator. जिसमें calculator में basically एक adder जिसमें हम यूजर से मांगेंगे टू इनपुट टू इंटीजर और उसका हम ऐड करेंगे और उसका इनपुट हम यूजर को प्रोवाइड करेंगे इन ब्यूटीफुल manner. So pause the video and try to try to make this project yourself first, and I'm here to make it as always. So pause the video and try to it on your own first. Good. So hopefully you would have tried and many of you would have successfully have made it as we have discussed all the concepts we need to make this project. It's not a hard one. So say we have a variable and one. As we want to add two numbers, we will convert we will ask the user for integer value as we and also will give a prompt to the user to enter number or in string and then convert that input into integer and we will ask for second input in the prompt
Input function again. That's it. We now have two numbers, and now we will print the addition of these two numbers, which we simply can do inside the operator. So what is happening here? We take integer value from user, another integer value from the user, then we add them here and we can print them here basically easily at the print function. So we will run it now. Let's print it. We get first number, second number, we get addition of the answer as 30. So congratulations, the first interactive calculator ever simple. So एक और कोड आप लोग ट्राई करोगे जिसमें भी सो हमने कैलकुलेटर बना लिया है तो अब हम इस वीडियो को करते हैं रिकैप। तो आज हमने सीखा कि इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा लेता है। हमने ये भी देखा कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है और जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हम इन फ्लोट और स्ट्रिंग का यूज करके टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं दैट इज इंट फंक्शन फ्लोट फंक्शन एंड स्ट्रिंग फंक्शन। अब हमारे पास वेरिएबल्स हैं डेटा टाइप्स हैं और यूजर इनपुट भी आ गया है। तो अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटर्स यानी पाइथन कैलकुलेशंस कैसे करता है वैल्यूज कैसे कंपेयर कैसे करता है और लॉजिकल डिसीजंस के लिए ऑपरेटर का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक कंपैरिजन असाइनमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल से समझेंगे और ये समझेंगे कि ऑपरेटर्स असली में होते क्या। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। हमने सीखा प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्या है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और टाइप कन्वर्जन भी सीखी। अब सोचिए अगर मैं यूजर से दो नंबर ले लूँ, जैसे सेकंड नंबर लूँ, तो अब मेरे पास दो नंबर हैं लेकिन अब इनका करना क्या है। सपोज मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या कंपेयर करना हो कि कौन सा बड़ा है, ये चेक करना हो कि दोनों इक्वल है या नहीं। ये सब काम करने के लिए पाइथन हमें एक बहुत पावरफुल फीचर देता है, ऑपरेटर। आज का लेक्चर बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेटर ऑलमोस्ट हर पाइथन प्रोग्राम में यूज होते हैं। कैलकुलेटर बनाना हो, गेम बनाना हो, वेबसाइट बनानी हो, मशीन लर्निंग करनी हो, हर जगह ऑपरेटर का यूज होता है। सो व्हाट इज एन ऑपरेटर? सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन: operator is a simple symbol that performs an operation on one or more operands। ये डेफिनेशन थोड़ी बुकिश लग सकती है, इसलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं, 10 और 20। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे प्लस सिंबल यूज करना होगा, दैट इज दिस। यहाँ प्लस क्या है? ऑपरेटर, दैट इज। और 10 और 20 क्या है? ऑपरेंड्स।
These are called operands and this is a operator plus. यानी ऑपरेटर किसी वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. Now we will see the types of operators. पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं. हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. So what all the types of operator there are. So first we will see the arithmetic operators, then assignment operators, comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator, and at last bitwise operator. हम इन सब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को इस वीडियो में कवर करेंगे. पहले लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर्स करेंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में मैथ्स आ गया होगा और बिल्कुल सही सोचा. अरिथमेटिक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं. सबसे पहले ऑपरेटर है एडिशन इनसाइड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो हमने ये पहले भी कर रखा है. सिंपल सा है. अगर हम दो नंबर लें यूजर इनपुट भी हो सकते हैं तो हम सिंपली ए प्लस बी यूजिंग एडिशनल ऑपरेटर हम कर सकते हैं जो पाइथन इन दोनों नंबर को ऐड करेगा और आउटपुट देगा उनका एडिशन. तो इसे हम रन करते हैं और yes we got the addition of the two numbers. Now यहाँ पाइथन ने दोनों नंबर को ऐड किया. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैलकुलेटर में प्लस बटन दबाना होता है. अब एक क्वेश्चन छोड़िए अभी. इतना सिंपल है. अगर हमें ये सेम चीज़ यूज़र इनपुट से करनी हो तो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं जो कि इनपुट इंट फॉर्म में होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग्स को ऐड नहीं कर सकते जो इनपुट का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है. एंड फर्स्ट नंबर ये प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे. और सिंपली उसे ऐड करके प्रिंट करने के बाद नंबर प्लस और हमारा ये बन चुका है बेसिक कैलकुलेटर. सो हम इसे रन करेंगे. सपोज यूज़र पहले नंबर करता है 25 और दूसरा 17 तो आउटपुट होगा 42. ये देखिए हमारा प्रोग्राम कैलकुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है. सो अब मैं डिस्कस करूंगा कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं. जो फर्स्ट मिस्टेक जो करते हैं वो है कि वो इस इन फंक्शन को लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से जब ये प्रोग्राम रन करता है तो वैसे तो ये नॉर्मली रन करेगा बट हमें आउटपुट वो नहीं मिलता जो हम चाहते बिकॉज it's now adding two strings that is concatenation is taking place. So अब हम आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे. दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है. इसको हम दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपल माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है और ये दो नंबर लेगा और उसका सब्सट्रैक्शन करेगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा.
This is the output. So Python second value को first value से subtract कर देता है simple. Now अगला ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन. So say we have a variable length as 12 and breadth as 5. Then to print the multiplication, we will use simply the multiplication operator, which is represented by f as the symbol, and then we will do into right and we will run it. And we got the right answer. So suppose we uh, so प्रोग्रामिंग में मैथ सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती, रियल एप्लीकेशन में भी यूज होती है. हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है. दैट इज से इफ वी आई राइट दिस. सो वीडियो पॉज करिए और आउटपुट गेस करिए कि क्या होगा अगर हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें. सो वीडियो पॉज करिए और गेस करने की कोशिश कीजिए. तो अब मैं इसे रन करूँगा. And this is the output. Interesting. यहाँ मल्टीप्लिकेशन नंबर की नहीं, नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग को रिपीट कर रहा है. पाइथन ऑपरेटर्स अलग डेटा टाइप के साथ अलग बिहेवियर दिखा सकते हैं जो यहाँ पे हमें दिखे. नाउ हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं, दैट इज डिवीजन ऑपरेटर. सो एक सिंपल एग्जांपल इज सो we will get output that is 5.0. एक important observation, answer 5 नहीं है, it's 5.0. रीजन है पाइथन का नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है चाहे आंसर परफेक्टली डिविजिबल हो या ना हो. So if the number was not perfectly divisible like 50 by 4, we will get 7.5 because division operator returns a float value that is 7.5, number with a 1. अब एक मिनी एक्सरसाइज. अब तक हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लिया. अब आपके लिए एक चैलेंज. सो आपको यूजर से दो नंबर लेने हैं और उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रिंट करना. सो वीडियो पॉज करिए और ये अपने आप ट्राई कीजिए. तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ. प्रोग्रामिंग में सीधा कोड लिखना स्टार्ट करिए. पहले प्रोग्राम को सोचिए और फिर उसे कोड करिए. सो हम मैं इसका करने स्टार्ट करता हूँ. पहले हम लेंगे यूजर से इनपुट. हम will take it in the form of print and we will take second number. Now we will print first addition. Subtraction. Multiplication. As with division.
तो आई होप आपने ये प्रोग्राम सीख लिया बना के होगा। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था। तो अब इसको हम रन करेंगे and we will enter the first number and the second number and we got all the things that we wanted. We got addition, subtraction, multiplication and division of the number. So now in the next part we will cover the remaining arithmetic operators. तो अब तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लिया। लेकिन अब एक ऑपरेटर आता है जो बिगनर्स को पहली बार देखने पर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसका सिंबल है परसेंट। बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देखकर ये सोचते हैं कि ये परसेंटेज निकालता होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में परसेंटेज के लिए ये परसेंटेज ऑपरेटर परसेंटेज के लिए यूज नहीं होता। ये रिमाइंडर यानी डिवीजन के बाद जो वैल्यू बचती है उसे रिटर्न करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और मैं इन्हें तीन तीन स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हर स्टूडेंट को तीन चॉकलेट मिल जाएंगे। 3 + 3 + 3 = 9। लेकिन एक चॉकलेट बच गई। प्रोग्रामिंग में इसी बची हुई वैल्यू को रिमाइंडर कहते हैं और उसी को परसेंटेज ऑपरेटर रिटर्न करता है। अब कोड देखते हैं। So we have window 3. So what do you guys think will be the output? तो इसे हम रन करेंगे तो देखिए आउटपुट बना है, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। एक और एग्जांपल। So now we will run it, आउटपुट 0। इस बार रिमाइंडर 0 है क्योंकि 20 परफेक्टली 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 हो तो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होता है। अब वीडियो पॉज करिए, कोड मत रन करिए और पहले प्रिडिक्ट करिए आउटपुट क्या होगा। So what will be the output of this code? Try to guess it, pause the video. Now we will run it. आंसर 1, क्योंकि 4 6 टाइम्स 24 होता है और एक रिमाइंडर बच गई। अब क्वेश्चन है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है। बहुत जगह। ऑड और इवन नंबर चेक करने में, लीप ईयर चेक करने में, क्लॉक प्रोग्राम्स में, गेम्स में, कैलेंडर एप्लीकेशंस में और बहुत सारे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में। इसलिए ये ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके अपना पहला यूजफुल प्रोग्राम बनाते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल प्रोजेक्ट दैट विल बी इवन और चेक। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने आप सोच सकते हैं और कोड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल पहले वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, या फिर आप मेरे कोड को देखते हुए इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं। We will take a number that we will judge if it's even or odd. Then we will print number remainder. So यहाँ पे हम क्या करें,
सो पहले हम अगर इसे रन करें और यहाँ पे डालें हम नंबर 8 which is a even number and we get an output 0। तो देखिए आउटपुट 0 आया, इसका मतलब 8 इवन है। और एक और ट्राई करते हैं अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 11 then we get our output as 1। सो आउटपुट 1 आया यानी नंबर ऑड है। अभी हम इफ स्टेटमेंट नहीं जानते इसलिए अभी हम सिर्फ रिमाइंडर देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटोमेटिकली प्रिंट करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड। और अब यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं बाय seeing the output that if the output is 0 then the number is even and if the output is 1 then the number is odd। तो हम यहाँ देख सकते हैं बाय सो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रोग्राम लिखिए जो यूजर से दो नंबर ले और दोनों का रिमाइंडर प्रिंट करे। So it's a simple one. We have done similar things already. Pause the video and try it yourself. I will do the questions. We have number, input, input, input. Second, we have another number. We will simply print the remainder. We can write it in a beautiful manner like this. This is just for showing the ways I can see it. So now we have a program that takes two numbers and becomes the remainder. Simply 25, then we will 4, and we get remainder of 1000. We will run it again, 25, second by 4, and we got our output that is 24, remainder 4 is equals to 12। So अब अगला ऑपरेटर देखते हैं that is floor division। ये बिगनर्स को काफी कंफ्यूजिंग लगता है। ये है फ्लोर डिवीजन एंड इसका सिंबल होता है डबल स्लैश, डबल स्लैश। सो हमारे पास ऑलरेडी डिवीजन ऑपरेटर है तो फिर एक और डिवीजन ऑपरेटर की क्या जरूरत है, डिफरेंस समझते हैं। सो वी हैव divide by, it's a normal division, so let's run it and see what is the output। and as you can see ये नॉर्मल डिवीजन है इसलिए डेसिमल आंसर आएगा। but now if we change the operator to floor division by using double dash and we run it, we only got 3। नोटिस करिए डेसिमल गायब हो गया। फ्लो डिवीजन सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है और वो the part after decimal point is it removed it completely। एक और एग्जांपल देखते हैं to make it more clear। It's 24 5 5 4। This will give us a floor value with decimal part, and if we use floor division, it will remove the decimal part simply. It don't round off the number, it simply removes this part। So अब हम एक छोटा सा क्विज करते हैं जहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट। We will run it and the answer is 11। 100 divided by 9 approximately 11.11 होता है, लेकिन फ्लोर डिवीजन सिर्फ 11 रिटर्न करता है। So now
हम मूव ऑन करते हैं अब अगले ऑपरेटर पे, दैट इज एक्सपोनेंट। इसका सिंबल है डबल स्टार। ये पावर कैलकुलेट करता है सिंपली। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। 2 raised to 3, so it basically means 2 raised to 3, means 2 raised to 3 in the superscript. तो इसे हम रन करेंगे and we get the output 8, that is 2 raised to 3 is 8. So 2 cube yani 2 raised to the power 3, answer is 8. We will see another example. 5 raised to 2, it will give us 25. So exponent operators, scientific calculations, finance, graphics और मशीन लर्निंग में काफी यूज होता है। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो चीज लेके आए ये क्या है और ये क्या है। So these are called as comments. The one we write with hash is called as a single line comment. So these are the lines um, that the interpreter simply ignores and don't run. So it's a single line comment, means anything we write in this comment will get ignored. And if the, this one that we have written using three double quotes, this can also be written using three single quotes. Like, is different from this single line comment because this can be written in multiple lines. Like all these lines will get ignored. Anything with enclosed with three single or double quotes. So ये comments हमें documentation में काम आते हैं so that we can write the explanations of the code we have written. So अगर हम सेम कोड को चाहे फ्यूचर में देखें या कोई और डेवलपर्स हमारे कोड को देखे तो उससे भी कोड समझ आ सके, हम इसके लिए ये कमेंट्स यूज करते हैं। मैं ये कमेंट्स बहुत यूज करता हूँ और उसे वीडियो में भी करूँगा, so you can get the idea why or what these comments are. So अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पाइथन मल्टीपल ऑपरेटर को एक साथ कैसे सॉल्व करता है। So here is the question for you guys. 5, 6, 3. So what do you guys think will be the output? So if we run करते हैं and the answer is 11. So what happened here? काफी स्टूडेंट्स ने शायद 16 सोचा होगा, लेकिन पाइथन ने पहले मल्टीप्लिकेशन की फिर एडिशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स में बॉड मास या पेब डैश फॉलो करते हैं। तो अगर हम इसे लेकिन ऐसा लिखें as now if we run it we get 16। अब ब्रैकेट की वजह से एडिशन पहले हुआ और आंसर चेंज हो गया। So anything we write inside bracket will get evaluated first, and then the evaluation will replace this, that is with 8, and then 8 will be multiplied by 2. But in case of the previous thing, that is this, BODMAS will get followed, and here also BODMAS is there because bracket got evaluated first. But according to BODMAS here, multiplication will happen first, and then the addition, that is 6 plus 5 is 11. So quiz time। अब देखते हैं आपको कितना ये सब याद रहा। वीडियो पॉज करिए और आंसर नोटबुक में लिखिए या सिंपली गेस कीजिए कि आंसर क्या होगा। So what will be the output of this? Pause the video, I'm trying to answer it.
तो ये एक रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो हम इसे अब रन करेंगे और आंसर आया 3। सो होप आप सबने सही आंसर किया होगा। सेकंड क्वेश्चन, what will be the output? Pause the video and try it yourself. I will run it, and the answer is 4 because it's 4 division, it removes the decimal part of the answer. Now, third question, what will be the output here? I will run it, and it's 64 because 4 is to 3 is 64. Now, uh, question of multiple operator. What will be the answer of this? Pause the video and try it. I will run it, and the answer is 50. Reason? पहले फ्लोर डिवीजन हुआ और उसके बाद एडिशन हुआ, दैट इज 6, फ्लोर डिवीजन 2 is 3. There was it will give us integer 3, and then it will get added into 12 to give us 50. तो अब एक रियल लाइफ एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में बेंचेस हैं, हर बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। यूजर टोटल स्टूडेंट्स एंटर करेगा और आपको कैलकुलेट करना है कितनी बेंचेस कंप्लीटली फिल होंगे और कितने स्टूडेंट्स बिना बेंच के बचेंगे। First pause the video and try it. I will give a hint after some time, but I want you to figure it out yourself. तो आप सबने ये चीज़ ट्राई कर ली होगी। मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ अभी। अगर आप अभी भी इसे ट्राई करना चाहते हैं कि कंप्लीट बेंचेस के लिए फ्लोर डिवीजन यूज होगा और रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो हिंट आप काफ़ी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मैं आपके लिए प्रोजेक्ट ट्राई करता हूँ। So, here the user will enter the number of total students. So, we will make a variable students, and we will take the input from the user. So now for finding the number of benches that will be that complete benches, we will simply use floor division, and we will floor divide by 2 because that will divide the number of total student by 2, and if there will be any uh, decimal part, it will get moved. So we will get how many complete benches we have directly. Yeah, we can take another variable to represent the total number of capacity of the benches. So say capacity is equals to 2. एक बेंच में 2 बच्चे बैठ सकते हैं, टोटल बच्चे हमारे पास 1। So we will divide the total number, floor divide the total number of students with the capacity. From this we will get complete benches, and to find the students remaining, that is the student जो बच गए सारी बेंच मतलब जो अकेले बच गए उन्हें निकालने के लिए सिंपली वी विल do use the remainder of it. So this was the
project. We will have to see if it's working the way we want it to or not. So say we have 27 students. So complete benches, that is 13, means 13 benches will get completely filled and each student बच जाएगा क्योंकि 20 बच्चे ने बेंचेस फिल कर दिया और एक बच्चा बच गया जो सिंगल बैठेगा एक बेंच पे. दैट वाज रियल लाइफ एग्जांपल. सो आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया. हमने सीखा डिमीन्ड ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट. हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी समझा कि बॉड मास सिंपली यूज करना है. हमने ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. और देखा कि मैथ्स के रूल्स प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी हद तक अप्लाई होते हैं. अगर लेक्चर में हम अगले लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर सीखेंगे. वहीं से हमारे प्रोग्राम्स इंटेलिजेंट डिसीजन लेने की तरफ बढ़ेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखे. हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, से स्कोर इज इक्वल्स टू 50. अब मान लीजिए प्लेयर ने गेम में 10 और पॉइंट अर्न किए. तो स्कोर कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 60. क्वेश्चन ये है कि कोड कैसे लिखेंगे इस चीज के लिए. काफी बिगनर्स कुछ ऐसा लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, score is equals to 50, then simply score plus 10. सोचिए क्या स्कोर की वैल्यू चेंज होगी? तो लेट्स सी बाय रनिंग इट. नहीं. सो इंटरेस्टिंग, आउटपुट अभी भी 50 ही है. रीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्रोग्रामिंग में सिर्फ कैलकुलेशन कर देना और कैलकुलेशन का रिजल्ट कहीं स्टोर करना, ये दो अलग चीजें हैं. यहाँ पाइथन ने स्कोर प्लस 10 कैलकुलेट तो किया, लेकिन उस रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया. कैलकुलेशन हुई, रिजल्ट बना और तुरंत डिस्कार्ड हो गया. सो अब देखते हैं सही तरीका क्या. So the right way is 4 is equals to 4 plus 10. So now the output will be 60, the thing is that we wanted. So अब क्या हुआ? सबसे पहले पाइथन ने राइट साइड सॉल्व, दैट इज दिस साइड, यानी 50 प्लस 10 एज स्कोर इज इक्वल्स टू 50 है और आंसर आया 60. उसके बाद लेफ्ट साइड वाले स्कोर के अंदर नई वैल्यू स्टोर हो गई, दैट इज this is equals to 60, and then it was stored in this variable score, which then got printed using the print function, that is 60. So पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो गई. बिगनर को ये लाइन देखकर कंफ्यूजन होता है कि स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर प्लस 10. कुछ लोग बोलते हैं सर ये मैथमेटिकली तो गलत है. स्कोर कैसे स्कोर प्लस 10 के इक्वल हो सकता है? और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये असाइनमेंट है. प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू का मतलब इक्वल नहीं होता. इसका मतलब है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करो. सो अब इमेजिन करो स्कोर को 100 बार अपडेट करना हो. हर बार हर हर बार अगर हम लिखें स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 10 या स्कोर प्लस 5, तो कोड थोड़ा लेंदी लगता है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किए गए. सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाउ वी विल कवर. तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस. प्लस इक्वल्स टू, सो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है.
So the same thing that we have written here, we can write it like this. तो अब इसे हम रन करेंगे। सी ये एग्जैक्टली सेम आउटपुट देता है और ये लाइन इज इक्विवेलेंट टू। सो डिफरेंस इतना सिर्फ इतना है कि प्लस इक्वल्स टू छोटा और रीडेबल फॉर्म है इस लाइन का। सो नाउ if we have to see another example, we can do point is equals to 100, point plus equals to 20. Current. So now it will be 100, and this line will is which is equivalent to count equals to count plus 20, which means count is now equals to 100 plus 20, that is 120, and that value will be stored in the point now. It will be overwritten, and then that value will get printed here. That is the answer. So now we will move on. दोनों का output same है, and professional programs generally दूसरा syntax use करते हैं, that is this. This is not used much more. So अब आप guess करिए कि what will be the output of this code. So pause the video and try to guess what will be the output here. So I will run it, and as we all know, it will simply just get added and stored in this variable, and then it will get printed. So अब suppose वॉलेट से पैसे स्पेंड हो गए, हमने मनी जहाँ पे जैसे ऐड की है वॉलेट में, अगर हम उसे स्पेंड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एक सिमिलर ऑपरेटर है टू प्लस इक्वल्स टू दैट इज माइनस इक्वल्स टू। सो ये सिंपली इक्विवेलेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मनी प्लस होने की जगह अगर माइनस करनी हो तो हम लिखेंगे इसे ऐसे, जो कि इक्विवेलेंट है मनी इक्वल्स टू मनी माइनस 250। सो वीडियो पॉज करोगी और गेस करो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। Now we will run it, and as we know, the output is 250, means 250 got subtracted from 500 and then it got stored in the variable money. Similarly, we have into equals to operator. So I will show you, it's working with an example. So what this operator means here, so similar to the minus and plus assignment operator, it is same as salary is equals to salary into 2. So the output should be 50,000, and that will be the output here. Now suppose there, so like this, we also have the same thing for division. I will show you example of it. Max is equals to 100, max like equals to 4. And so what you guys think will be the output? It will be 25, as this line is same as marks is equals to marks divided by 4, and it will be a float value output as the division is happening here. So अगर हम इसे float division करना चाहे तो simply we will
make two slashes here. We will get the output without decimal point because floor division is happening here and this is equivalent to this. Uh, we can do the same thing with the remainder operator. For example, we have student is equals to 27, then benches, complete benches is equals to, sorry, in that here, student is equals, student percentage equals to 2, which is equivalent to student is equals to student percentage 2. So the answer will be 1 here as that is the remainder because 27 is a odd number. Now we also have exponent equals to operator which is represented as this. I will show you how it works. We have number equals to 3, number exponent equals to 4. This line is equivalent to number is equals to number equals to 4. We will print it and the answer will be 3 raised to 4. That is 18. So हम हर एक ऑपरेटर को quickly revise कर लेते हैं. So we have seen the assignment operator, then there's the normal, then we have plus equals to it. It simply adds the number and then override the variable. Then we have negative equals to, we have divide equals to, we have multiply equals to, we have exponent equals to, we have floor division equals to, and yeah, we have remainder equals to. So for every arithmetic operator, we have this type of operator. So अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं. सपोज एक बैंक अकाउंट है जिसका जिसमें एक वेरिएबल है बैलेंस which is equals to 500. Now we will print the current balance. Suppose the money get added into the balance. So how will we show it? We can either show it this way or we can do simply plus equals to 2. Now we will make salary credited and the final balance after credit was balance. Now say we spent 1200 rupees out of the balance. So how will we show that? We will show that by using minus equals to, that will simply subtract the minus 1200 from the total value stored inside the balance. Now we will print, say the money got spent in electric bill. So electric bill paid and the final balance after it is balance. Now say another bill we paid and that cost us 500 rupees. So we will simply minus that amount from our total balance we have and we will write in the net bill paid and the final balance we have after paying the bill is this. Now we will run it and see how much final balance we have got after getting credited salary, after we got salary and after we spent that money on electric bill and internet bill. So this is the final answer. So we had initially 5,000 rupees. Our salary got credited and it became 7,500. Then we spent 1,200 and
Then we spend 500 to finally get 5,800 in our balance. So this way we can make a real life program using assignment operator. ये एग्जांपल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ सॉफ्टवेयर इसी तरह वैल्यूज अपडेट करता है बैंकिंग एप्स गेम्स शॉपिंग वेबसाइट्स इन्वेंट्री सिस्टम्स हर जगह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं सो अब एक प्रोग्राम देखते हैं uh, we have score is equals to 20 score plus equals to 20 then so, what you guys think is the problem here? Is this code correct? As it looks correct to me, we will run it. Oh, we have an error. So, question error QR. So, reason plus equals to एक single operator है, उसके बीच में space नहीं आता. That is, this space is not there. It's a single operator and plus equals to have to be written together always like this. So when we fix it, if the issue is fixed, then we have the answer that we want. So now अब एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसपे एक वेरिएबल होगा एक्सपी जो इनिशियली होगा इक्वल्स टू जीरो तो आप अभी पॉज करेंगे और ये प्रोग्राम फिर बनाएंगे जिसमें हमारा एक्सपी इक्वल्स टू जीरो इनिशियली आप उसमें प्लेयर ने एक मिशन कंप्लीट किया और उसकी वजह से उसे मिला 150 प्लस एक्सपी उसने दूसरा मिशन कंप्लीट किया उसकी वजह से एक्सपी हो गया प्लस 300 then the player bought a weapon which cost 120 XP and then the player got a bonus reward of 200 XP. So considering all these scenarios, you guys have to create a program and finally print the final total XP the player earned in spec. Just like the balance program we have made just yet, you have guys have to make. So pause the video and try it yourself, then I will show you how to make it. So now, hopefully आप सब लोगों ने ये try कर लिया होगा. So what was the condition? So initially the player had 0 XP. Now the player completed a mission so and gained 150 XP. That we will show by using the plus equals to operator. Then the we will print it. Uh, we will print it here also. XP in double quotes. XP. Now the mission was completed, so we will say mission completed. XP plus XP. Now another mission was completed by the player, which rewarded him 300 XP. We will write it like this, and then we'll print mission to completed XP. Now the player bought a weapon which cost him 120 XP. That we will show now minus equals to 120 and then we will log it that what happened to the XP. So log weapon XP XP and finally the player got a bonus reward which give him plus 200 XP.
We will then log it again, bonus reward, XP is XP. And at last we will print the total final XP the player had after playing the game. So this was a simple program and now we will run it to see if there is no error. And yeah, there were no error. So initially there was 0 XP, then player completed a mission to get 150 XP, completed second mission to get 450 XP, bought a weapon, so some XP was consumed, then got bonus XP, and the final XP the player got was 530. So this was a easy program, and similar to what we have done earlier. Now we will do another similar project. Suppose एक water tank में initially 1000 लीटर पानी है, मॉर्निंग में 250 लीटर यूज हुआ, आफ्टरनून में 500 और ऐड हुआ, और इवनिंग में 300 लीटर यूज हुआ. सो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके फाइनल वाटर क्वांटिटी प्रिंट करनी है. सो वह वीडियो पॉज कीजिए एंड ये प्रोजेक्ट अपना खुद ट्राई कीजिए. हमने सिमिलर चीज़ अभी फिर से करके देखी. सो गिव इट अ ट्राई. पॉज द वीडियो. So now I will do it for you. So initially we have water is equals to 1000 liters. Then in the morning we use some water, so it got decreased by 250 liter. Then we in afternoon some water got added, that is 500 liter, and then in evening we use some water, that is 300 liter. So what will be the final water remaining? That we will print directly after doing all the calculation. And that is, so this was even simpler, and we will now run it to see what we got. And yeah, we got 950 liters of water remaining. We can write it as liters. Yeah, so it now take 950 liters. Now another project, it's in I'm doing this so you get a hang of these operators. So it's a good practice. So another challenge is wallet में initially 5000 rupees है. फिर आपने एक परचेज किया और 1200 रुपीज. आपने एक सेकेंड परचेज किया 350 रुपीज का, फिर जिसमें आपको कैशबैक मिला 200 रुपीज का, और फिर आपने 450 रुपीज की एक मूवी टिकट ली. So what will be the final balance you will have at the end? Pause the video and try to understand. Now I will do it for you guys and see if you have done it right or not. So initially we had 5000 rupees. We made a purchase of 1200 rupees, so the money got subtracted. Then we made another purchase of 350 rupees, so again money got subtracted. We got a cashback, means we got our money back, so it will be added into the wallet, and then we spend some money on movie tickets, so it will again get subtracted. And finally we have final balance on this wallet. So this was the program. We will run it, and yeah, we will have 3200 rupees at the end of our shopping. So now, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर का कंसेप्ट. अब आप असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं
ये ऑपरेटर्स आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर हमें वैल्यूज कंपेयर करना सिखाएंगे और वहीं से हम डिसीजन मेकिंग की दुनिया में एंटर करेंगे, जहां प्रोग्राम खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर सीखे। हमने देखा कि वेरिएबल्स की वैल्यू को एफिशिएंटली अपडेट कैसे करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मैं आपसे बोलूँ, क्या 10 और 20 इक्वल हैं? और आप तुरंत बोलोगे नहीं। अगर मैं पूछूं, क्या 25 और 15 से बड़ा है? आप बोलोगे हाँ। अगर मैं पूछूं, क्या राहुल नाम राहुल के इक्वल है? आप तुरंत कंपेयर कर लोगे। हम ह्यूमंस नेचुरली कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चले? कंप्यूटर को भी कंपेयर करना सीखना पड़ता है, और इसी काम के लिए पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम सिर्फ एक होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना और रिजल्ट में सिर्फ दो ही आंसर दें, या तो ट्रू या फॉल्स। याद रखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर कभी 10 या 20 रिटर्न नहीं करते। ये हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स। सो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर याद करते हैं। बूलियन डेटा टाइप में से बूलियन डेटा टाइप को रिवाइज करते हैं। सो बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, दैट इज द say b equals to true with capital T, or b c is equals to false. This capital with capital F, and we can see their data type using the type function, that is b. There, these are only two values that are called as Boolean values. There is no other value that comes under this data type category. So they are Boolean values. So now, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा इसी टाइप का आउटपुट देते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता है वो है इक्वल्स टू ऑपरेटर। सो इक्वल्स टू ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल इक्वल्स टू साइन। सो सबसे पहला ऑपरेटर डबल इक्वल। ध्यान रखिए कि सिंगल इक्वल नहीं, डबल इक्वल। बहुत सारे बिगनर ये गलती करते हैं। डबल इक्वल का मतलब होता है क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सिंगल इक्वल्स टू। ये चीज याद रखने की चीज है। सो से आई राइट प्रिंट n is double equals to equal 10। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रू। सो जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे 10 और 10 को पाइथन कंपेयर करता है और देखता है कि वो एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब बूलियन वैल्यू। अगर वो नहीं इक्वल होते तो वो फॉल्स रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके 10 की जगह 20 लिखती हूँ और ये इक्वल नहीं है, तो द आउटपुट विल बी फॉल्स। सो रीजन ऑब्वियस है, 10 और 20 इक्वल नहीं है। सो वीडियो पॉज करिए आपकी बात और कहिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। I know you guys will answer it very easily. So let's run it down. And the answer is true because 50 is equals to 50. No, the same question. Now what will be the here? That is 99 equals to 100.
So as they are not equal, it will be false. So comparison सिर्फ नंबर के साथ नहीं होता बट वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है. For example, I have a equals to 25, b equals to 25. एक तो वेरिएबल है जिनमें दो नंबर स्टोर हैं, that is 25 and 25. तो फिर a is equals to b. तो हमें आंसर मिलेगा that is true because यहाँ पे Python compare कर रहा है the value stored inside the variables a and b which is 25 is equals to 25 or not, and the answer is true. So now if we change any of it, it will become false obviously because now they are unequal. So अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल. अभी तक हमने देखा कि numbers को हम कैसे कंपेयर करें, but what if we write. So now we are comparing strings. Will comparison operator will work for strings? Will it be able to compare them and say if they are equal or not? So if we run it, see, it is able to compare it and it gave us true, means this side is equals to this text. Now, what will happen if I change P from capital to small p? Will the answer will remain same or will change? Or think about it. If I run it, that is false. So a beginners के लिए important observation है, Python is sensitive language है. Capital P और small p अलग होते हैं. That's why it will compare the first letter with the first letter of this text, and as they are not equal, it will simply not compare any of the letters after P and will return false directly. Now हम equals to comparison operator के बाद बढ़ते हैं not equals to operator. So इसका symbol होता है exclamation equals to. This represent comparison operator not equals to. So we have opposite equals to k, that is it returns true if the two values are not equal, and it returns true, it returns false if the values are equal. So we will see with an example. Print 10 is not equals to 20. Read it like not equals to. So as they are not equal, the answer should be true, and yes, it's true. But what happens if both the values or operands are equal? We will see. So as they are equal, actually, the answer will be false because they are not equal. Now we will move on to the third operator, comparison operator, that is greater than operator, which is represented by this. ये चेक करता है क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड से बड़ी है कि नहीं. So print 50 greater than 20. So 50 is greater than 20, so answer should be true. Yes, we got true. But now say if left side value is smaller than right side value. So as it's a false statement, we will get false. So simple है, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है तो ट्रू, नहीं है तो false. Now same as greater than, we have less than. We see if the left side value is smaller than right one or not. That is 15 less than 30. So left one is smaller than 30, so answer will be true, easy. And if not, then answer will be false. Then other than greater than in equals greater than and smaller than, we have greater than or equals to. अब एक ऑपरेटर जो इंटरव्यू में काफी यूज होता है, print 18 is greater than equals to 80. So pause the video and think about it. What should be the answer here?
So now we will run the code and it's true. ध्यान दीजिए equal होने पर वे true आया. So this operator is, it will return true if the left side value is greater than the right side value, or if left side value is equals to the right side value. So here the second condition was true, so we got true. Even if this value is was greater than the left side was greater than right, we will again get true. It will get false only when the left side is not equals to the left side or is greater than the left side. We need to in this. Now, similar to greater than equals to, we have less than equals to. We do the same thing. You all understand it well. It is true. It will be false only when the left side value is greater than right side value. Otherwise, it will give true. अब बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं ये important things that needs to be considered. For example, it is equals to okay. So, what do you guys think is the problem here? Will we see an error here? So we'll run it, and yes, we see an error. Error क्यों आया? क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं. सिंगल इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. दिस इज द असाइनमेंट. सो ये डिफरेंस कभी मत भूलना. ये assignment operator है, not a comparison operator. Now it will work fine and we will get the answer. सो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए. सिंगल इक्वल स्टोर करो, डबल इक्वल कंपेयर करो. बस इतना याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. सो अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं that how we use a comparison operator in programs. Say actual pin. हमारे पास एक पिन है जो है 1 2 3 4 एंड हमने सिस्टम के एक्सेस यूजर को तभी देंगे जब एंड जो यूजर जो पिन एंटर कर रहा हो वो भी एक्चुअल पिन से मैच करता हो. तो हम एंटर पिन is equals to input enter the pin. So if the user will enter the pin uh, which is stored in the system, then only the um, user will be able to enter the system. Otherwise, they will be not able to enter it. So print actual pin equals to enter pin. सो अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू प्रिंट होगा. अगर फॉल्स होगी तो ये फॉल्स प्रिंट होगा. अगर वो ट्रू होगा तो हम यूजर को सिस्टम में एक्सेस अलाउ करेंगे, और अगर फॉल्स होगा तो हम सिस्टम में एक्सेस अलाउ नहीं करेंगे. सो वी विल रन इट. say I entered the wrong thing, so we will get a false. So we got denied from entry in the system, and if we enter the right thing, we got the access from to the system. बैंकिंग एप्स इसी तरह कंपेयर करते हैं. अगर पिन मैच हुआ तो लॉगिन अलाउ, नहीं हुआ तो रिजेक्ट. We can do the same thing for passwords instead of pins. For example, enter password is equals to input saved password is saved. So if the password will be correct, it will print true, and if it will be not correct, it will print false. So we will enter wrong password, say it will be not false,
And if we enter the right password, that is Python, we get as comparison operator compares strings अच्छे से. सो अभी हम सिर्फ कंपैरिजन देख रहे हैं. नेक्स्ट मॉड्यूल में इफ स्टेटमेंट के साथ एक कंपैरिजन रियल डिसीजन लगे. अभी डीबगिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव marks is equals to 90. Print marks equals to print 80. So what do you guys think is the issue here? Pause the video and try. We will run it and there's a error. गलती क्या है? पाइथन में इक्वल्स टू ग्रेटर देन ऑपरेटर होता ही नहीं. करेक्ट ऑपरेटर इज greater than equals to, not equals to greater than. And now the problem is solved, so we will get the answer that is true. So हम करेंगे some practice programs और challenges. तो एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस. एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए. अभी इफ स्टेटमेंट नहीं आती हम लोग को, तो इसलिए सिर्फ कंपैरिजन का रिजल्ट प्रिंट करेंगे, दैट इज ट्रू या फॉल्स. So write a pause the video and write a program which asks the user for their age, and if the age is greater than 18, it will print true, and if the age is less than 18, it will print false. I hope you would have tried it. Now I will do it for you guys. So age is we will print if the age is greater than or less than 18. If age is greater than 18 or if age is greater than equals to 18, then the answer will be true. That's what we want. And if it's not, it will be false. So, say 12. So it's not eligible, that is false. And if say 25, it's eligible, so it's so we got the program running fine. Now another program, simple and similar to this. We will ask the user for their marks, and if the marks is greater than equals to 40, then the student is passed. That will be true, answer should be printed. And if it's less than 40, then the student is failed, so false should be printed. Pause the video and try to calculate it. So now I will do it for you. We have marks, input, enter your name, we will in pass. If marks is greater than so the marks greater than or equals to 40 rate, the student will pass, yes, true. And if the marks is less than 40, it will fail, that is pass will be false. That is false. So uh, now हम एक मिनी क्विज करेंगे. सिंपल सा, सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज है. What will be the answer here? It will be true, as you would have known. And there's this thing only. Yeah, we can try this question. What will be the solution here? Will it be true or false? We have discussed this type of question already. I'll run it now. That is false because Apple A has capital A, not small a, and Python is case sensitive. सो एक्सीलेंट. अब आप कंपैरिजन ऑपरेटर को समझ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं. रियल प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करते, हम कंपैरिजन के बेसिस पर डिसीजन भी लेते हैं. अगर पासवर्ड सही हो तो लॉगिन, अगर मार्क्स पास
मार्क्स पास हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर एज 18 से कम हो तो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट। ये सब पॉसिबल होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ, एल इफ और एल्स की वजह से। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और पावरफुल कैटेगरी सीखेंगे, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना सिखाएगा। ये इस स्टेटमेंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। So see you in the next section. So hello everyone, welcome back. पिछले लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स सीखे। हमने वैल्यूज कंपेयर करना सीखा। लेकिन एक क्वेश्चन, सपोज एक कॉलेज के हॉस्टल में एंट्री के लिए दो कंडीशंस हैं। स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए और हॉस्टल पास भी होना चाहिए। सिर्फ आईडी कार्ड होने के काम से काम चलेगा? नहीं। सिर्फ हॉस्टल पास होने से नहीं, दोनों चाहिए। अब कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ एक कंडीशन चेक कर पा रहा था, लेकिन यहाँ दो कंडीशन थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें लॉजिकल ऑपरेटर देता है। लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। पाइथन में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड, और, एंड नॉट, दैट इज थ्री। ये ऑपरेटर्स आगे आने वाले हैं। हर इफ स्टेटमेंट्स, हर लूप और ऑलमोस्ट हर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। रियल लाइफ में एंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मम्मी बोलती है रूम क्लीन करो और होमवर्क कंप्लीट करो। क्वेश्चन, अगर रूम क्लीन कर दिया लेकिन होमवर्क नहीं किया, क्या परमिशन मिलेगी? नहीं। अगर होमवर्क किया लेकिन रूम क्लीन नहीं किया, तब भी नहीं। परमिशन तभी मिलेगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली वही होता है। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स हुई, रिजल्ट फॉल्स आएगा। हम इसे दिखाते हैं एक कोड के थ्रू, दैट इज प्रिंट ट्रू ट्रू। So AND operator is simply AND in English, and we have true and true. So AND operator returns true if both of the operands are true. If any of them are false, the answer will become false. So as currently दोनों true हैं, इसलिए result भी आएगा true. True. अगर दोनों में से कोई भी false है, say the first condition is false, then the answer will automatically become false because दोनों true होंगे तभी answer true होगा, otherwise it will become false. If any of them is false or both of them are false. We can see that condition also. If both conditions are false, the answer will be false also. एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, एंड इज ट्रिक। उसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। सो अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। से we have age, we take it from the user, हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है और लेस देन इक्वल्स टू 16 है, then the access is provided. But if the age is less than 18 or greater than 60, then the access is denied. So we can say access is equals to age greater than equals to 18 and age is less than equals to 60. So if age is greater than 18 and age is less than equals to 60, then only access will be equals to 3.
If any of this condition is false, that is, if age is less than 18 or if age is greater than 60, then it will become false and access will be denied. So we will print access is. So let me run this program. So if we put a age that is greater than 18 and less than 60, say 25, access is denied. Sorry, access is given because it's the right age that we want. And if the age is say less than 18, it's false. Or if the age is greater than 60, it's still false because the condition, one of the condition is getting not satisfied. So whole condition is getting unsatisfied. Uh, so अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करेंगे और उसका आउटपुट गैस करेंगे. We have marks equals to 85, print is greater than equals to 40, and this is 100. So what will be the output here? Now I will run it, and that is true because 85 is greater than equals to 40 and it's less than equals to 100. So if the user enter anything, any marks that is less than 40 or is greater than 100, which is an invalid marks, the answer will be returned will be false because any of this condition is false, then whole thing is false. So अब दूसरा ऑपरेटर पे हम मूव करते हैं, दैट इज द और ऑपरेटर. सो रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए रेस्टोरेंट और में ऑफर चल रहा है, स्टूडेंट आईडी दिखाओ या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाओ. क्वेश्चन, क्या दोनों कार्ड्स चाहिए? नहीं, कोई एक भी चलेगा. प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली वही होता है. सो द और ऑपरेटर तब ट्रू होता है जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो. सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय print true or false. So again, it's or like just like English or, and it returns true if either of the condition is true, both the condition is true, and returns false only if both the conditions are false. So as there is one true and one false, it will return true. That's true. If both are true, it will still return true, and it will return false only if both of the conditions are false. So सिंपल ट्रिक और इज फ्लेक्सिबल, उसे सिर्फ एक टू भी चलेगा. अगर सो एक एग्जांपल लेते हैं, से मार्क्स इज इक्वल्स टू 92, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 and marks is less than equals to 35. So this will return true if any of these conditions are true. That is, if marks is greater than equals to 92 या फिर marks is less than 35. So यहाँ पे marks is greater than 90, it's true. It's but marks is greater than 90 but less not less than 35. So this is false. But or require only one of the condition to be true to return true, so it will return true. Run it again. Yes. So it's true. So यहाँ पहला कंडीशन ट्रू है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया. अगर हम इधर 20 लिखें तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है बट ये कंडीशन ट्रू है. तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन विल बिकम ट्रू. दैट्स ट्रू.
और अगर हम ऐसी वैल्यू लें जो both दोनों के लिए false है, say 50, then only the answer will be false. So अब तीसरा ऑपरेटर पे आते हैं, दैट इज नॉट ऑपरेटर। ये बहुत सिंपल है, ये आंसर को उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। सो अगेन इट्स रिटन लाइक this. It's not from English again. So we have not true means anything we will write here, not operator will complement it. It will reverse it. So if it's true, then it will return false, and if it's false, it will return true. So if we run it, we get false because it returns the complement of whatever we write here. If we write false here, it will return us true. तो इमेजिन करो घर का बल्ब ऑन है, ट्रू। अब किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब ऑफ। तो प्रोग्रामिंग में नॉट भी एग्जैक्टली यही करता है, स्टेट को रिवर्स कर देता है। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, से इज द is equals to false, print not is। तो अभी एग्जांपल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे तब ये बहुत यूजफुल रहेगा। सो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उसका उल्टा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, दैट इज ट्रू। अब देखते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज हो सकते हैं। सो वी विल कंबाइन एवरीथिंग नाउ। से फॉर एग्जांपल वी हैव एज इज इक्वल्स टू 25, citizen is equals to 2, print 18 and 18। सो यहाँ पे हम मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। If we run it, the answer will be true. बट अगर हम इनमें से एक भी चीज़ को फॉल्स कर दें, चाहे एज हम 18 से कम कर दें या सिटीजन को फॉल्स कर दें, तो वी विल गेट फॉल्स। नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पाइथन पहले नॉट सॉल्व करेगा या एंड या और। पाइथन के भी रूल्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। सबसे पहले होता है नॉट ऑपरेटर, फिर आता है एंड ऑपरेटर, एंड फिर आता है और ऑपरेटर। दिस इज द प्रेसिडेंस दैट अगर एक ही एक्सप्रेशन में हमें नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर मिले, तो पाइथन पहले नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेगा, तो उसके बाद एंड ऑपरेटर, एंड उसके बाद और ऑपरेटर अगर उस एक्सप्रेशन में कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है। हम ये देख सकते हैं विद अ सिंपल स्टेटमेंट लाइक दिस। सो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर गैस करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके लिए एक मिनट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई। नाउ आई विल run it and the answer is true. Why? Because Python ने पहले not false solve किया, क्योंकि not precedence is greater than end, so it will get executed first. So it become true. It is replaced by true, and then it becomes true and true, which returns true here. So now I will discuss some common mistakes that beginners do. For example, age is equals to 20. Age is equal to 80. And this is fixed. So if we run it, we get true. So error या unexpected output इस expression से आ सकता है।
क्योंकि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एंड और नॉट यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर जो ये है, और दिस ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड एज पाइप इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये दोनों ऑपरेटर इज आर डिफरेंट देन एंड और ऑपरेटर विच आर इंग्लिश एंड और ऑपरेटर. So don't use these, simply use the English ones. These are called as logical operators. So now we will move on to some practice challenges or practice programs. First one is movie ticket eligibility. एक आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें एक सिनेमा हॉल में अडल्ट मूवी देखने के लिए एज 18 से 60 के बीच होनी चाहिए. प्रोग्राम लिखिए जो सिर्फ कंपैरिजन का रिजल्ट प्रिंट करे. So pause the video and try. I hope you would have tried it. I will do it for you guys. So age is mm, but, mm, if the age is greater than equals 18 and age is less than equals to 60, then only the person is allowed. If not, they are not allowed. We will run it. And now we will see all the test cases here. That is, what will happen if we put the age from all the sections. Say, if age is less than 18, we will get false, means and is not allowed. If we put age as 18, exactly what will happen? So it will be true, because this is true, so answer will be true. If the age is between 18 and 16, it can be true because it satisfies the condition. If the age is just greater than 60, then this condition will become false, hence work will become false. Run it again, we get false. So now our second practice program we will do is a student scholarship के लिए एलिजिबिलिटी है. एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप है जिसके लिए एलिजिबिलिटी है कि मार्क्स 85 या उससे ज़्यादा होने चाहिए और अटेंडेंस 75 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. So you will ask the user for their marks and attendance, and the student will be eligible for scholarship only if both the conditions are true, and will not be accepted if any of them are false or both are false. So make the program accordingly. Pause the video and try it yourself. So now I will do it. See if you have done any mistake in it. We will ask the user for marks. Then we will ask the user for attendance. So, and then we will use AND operator, not OR, because we want both of the conditions to be true for the scholarship. So this is the simple program project that we have to make. Let's see if it will work or not. Say I got 890 marks and my attendance is 80. So I'm eligible for the scholarship. It was a question. Now a simple third project we will do is एक गेमिंग कैफे है जिसमें स्पेशल ऑफर है. अगर कस्टमर के पास मेंबरशिप है और स्टूडेंट आईडी है तो डिस्काउंट मिलेगा. मीन्स अगर उसके पास मेंबरशिप आईडी है या फिर उसके पास स्टूडेंट आईडी है तो उनमें से कोई भी चीज़ है तो उसे एक ऑफर मिलेगा, अदरवाइज नो. सो
make a program considering this condition. Pause the video and try it yourself. So now I will do it. So if membership is true and student ID is also true, say simply representing the uh, condition of the user. We are not asking for input from the user this time. Membership or student. If any of this is condition is true, this will be true. If I have membership but not a student ID, I will still be given the option of this. But if I don't have any of these, I will not be given one. So that was it. It was a simple concept. आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में समझा। हमने सीखा कि एंड और नॉट मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। ये ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के फाउंडेशंस हैं। हमारे पास सारे बेसिक ऑपरेटर आ चुके हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी बाकी है, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, which includes is and is not, or membership operator, which includes in and not in। ये ऑपरेटर्स बिगनर्स को काफ़ी यूनिक लगते हैं और पाइथन को दूसरी लैंग्वेज से अलग बनाते हैं। उसके बाद हम फाइनली पाइथन के सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज इफ, एल्फ एंड एल्स, जहां हम हमारे प्रोग्राम डिसीजन लेना शुरू करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स सीख लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लास्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अब हम एक ऐसे ऑपरेटर पर जाए आ गए हैं जो बिगनर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। एंड ऑनेस्टली अगर आप पहली बार पाइथन सीख रहे हो तो कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहली नज़र में ये इक्वल्स टू ऑपरेटर जैसे ही लगता है। क्वेश्चन, अगर मेरे पास दो नोटबुक है, दोनों का कलर सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दोनों का साइज भी सेम है, तो क्या ये दोनों नोटबुक इक्वल है? हाँ, लेकिन क्या ये दोनों सेम नोटबुक है? बिल्कुल नहीं। दोनों अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डिफरेंस पाइथन में भी होता है। इक्वल्स टू और इस देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों completely डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। आज का लेक्चर इसी डिफरेंस को समझने के लिए है। सो इक्वालिटी वर्सेस आइडेंटिटी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इक्वल्स टू दैट इज डबल इक्वल्स टू और इस ऑपरेटर दैट इज इंग्लिश वाला इज कभी भी सेम चीज नहीं है। इक्वल्स टू पूछता है क्या वैल्यू इक्वल है, और इस पूछता है क्या दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ये लाइन अभी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, इसलिए एक डायग्राम से समझ। सो से वी हैव a box a, let me come into it। We have box a जिसमें एप्पल है, एंड we have box b जिसमें भी एप्पल। सो यहाँ दोनों बॉक्सेस में एप्पल वैल्यू सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों सेम एप्पल ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं।
इसी वजह से पाइथन में इक्वालिटी और आइडेंटिटी अलग कंसेप्ट। सो पहले हम इक्वल्स टू समझते हैं, हमने पहले कर रखा है, फिर एक रिवाइज करते हैं इसे। सबसे पहले इक्वल्स टू हम देखें। फॉर एग्जांपल a is equals to 10 and b is equals to 10, then a equals to b. So so यहाँ पे आउटपुट हमें पता है क्या होगा, दैट इज ट्रू। ये क्या चेक कर रहा है? तो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है? ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर कर रहा है कि 10 और 10 इक्वल है कि नहीं, इसलिए आंसर आया ट्रू। ये नहीं देख रहा कि 10 की वैल्यू किधर स्टोर है और ये दोनों 10 एक ही पॉइंट, एक ही चीज है कि नहीं। ये वो बस देखता है कि 10 इज इक्वल टू 10, इट कंपेयर्स द वैल्यू एंड गिव अस द आंसर। बट अब हम इसी एग्जांपल को इस ऑपरेटर से कंपेयर करें, इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू दैट is and now run it. So answer is true. अब बिगनर तुरंत बोलते हैं सब, तो इक्वल्स टू और इज सेम तो हुए? नहीं, अभी नहीं। ये एग्जांपल कंफ्यूजिंग है, रीजन हम थोड़ी देर में समझें। तो चलिए लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट के बारे में हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी बस आउटपुट ऑब्जर्व करिए। सो से वी हैव अ लिस्ट 1 equals to 1 comma 2 comma 3. We have another list. This list 2. Now, if we use equals to operator on then and run the program, we get answer as true. वैल्यू सेम है इसलिए आंसर ट्रू आया, अगर सिंपल। बट अगर हम यहाँ पे अब इस ऑपरेटर, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, यूज करें और इसे रन करें तो आंसर आता है फॉल्स। अब देखिए यही डिफरेंस है, दोनों लिस्ट की वैल्यू सेम है लेकिन पाइथन ने उन्हें मेमोरी में दो अलग ऑब्जेक्ट बनाए। मीन्स लिस्ट वन एक अलग मेमोरी में स्टोर्ड है और लिस्ट टू एक अलग मेमोरी में स्टोर्ड है, और इसलिए इस फॉल्स दे रहा है। सो हम इस मेमोरी सिचुएशन को समझने के लिए एक एनालॉग यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक हॉस्टल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज रूम नंबर 101 में राहुल रहता है और रूम नंबर 102 में मोहित। तो क्या दोनों स्टूडेंट का फेवरेट गेम सेम हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन क्या दोनों सेम रूम में रहते हैं? नहीं। मेमोरी भी इसी तरह काम करती है, वैल्यू सेम हो सकती है, मेमोरी लोकेशंस अलग हो सकती। सो अनदर एग्जांपल इज, अगर हम लिस्ट टू को एक अलग लिस्ट ना बनाए, बट if we simply make list 2 to refer to the list 1 directly. So means list 2 is also stored referring to the same value, and it's not referring to another list having same value. So now if we run it, the answer will be true. अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमने न्यू लिस्ट नहीं बनाई, हमने सिर्फ दूसरा वेरिएबल उसी लिस्ट को पॉइंट करा दिया। अब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। Now we will move on to is not. तो अब अगला ऑपरेटर है is not। ये simply is का अपोजिट है। That is, if we have a list 1 as 1 comma 2, list 2 1 2, print list 1 is 1 is 2. So it's simply English, and if we run it, we will get the answer as true, because list 1 is not list 2. As we seen in an earlier example, they are not the same thing. They do have same value, but they are not stored at the same memory location. And that's what is compared. It compares
It don't compare the value, it compare the memory location of the variable. This variable have different memory location and this variable have different memory location. So they are not the same thing क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग से. So question, real world programming में इस is ऑपरेटर यूज कहाँ होता है? सबसे कॉमन एग्जांपल है नन. आप फ्यूचर लेक्चर में नन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी एक स्मॉल डेमो देखते हैं. So let's say name is none and name is the answer is true. So Python developers generally none compare करने के लिए equals to नहीं लिखते. वो इस ऑपरेटर वो is none यूज करते. ये Python का recommended style है. Now we will discuss some common mistakes. जो बिगनर कभी कभी हर जगह is यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, which is not right thing. For example, if I age equals to 20, then age is 20. हो सकता है आपका कंप्यूटर यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ जाए, हो सकता है वार्निंग आ जाए, यहाँ पे हो सकता है फॉल्स आ जाए क्योंकि यहाँ पे ए, the value is not being compared but the memory location where the 20 stored is being compared. So the answer can be anything. Let's see what we get here. It's true. So it's not a very viable way to do this type of thing. The best way to do it is using equals to sign. So इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इज. एक लाइन में आंसर that equals to compares value and is compares object identity or the ID or memory location of the value. Simple. Now अब आपके लिए हम हमारे पास है एक प्रैक्टिस प्रोग्राम जहाँ पे एक वेरिएबल सेव पासवर्ड और एक वेरिएबल एंटर्ड पासवर्ड बनाएंगे. पहले इक्वल्स टू यूज करके कंपेयर करेंगे और फिर उसे इज यूज करके ऑब्जर्व करेंगे. सो क्या दोनों हर केस में सेम रिजल्ट देंगे और हम इसे ऑब्जर्व करेंगे. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. So now I will do it. So we have saved password, icon, and enter password. Save that much. So if we compare it using equals to, it will compare the values. And that's what we want here, the values to be compared. Now, where they are located, and if they are stored in the same memory location, that is not relevant. So if we do this, let's see what will be the output. The answer is true, and true means both of these texts are being stored at the same location, hence we get true in the both the cases. अगर हम सेम चीज करें लिस्ट के साथ, तो हमारे सेकंड प्रोग्राम जो आप ट्राई लोग करेंगे वीडियो पॉज करके कि आपको एक लिस्ट बनानी है कार्ट वन में जिसमें आपको कोई भी सामान की एक लिस्ट बनाएंगे. एक लिस्ट इज सिंपली list is simply elements enclosed within square brackets and comma separated. So आप लिस्ट दो लिस्ट बनाएंगे और अब अगेन उसमें हम कंपेयर करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है यूजिंग इक्वल्स टू साइन एंड इस ऑपरेटर. So pause the video and try this. So hope आपने ट्राई किया होगा. मैं बनाता हूँ ये. So we have a list जिसमें से हमारे पास है
फिर हमारे पास सेम है लिस्ट, बट वो स्टोर है एक अलग वेरिएबल में। तो अगर हम तो equals to करें, see if the value is same or not. If we do, to see if the memory location where these two lists are stored is same or not, we'll run it and to see that yes, the value is same, but the where they are stored is not same because lists are not stored at the same place. For values such as integers, strings, they can be stored in the same memory location because variables simply just refer to the memory location. They don't store the actual values themselves. So एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो पॉज करेंगे और आंसर देंगे। विच ऑपरेटर कंपेयर्स वैल्यूज? The answer is equals to. And another question, which operator checks whether two variables refer to the same object or two if the values are stored at the same memory location or not? That is operator not equals to. So excellent, आज हमने पाइथन के सबसे मिसअंडरस्टूड ऑपरेटर में से एक को समझा। याद रखिए, इक्वल्स टू वैल्यूज कंपेयर करता है, इस ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करता है, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है जिधर वैल्यू स्टोर है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इसका सबसे कॉमन यूज नम के साथ होता है। अब ऑपरेटर फैमिली में सिर्फ एक कैटेगरी बचा है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन। ये ऑपरेटर हमें चेक करना सिखाएंगे कि कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं। उसके बाद हम फाइनली ऑपरेटर्स कंप्लीट करेंगे और पाइथन का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की शुरुआत करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने काफ़ी ऑपरेटर्स सीख लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी सीखेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नाम सुन के ही थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। मेंबरशिप मतलब कोई चीज़ किसी ग्रुप के मेंबर है या नहीं। रियल लाइफ में सोचिए, सपोज कॉलेज की क्रिकेट टीम के प्लेयर की लिस्ट है, क्या राहुल उस लिस्ट में है या नहीं? ये या सपोज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मूवी की लिस्ट है, क्या इंटरस्टेलर उस लिस्ट में है? या सपोज क्लासरूम में स्टूडेंट की अटेंडेंस लिस्ट है, क्या अमन प्रेजेंट स्टूडेंट की लिस्ट में है? प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत बार ये चेक करना पड़ता है, क्या कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। इसी काम के लिए पाइथन हमें मेंबरशिप ऑपरेटर देता है। सिर्फ दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। इसे हम लिखते हैं लाइक इन एंड नॉट इन, सेम एज इन इंग्लिश। सो व्हाट डज इन डू? इन ऑपरेटर चेक करता है क्या कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आंसर ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इट ये भी हमें एक बूलियन वैल्यू देता है, जस्ट लाइक द मेंबरशिप ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड कंपैरिजन। सो सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ हम देखते हैं, अभी हमें स्ट्रिंग डिटेल में नहीं आती, बस ऑब्जर्व करिए। इफ वी हैव से string which is a movie name, say Interstellar, and we want to know if the this part, say this text, that is inter, is in is this subtext is a part of this text. We want to know that if it is true or not. So then, for knowing that, we will use in operator. So when we run it, we get true. So inter is part of this text. So
It's a member of this collection. So ट्रू क्यों आया क्योंकि इंटरवल मूवी वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करता है पाइथन ने चेक किया और ट्रू रिटर्न कर दिया now if we say change it to Batman now as we can guess already Batman is not part of this text so it returns false बैटमैन वर्ड उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो इसलिए हमें फॉल्स मिला सो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि पाइथन केस सेंसिटिव है तो क्या वो चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी सो इफ वी राइट आई विथ स्मॉल and if we run it, it's false. So Python is case sensitive here also, and this I doesn't match with this I. So for Python, this whole text is not part of this main text. Uh, अब देखते हैं लिस्ट के साथ लिस्ट हम फ्यूचर लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे अभी सिर्फ ऑपरेटर समझिए कि इस ऑपरेटर का कहाँ कहाँ यूज होता है हमने अभी ये ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ देखा अब हम ये ऑपरेटर का इस्तेमाल देखेंगे विद लिस्ट so say we have some list of games now if we want to know if any of the game we want to know if game is in the list or not so say we want to know if Sekiro is in the list or not. We can simply say Sekiro in B. So if Sekiro will be in this list, the answer will be true. But if it will not be part of the list, it will be false. So we will run it and true. So as Sekiro is in the list, we got true. Other and say we see no we search for any other game that is not part of the list, it will give us false. Say GTA. As it's not in the list, we will get false. तो इन सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है वो क्या हम यहाँ पे एक टेक्स्ट सर्च करते हैं इनसाइड लिस्ट बट इफ वी हैव लिस्ट ऑफ नंबर्स that will also work fine here. For example, we have a list of numbers 10, 20, 30. So we can search for even numbers inside this list using membership operator. Say 10. So if 10 is present in the list, we will get a true output. And if not, as it's part of the list, we will get. And if we have to search any number that is not part of the list, we will get. So how does Python work internally? Python को कैसे पता चलता है कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं बिगनर लेवल पर इसे ऐसे समझिए कि पाइथन कलेक्शन के एलिमेंट को एक एक करके चेक करता है सपोज लिस्ट है एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो और हम पूछते हैं एप्पल प्रेजेंट है पाइथन पहले एप्पल चेक करेगा मिल गया सर्च वहीं स्टॉप हो जाएगी लेकिन अगर हम कीवी सर्च करें पाइथन पूरी लिस्ट चेक करेगा और एंड में बोलेगा फॉल्स अब सिमिलरली हम and cover not in operator, which is just opposite of in operator. That is, if the element is part of the string list or collection, it will return false, and if it is not part of collection, it will return true. So, for example, we have a list of languages. That is programming languages like Python, Java, C, C++. So, Java, okay, no. So what?
is happening here is that the not in operator will search for JavaScript in the list languages, and if it will not find it, it will return true. But if it find it, it will return false. So as JavaScript is not in language, that is, if this statement is true, so we will get answer as true. So JavaScript लिस्ट के अंदर नहीं था इसलिए आंसर ट्रू है. But if we search for anything that is part of list, and unlike in operator, we will get false because Python is in languages. चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं. सपोज एक कंपनी के अलाउ डिपार्टमेंट की लिस्ट है मेरे पास. Say we have departments is equals to there is HR, there is sales, there is IT, there is finance. These are the departments of the company. अब हम एक डिपार्टमेंट यूजर से लेंगे in the form of fetch. So if the user entered a allowed department, we will return true. And if the department entered by user is not part of the list, it will return false. So we will do print department in department. So this is a simple uh, program, and we will check department. So say, let's say we want to check if IT is allowed department in the company or not. We say and true, we got true. So IT is part of the company as a department. But if we try any other departments, say software, uh, as it's not a part of the company's department as a name, we will get false. So अभी हम सिर्फ रो ऑफ कॉल्स प्रिंट कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर में इफ स्टेटमेंट के साथ हम मैसेज भी प्रिंट करेंगे जैसे एक्सेस ग्रांटेड या डिपार्टमेंट नोट फाउंड. सो अब हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल जिसमें हम uh, एक जनरल जॉनर की लिस्ट बनाएंगे और यूजर से उस जॉनर के और यूजर से हम एक जॉनर मांगेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास उस जॉनर के कंटेंट है कि नहीं. सो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए. इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड जस्ट हियर. तो नाउ मैं ये प्रोग्राम आपके लिए बना के दिखाता हूँ. Let's say option only by one. Now we will take input on the user. User will enter the genre. If it will be a part of the list, it will return true. And that we will using the integrator. So if genre will be in the list, it will return true, and otherwise false. So action. So it's a part of the list, and so we got true. Like say if we try to find a genre which is horror, it's not part of the list, hence we will get false. Now we'll discuss some common beginner mistakes. The one it's same as we have discussed. That is, say if my name is Rahul, but if you are searching for Rahul with small r, and as you all know, Python is case sensitive, it's false because this doesn't match with this. Now, another mistake many people can do is say if we have a list of numbers like this,
and we use the in operator like this instead. So what's the problem here? This is a list of integer, but we are searching for a string in the list of integer. So this list do contain 20, but as an integer, not as a string. So the answer we will get is false. To fix it simply, we need to search for integer 20, not a string 20. And hence we got the answer. So एक interview question difference था ये कि 20 in numbers and 20 as a string in numbers, ये क्या डिफरेंस है? अगर लिस्ट में इंटीजर स्टोर है तो पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स, रीजन डेटा टाइप्स डिफरेंस है। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिस चैलेंज पे आते हैं। तो आपका आपके लिए एक सवाल है जिसमें आपको एक लिस्ट बनानी है योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसमें आपको चेक करना है कि पाइथन को जावा उस लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो pause the video and try to make this program. First make a list of all the languages and then check if Python, Go and Java are in that list or not. You can make a list of any number of languages you want. So now I will make it for you guys. For particular scenario, which is Python, Java, plus plus, Java, script. I will check if Python is in the list or not. Similarly, we will check if Go is in the list or not, and Java is in the list or not. आपने try कर लिया होगा, मैं एक क्वेश्चन रन करता हूँ and he got the answer that is Python is part of the list, uh, Go is not part of the list, and Java is part of the list. सो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें आप एक 10 जर्सी नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे एंड यूजर से आप एक जर्सी नंबर इनपुट लेंगे, और फिर आप एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट जर्सी नंबर एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, मतलब वो प्लेयर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो हमें पता चलेगा। So pause the video and try this yourself. So now I will make it. We have just see equals to 1, 3, 4, 5, 6, 7. These are the Johnson numbers. I will be taking 1 to 10. Then we will ask for a number. We will make it int, not left it as input to that will become a string, and that will hence solve it with false truth. Now we get a number, and now we will check if that one is in the list or not. If it is in the list, we will get 2. If not, we will get false. So it's 2. It's in the list, so we got 3. If it was not in the list, we will get false. So that was the easy project. Now many queries. I will write some code snippets and you will guess what will be the output of the code. They are simple, but still important for the code. I have cat. mm, So pause the video and try to answer this question. Run the file, and the answer is true because cat is C. It is a subtext here. It doesn't matter if it's in starting, end, or in between.
but if it's there, it will return true. Now, what will be the solution of this flow? Try to guess the answer, pause the video, and now we will run it, and it's false because again Python is case insensitive. Now, uh, तो इस ऑपरेटर में जो सीखना था ये सिंपल सा ऑपरेटर है। आज हमने मेंबरशिप ऑपरेटर सीखा। इन चेक करता है कि कोई वैल्यू कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, नॉट इन उसका अपोजिट। ये ऑपरेटर स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स और लूप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इन ऑपरेटर कितना पावरफुल है। अब ऑपरेटर्स चैप्टर में सिर्फ एक ही कैटेगरी बची है, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये थोड़ा एडवांस है और बिगनर्स को कम यूज होता है, लेकिन उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगले लेक्चर में हम उन्हें बाइनरी नंबर्स से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। So hello everyone, welcome back. Congratulations, आज हम ऑपरेटर चैप्टर का लास्ट मेजर टॉपिक सीखने वाले हैं और ऑनेस्टली ये बिगनर्स के लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। सपोज मैं आपसे पूछूं, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को सबसे अच्छे से समझता है? इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, पाइथन नहीं। कंप्यूटर अल्टीमेटली सिर्फ दो डिजिट समझता है, जीरो और वन। इसी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। हम ह्यूमंस डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। और बिट वाइज ऑपरेशन डायरेक्टली उन बाइनरी बिट्स पर काम करता है, इसलिए उनका नाम है बिट वाइज, यानी बिट्स के ऊपर ऑपरेशंस। सो डेसिमल वर्सेस बाइनरी। सबसे पहले बाइनरी को समझते हैं। सपोज मेरे पास डेसिमल नंबर है 5। कंप्यूटर इंटरनली इस 5 इसे 5 की तरह स्टोर नहीं करता, वो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। 5 का बाइनरी होता है, so say we have decimal as 5, so इसका बाइनरी इक्विवेलेंट will be 0101। इसी तरह सिमिलरली डेसिमल of 3 will be binary of it will be 001। सो क्या हमें मैन्युअली बाइनरी कन्वर्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। पाइथन ये सारा काम ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन हमें समझना होगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। So basically each number, each one, it is multiplied by 2 raised to n, where n starts from 0 till n minus 1. So here 1 is multiplied by 2 raised to 0, 0 is multiplied by 2 raised to 1, 1 is multiplied by 2 raised to 3, and 0 is multiplied by 2 raised to 4. So if we multiply them and add their multiplication, say 1 into 1 is 1, 0 into 2 is 0, 1 into 2 is 2, sorry, 2 raised to 2 is 4, and if it's multiplied by 1, it's 4, and 0 into 8 is 0. So इसका sum आता है 5, and that is the decimal. So that's how decimal number is converted into binary. Similarly, for here, 0, 1, 1. 1 is multiplied by 2 raised to 0, that is 1.
And 1 is multiplied by 2 raised to 1 again for to give 2. Then 0 is multiplied by 2 raised to 2, that is 4, but multiplied by 0 is 0. And again 2 raised to 3, that is 8 is multiplied by 0, which gives us 0. And hence their sum we get as 3. So that's how it's internally converted. But you don't need to do this. Python हमें binary के लिए एक function देता है that is called as bin function. Any integer we write inside it, we get its binary equivalent directly. So I will show you how it's done. We will write the binary of say 5. So what we will get, let's run the code and we get 0b101. So यहाँ 0b क्या है? ये पाइथन का तरीका है बताने का कि ये एक बाइनरी नंबर है इट्स फॉर ओनली रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअल बाइनरी डिजिट यहाँ पे है 101 which represent 5 in binary. Similarly, we can find binary equivalent of any number, say 10, we get 1010. It similarly can be converted into decimal as I showed. Similarly, for 15, binary number is 1111. अब जब भी बाइनरी देखो बिन फंक्शन यूज कर सकते हो यू डोंट नीड टू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग ऑन मैनुअल सो अब क्वेश्चन हम डायरेक्टली बाइनरी पर काम क्यों करें रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एम्बेडेड सिस्टम्स माइक्रोकंट्रोलर्स नेटवर्किंग game engines, graphic programming, encryption, compression और performance critical सॉफ्टवेयर मतलब बहुत जरूरी नॉर्मल पाइथन एप्लीकेशन में आप शायद रोज यूज ना करें लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के नाते बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड सबसे पहले ऑपरेटर आता है उसको कहते हैं बिटवाइज एंड So it's very different from the AND logical operator and is represented by this symbol. So this symbol represents bitwise AND. तो ये कंपैरिजन वाला एंड नहीं है लॉजिकल एंड अलग था लॉग एंड बिटवाइज एंड बाइनरी डिजिट के ऊपर काम करता है सो इफ वी राइट 5 in its binary form that is 0101 3 in its binary form that is 0011 तो और इस पे अगर हम एंड ऑपरेटर लगाएं तो अब पाइथन हर कॉलम कंपेयर करता है रियल और सिंपल है अगर दोनों बिट्स 1 है तो रिजल्ट 1 है वरना 0 दैट इज पाइथन पहले इस 1 को और इस 1 को कंपेयर करेगा right these two one will be compared and if both the operands are one then only the output will be one otherwise it will be zero so these both are one so the operation will give us one at the end now python will apply AND operator on this as one of them is zero we will get zero as an output similarly here one is zero so we will get zero and A also both are zero, so we will get zero. Now this binary number is equivalent to 1 in decimal. So binary result बना 1 और decimal पे होता है 1 simply. So when we write print 5 and bitwise AND operator 3, internally this happens. It Python compares 1 with 1 to give 1, 0 with 1 to give 0, 1 0 with to give 0 and 0 0 to give 0. And this binary then is converted into its decimal form and hence we get this output. That is 1. So
वही एग्जैक्टली हमें आंसर मिला। नाउ सिमिलरली अगर हम देखें बिटवाइज और ऑपरेटर, तो bitwise OR operator is represented by this single pipe, which is called as pipe. And here, pipe Python similarly same as the AND operator compare each of these columns, but here the rules are different. If any of the operand is 1 or both the operands are 1, the answer will be 1. And if both are 0, then only the answer will be 0. So if we apply this rule from backwards, we get 1 1 gives us 1, 0 1 gives us 1, 1 0 gives us 1, and then 0 0 gives us 0. So we get 0 1 1 1, which is binary equivalent of decimal 7. So if we apply or operate bitwise OR operator here between 5 and 3, this will happen internally and we will get the output that is 7. A big interesting operator bitwise AND operator in bitwise OR operator के बाद आता है XOR operator, that is exclusive OR. So rule, अगर दोनों bit सेम है तो आंसर 0, अगर डिफरेंट है तो 1. मीन्स जैसा हम एंड और में रूल अप्लाई कर रहे थे, हम एक्सॉर में भी रूल अप्लाई करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट है. दैट इज इफ बोथ बिट्स आर same, the answer is 0. If both bits are different, the answer is 1. So हम अगर पीछे से ये रूल अप्लाई करें तो 1 1 1 will give us 0, 0 1 will give us 1, 1 0 will give us 1, and 0 0 will give us 0. So we get 0 1 1 0, which is decimal equivalent of 6. So and the symbol of XOR bitwise XOR operator is 6. So when we apply this and run it, we get 6. That's what we got here. We move on to the last bitwise operator, that is not last means the fourth bitwise operator, that is not operator. ये हर बिट, इसका फंडा सिंपल है. ये हर बिट ये एक ही नंबर पे अप्लाई होता है. ये ऐसे दो नंबर पे या मल्टीपल नंबर पे अप्लाई नहीं होता, और ये एक ही नंबर पे अप्लाई होता है. और इसका सिंपल काम है कि ये हर एक इंडिविजुअल बिट्स को उल्टा कर देता है. दैट इज 0 को 1 या 1 को 0. सो इफ वी हैव फाइल जिसका बिट जिसको बिट्स में हम लिख सकते हैं 0 1 0 1, अगर हम इस पे लगाए नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, इसका सिंगल ऑपरेटर है ये, तो ये बिट नॉट नॉट ऑपरेटर सिंपली हर एक बिट को उल्टा कर देता है. दैट इज इट विल मेक 0. तो अब हम मूव करते हैं द फोर्थ ऑपरेटर, दैट इज द नॉट ऑपरेटर. सो इट ये ऑपरेटर अलग है. ये ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई नहीं होता, ये एक ही एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है. और इसका सिंपल काम है कि फर्स्ट ये डेसिमल नंबर को इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लिखता है, फिर उसके हर एक बिट को रिवर्स कर देता है. जैसे अगर बिट 0 है तो उसे 1 कर देगा, और 1 है तो उसे 0 कर देगा. दैट इज फॉर एग्जाम्पल वी हैव we have 5 जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0101. अगर हम इस पे नॉट ऑपरेटर लगाएं which is represented by this equality sign, so it simply convert each of these bits into its reverse form. So 0 will become 1, 1 will become 0, 0 will become 1, and 1 will become 0. And this in binary represents -6. So when we do it in Python in the form of
code, 5 are not operator will get hopefully 26. That's the answer. So answer minus 65 ये टूल्स ऑपरेटर नाम का कंसेप्ट से होता है. ये टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना याद रखिए कि द नॉट ऑपरेटर विच इज द बिटवाइज ऑपरेटर इन्वर्ट करता है. और अगर अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग है. Now we move on to another operator that is left shift operator. So what is left shift operator? So left shift operator is represented by double less than sum. So what it basically do? For example, we have 5 left shift by 1. So first binary pi will be converted into its binary form, that is 0101. And when we say 5 left shift by 1, we simply shift each of these bits by one place in the direction of left. So simply that will add a 0 here. So what it hence do is convert the So convert the binary form which represents 5 into a binary which now represents 10. So we can even say if we uh, run it on the Python. So we should get 10 and that's the solution. Similarly, if we do left shift by 2, so it will shift every bit by 2 places. So it was already one place, so we and now this number represents a binary which represents that is 20. So if we change it to 2, we will hopefully get yeah. So similar to it, we have an operator that is called as right shift, and so let's say we have 20. And if we do left shift it by 2, so as uh, 20 is represented by 0, 1, 0, 1, 0, 0. So as we were shifting each bits in the left direction in left shift, in right shift we shift each bit in right direction. So when we shift the bits in right direction, they simply disappear from the right side, and this is the final bit which represents 5. So if we write here, we should get 5 as the answer. We run it, and that is the solution here. So these were all the bitwise operator. We covered bitwise AND operator, bitwise OR operator, bitwise of XOR operator, bitwise NOT operator, left shift operator and right shift operator. अब एक बहुत important difference ये beginners को interview में पूछा जा सकता है, that is the difference between the logical and bitwise AND operator. So क्या OR and OR, that is and logical AND operator and bitwise AND operator, इनमें क्या डिफरेंस है या क्या सेम है. सो एंड boolean वैल्यूज के लिए नहीं है, सॉरी एंड boolean वैल्यूज को है and this and as for bitwise, sorry, binary bits. So print true and false is the real and correct use of logical, and print 5 and 3 is the correct use of bitwise AND.
So this operator is used on Boolean values, and this operator is used on decimals or binary bits. And if we run it, we get false, means the logical AND give us a Boolean value, and bitwise operator give us a decimal after doing all the calculation as we see. So now we will do a simple practice जहाँ पे हम bin function का use करके इन numbers को binary representation करेंगे. So pause the video and write a program where we use bin function to convert 8, 60, 31 and 100 into their binary using the bin function. You don't need to do it manually. Was it and try? Hopefully आपने ट्राई किया होगा और मैं ये प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ. That was bin of 8. Similarly, do it for all the numbers. 16, 31, okay. So now it will give us all the binary resolution of each number. That's it. Now, second challenge we have is uh, I am writing. So you guys have to pause the video and try to predict what will be the output of each of this line without using the proof. Or you can do it if you want. You don't need to do it manually if you don't want to. But still, let's see what will be the output. And that is 2, 6, and 4. Now, इंटरव्यू में अगर कोई पूछे क्या पाइथन डेवलपर्स को बिटवाइज ऑपरेटर याद होनी चाहिए, आंसर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लेकिन दोस्त के वेब डेवलपमेंट या ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में इनका यूज बहुत कम होता है. एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्किंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो रिकैप, आज हमने ऑपरेटर्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया. हमने सीखा कि कंप्यूटर इंटरनली बाइनरी में काम करता है और बिटवाइज ऑपरेटर डायरेक्टली बाइनरी बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. हमने एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देखे और ये भी समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस लेक्चर के साथ हमने पाइथन की सारी मेजर ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए. अब तक आपके पास वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, इनपुट लेना आता है एंड ऑपरेटर्स आते हैं. अब हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिनसे हम इंटेलिजेंट प्रोग्राम बना सकते हैं. और अब हम शुरू करने वाले हैं पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट बिगनर टॉपिक को, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. यहाँ से आपके प्रोग्राम्स डिसीजन लेना शुरू करेंगे. अगले लेक्चर में हम इफ, एल्स और एल इफ को डिटेल में सीखेंगे रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. So, hello everyone, welcome back. Congratulations, आपने पाइथन के सारे बिगनर बिल्डिंग ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं. आप वेरिएबल्स बना सकते हो, डेटा टाइप समझते हो, इनपुट ले सकते हो और ऑपरेटर्स भी सीख चुके हो. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. सपोज एक स्कूल का रिजल्ट सिस्टम बनाना है. अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा हैं तो उसे पास बोलना है.
और अगर 40 से कम है तो फिर क्वेश्चन। सो क्या प्रिंट फंक्शन खुद डिसाइड कर लेगा? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर कभी खुद से डिसीजन नहीं लेता, उसे हर रूल हमें बताना पड़ता है। और प्रोग्रामिंग में इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और पाइथन में डिसीजन मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो आज से हमारा प्रोग्राम इंटेलिजेंट बनना शुरू होगा। So let's start with the real life analogy. हम सब रोज कंडीशन यूज करते हैं। सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाऊंगा, नहीं हो रही तो अम्ब्रेला घर पर ही रहेगा। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो दूसरा रूट चूज कर लूंगा, नहीं तो नॉर्मल रूट से जाऊंगा। अगर एग्जाम कल है तो गेम नहीं खेलना है, या ये सब कंडीशन है। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। कंप्यूटर हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। उसके आंसर के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा कोड चलाना है। सो व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट? सो इफ स्टेटमेंट पाइथन को बोलता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब ये कोड चला, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उस कोड को स्किप करो। मैं आपको एक बार ये इसका सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ कि हाउ दिस इफ स्टेटमेंट लुक लाइक। सो इफ we have a condition colon is very important here, then state. So here and other statements, so full statement. So ध्यान से सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले कीवर्ड if, that's it. So उसके बाद हमारे पास आती है कंडीशन। दिस इज द कंडीशन जो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएंगे। तो अगर ये condition true है तो the statements that are under this block that comes after this colon and have these spaces will get executed. And if it turns out to be false, then this whole section will get ignored completely. सो कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, और उसके बाद आता है कोलन or print indentation. Indentation, these spaces, which are generally four spaces, is called as indentation. Python indentation को बहुत seriously लेता है। C, C++ और Java, curly braces, that is, uh, these are the curly braces, उन्हें यूज करते हैं। पाइथन इंडेंटेशन यूज करते हैं। अगर इंडेंटेशन गलत हुई तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। So indentation help in making blocks of statements that can be treated as a one single block piece of code. Uh, so इसी सिंटैक्स से हम अपना फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, और एक फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गेट इट क्लीन। हमारे पास है मार्क्स, एक वेरिएबल जिसका वैल्यू है 85। नाउ हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो अगर मार्क्स रिसीव करेगा और एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज देगा यूजर को अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 40 है, और अगर उनका मार्क्स लेस देन 40 है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, सिंपली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो वी विल राइट इफ marks is greater than equals to 40 colon print congratulations you pass. So what is happening here? So इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। पाइथन सबसे पहले कंडीशन देखता है, दिस इज द कंडीशन। सो
क्या 85 40 से ज्यादा बड़ा है या इक्वल है? हाँ, यानी कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, पाइथन इंडेंटेशन के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता है डायरेक्टली। एंड हियर the code in indentation is the statement to print congratulations you passed. And this colon is very important and it marks the end of this statement, if statement. And so we will run it and see what will we get. Yes, so yeah, the program ran successfully and it found that 85 is greater than 40 if this condition becomes true. Hence, this block of indentation get executed to print congratulations. Now, what if the condition comes out to be false? So, say the value inputted by the user is 25, which is less than 40. So if marks is greater than equals to 40, but 25 is less than 40. So this condition will become false. Hence, this block of code in indentation will never execute. Hence, we will see nothing at the end and the program will just get terminated without showing any response to it. So let's run it and see there is uh, no statement got executed, hence nothing got printed. So इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एरर आई नहीं, प्रोग्राम क्रैश हुआ नहीं। पाइथन ने बस कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए उसने प्रिंट को एग्जीक्यूट भी नहीं किया। So if condition is true, execute the code. If condition is false, simply skip this code and move on up whatever there is here. We can say print program window. So this is a print statement which will get executed after this if block, and it will always get executed because there is no conditional above it. So we can see that this simply got skipped if we see the run, and the statement after it got executed directly. So ये याद रखिए, इफ स्टेटमेंट इंटरनली इसी तरह काम करता है। सो अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज स्टूडेंट फेल हो गया, प्रोग्राम ने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में कि वो फेल हो चुके हैं। रियल सॉफ्टवेयर ऐसा बिहेव नहीं करता। अगर लॉगिन फेल हो, मैसेज आता है। अगर एटीएम ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो, रीजन दिखता है। अगर पासवर्ड गलत हो, एप्लीकेशन बताता है। सिर्फ चुप नहीं रहता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एल्स। सो एल्स का मतलब क्या है? सो एल्स का मतलब होता है, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कोड चलाओ। सिंपल लैंग्वेज में इफ ट्रू के लिए है तो एल्स बाकी सब केसेस के लिए। सो इसका हम सिंटेक्स आपको दिखाते हैं। इफ if condition then run this code, run these statements, else colon run these statements. So what this syntax says. So if the condition turns out to be true, simply execute this block of code, and simply if this block of code gets executed, this part is ignored completely. अगर ये condition false हो गई तो the Python moves here and see else here and then execute the block of code inside it. सो यहाँ ध्यान दीजिए, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि अगर इफ फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर जो भी कोड है वो चलेगा। सो अगर हम फिर से अपने कोड पे वापस आए
और इसे हम मॉडिफाई करके एक say if the marks is greater than 40, we write result is pass, and else if marks is not greater than equals to 40, we result as fail. So 25 we have the mark, so it will go here, it will check if 25 is greater than equals to 0, 40, and it will be false, so simply it will roll back here and execute this statement here as result as fail. So we will run it and we get the thing we wanted. And if the marks are greater than 40, say 9, so this will get executed and only this will not get executed. If get executed, else is simply ignored. So this got printed and then simply the curve will jump from here to here and then this statement got executed and hence printed. So अब हमारा प्रोग्राम इंटेलिजेंट हो गया अब चाहे स्टूडेंट पास हो या फेल प्रोग्राम दोनों सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं तो अब तक मार्क्स हम मैनुअली लिख रहे थे रियल एप्लीकेशन में यूजर मार्क्स एंटर करेगा so we will again modify this code we will take the marks from the user itself and we will treat them the congratulations congratulations pass and from else we will simply show some sympathy. So now we will run it and it's now an interactive program and intelligent one where user will input some value and hence will get treated uh, according to their marks. So let's run it, enter your marks, it's very close. So if I score, say it is 6, I get congratulated, you passed, and program ends. Without this then ever getting uh, executed. And say if my marks are less than 40, say 25, I get treated with this line and then program starts. So अब एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करते हैं एक इजी सा एग्जांपल था जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ इफ एंड एल्स वर्क्स and how it makes our program intelligent. So अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करेंगे दैट इज यूजर अपना एज इनपुट डालेगा और उस एज को हम कंपेयर करेंगे कि वो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है या नहीं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगी तो वी विल राइट यू आर एलिजिबल टू वोट और अगर वो एज लेस देन 18 होगी तो वी विल tell the user that you are not eligible to vote. So if you want to try it on your phone, you can pause the video and try it now. So now I will try the program myself now. So we will take an input from the user. We will prompt them to enter their age. Will enter their age. Now we will use if the condition will be age should be greater than equals to 18 and if this condition is true we will print you are eligible to vote and if this condition is not true
So else part will get executed, rolling, and message will be you are not eligible to stop. So let's try to run this program now. It's a very easy program, just like the previous one. So say if my age is 58, I will get treated with you are eligible to vote. And if my age is less than, it means say 16, I will be treated with you are not eligible to vote. So now our programs are getting intelligent and they are able to provide some feedback and some intelligence. Now we will make another program. It will be ATM withdrawal system. जिसमें हमारा suppose we will have a variable which will be named balance and its value will be initially 5,000. We will take input from the user and that will be withdrawal amount which user will enter. So if withdrawal amount entered by the user is less than equals to the balance the user have in their bank account, then the transaction will be successful and balance will get decreased accordingly. But if the withdrawal amount is greater than the balance, so obviously the transaction will fail and we will show that using a message. So pause the video if you want to try it yourself and then I will do it for you. So now I hope you would have tried it yourself. Let me do it. So we have a variable that is balance, which represents the amount of money we have in our bank account. Then withdraw is the variable that will store the amount of money the user is withdrawing from their bank account. So, uh, now, if the withdraw amount is less than equals to the balance, the transaction will be successful. So we will print transaction successful, and then in the same block we will decrease the amount of money in the balance and will also print the final balance on the account. It's the new balance. And else, if withdraw amount is greater than balance, we will tell the user that the transaction failed insufficient balance. So this is the simple program we have written. So what's happening here? If the balance is 5,000 initially, uh, the user will enter the withdrawal amount. If it's less than equals to balance, then the transaction will be successful. That amount will get withdrawn from the balance and the new balance will get printed. But if this statement is not true, it will all get ignored and this statement simply will get printed to tell the user that the withdrawal amount was higher than the balance. We will run it now. So let's say the amount is sufficient. So transaction was successful and the new balance in our account is 2,500. But if the withdrawal amount was greater,
is 7,000. The transaction failed because insufficient balance. So now we will try another program. It will be a bit different. Here you have two. It's called as theme selector, where we are building an application where we will ask users that what type of theme they want, dark theme or light theme. And according to the text they will provide to the program, we will provide the user with the message that the mode they uh, requested is enabled. So you can try it on your own first, and I will do it for you guys. So now I will do it. So what we are asking from the user, we are asking from the user the theme they want in the application. So we will right from them to choose the theme, start, yeah, that. And according to this input, we will provide the user the message. Theme is equals to dark. We will provide the message that dark mode is enabled, and if user enter anything else than dark, then by default the light mode will be enabled. So this was simple program. We will run it now. So if input is dark, then dark mode is enabled. And if it's anything else, it don't need to be the user don't need to even have to write light here. It can be anything. Say hello. It and mode still will get enabled here. And that's an issue, but we will see in future that how to fix the issues like this. So now I will add some code here, and you guys have to uh, find out the errors in it. These are some common mistakes that beginners do. So, say age is 20, age is 0.9 equals to 18. Print. So pause the video and try to find out what is the error. So as many of you would have seen it already, the error is a missing colon here. Colon is very important. Without it, we will get an error. So see the syntax error we will get if we don't have a colon. If we miss the colon. Now another mistake I can show you from the same code is this. So if we miss the indentation that after colon indentation is mandatory. And if we miss this indentation, we will get an error that is indentation error. That is expected and intended block after if statement. So it's very important to provide a indentation after colon. Without it, we simply will not be able to run the program. Now, another common mistake people can do is related to assignment and uh, assignment operator and comparator operator. That is, if age is equals to 20, then we are 20 is good. So you can obviously see what's the issue here, that we have used the wrong operator. We should have used the double
equals to sign here, and we can see that in detail in here also. What's the issue in this book? So now I will ask you guys to make some programs. I will give you the description what you guys have to make, and you will make it. Pause the video and make it, and then after you have tried it, I will make you that program for you guys also. So 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 अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल सा प्रोजेक्ट है इवन और ऑड सो हमें आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक नंबर लोगे फ्रॉम द यूज़र इंटीजर फॉर्म में और फिर उसे चेक करोगे कि इफ द नंबर इज इवन और ऑड सो इफ द नंबर इज इवन so simply print the number is even and if the number is odd then print the number is odd हमने ये पहले भी कर चुका है बस अब इसमें हमें if and else का एडिशन करना है so that we can treat the different cases and tell the user that the number is even or odd instead of true or false that we were getting in our previous programs. So pause the video and try the program yourself, then I will make it for you guys. So hopefully आप सबने ट्राई किया होगा और अब मैं ये खुद करके आपको दिखाता हूँ. So we will take a number, it will be a int type, we will prompt the user to enter a number, then we will check if the number is even or not by condition that we had previously used, that is, if num remainder 2 is equals to 0. If so, print the number comma num is even. और अगर वो नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऑड होगा सो उसकी सिर्फ कंडीशन की जरूरत नहीं है नंबर इज ऑड तो यहाँ पे हम क्या करें तो हमें ये कंडीशन पता है कि अगर कोई नंबर को हम बाय 2 करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर एक इवन नंबर होता है सो इस ऑपरेशन को पाइथन पहले एग्जीक्यूट करेगा और ये अगर एग्जीक्यूट हुआ और इसका वैल्यू 0 आई तो इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय 0 एंड इफ 0 इज इक्वल्स टू 0 और अगर पाइथन इन्हें कंपेयर करेगा और इक्वल हुए तो ये स्टेटमेंट विल गेट executed which is the number we user provided is even. अगर ये 0 equals to नहीं हुई तो automatically the statement below else will get printed to say the number is. So now we will execute this program. That's an odd number. Output is the number 25. If we enter an even number, say 36, the number is 36 is even. So it's very simple to use the concept from our previous lecture. Now, आपके हमारे पास और एक प्रोग्राम है जो आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके टेम्परेचर चेकर जिसमें आप यूज़र से टेम्परेचर एक्सेप्ट करेंगे और यूज़र को आप बताओगे कि ये वो टेम्परेचर इज ऑफ ए हॉट डे और इज ऑफ ए प्लेजेंट डे सो वो टेम्परेचर कंपेयर करेगा 35 डिग्री सेल्सियस से दैट इज इफ द टेम्परेचर इज 35 से बड़ा और इक्वल then the day is a hot it is a hot day and if the temperature is below 35 degrees Celsius then the weather is pleasant. You have to show this message to the user. So pause the video and try to make this project yourself.
So now I will do it to show you guys how to do it. And most probably you would have done it successfully. Still, will take input from the user, in- input, input, input. So, and if the temperature is greater than or less than 5, we will see the user that it's a heartbeat. And if the temperature is less, which obviously is only a is less, then we will tell the user the weather is yes. Well, this again is for the simple program. Hopefully you would have made it yourself already. So let us enter our temperature that is greater than 35 degrees Celsius, 40, which is our hot day. And if we enter temperature that is less than 35, the weather is closer. Now, another what project that program you guys have to make where you will take uses from the input from a user that will be in terms of marks. And if the marks are 75 or above, then you will treat the user with a message that will say distinction achieved. Otherwise, tell the user that keep working hard. So this is we have done it um, uh, previously. It's same kind of problem, but still pause the video and try it yourself and see if you can do it. So now I will do it. Guys, we will take the input that was same input and name. If marks is greater than or equal to 5, then distinction is else if the marks remain and greater than 75, then we will say the user repeat whole thing. It's even simpler program here, so we will just run it. And as obviously, if marks greater than 75, distinction achieved, and if marks are less than 75, then keep working hard. So now we will move on to some quiz. I will add some code and then we will have to answer that. What will be the output of that code? So code is I just review. So what you guys think will be the output of this problem? It's very simple and we could have found downs already, but still it's a good thing to practice this concept again and again. So we will run this program and the answer is adult as age is greater than 18. Now there's some theory question that I would like to ask you. So I will ask the question, pause the video, think about it, and see if you can match the answer I provided with. So can and the question is the can and if statement exist without an else statement. So yeah, the answer is yes. Else
If statement can exist without an else statement. Else statement is simply optional and is there to cover all the cases that are not considered by the if statement. So if we don't want to consider them, we can simply skip it. As we have seen, initially we were just using if statement without any else statement. Now, what must every if statement ends with? So as you guys can see even in the screen, each if statement should end with a colon. That's us, this. Without it, we will simply get error every time. So today we learned the foundation of decision making in Python. If executes code only when a condition is true, else handles all the remaining cases. We also learned that indentation is mandatory in Python and that condition always evaluates to either true or false. From now on, our program won't just follow instructions, they will make decisions based on the data they receive. So excellent work. This is one of the biggest milestone for any Python beginner, but real application usually don't have only two possibilities that are solved by if and else. Like for example, think about grading. If marks are above 90, then grade A is provided. If above 75, grade B is given. If above 60, grade C is given. Otherwise, grade D is given. Or think of traffic light. They are red, yellow, green. So two choices aren't enough to handle multiple conditions. So for that, Python gave us another keyword that is written as LF. So in the next section, we will master LF, build complete grading system, fare calculator, discount system, and many other real-world decision-making programs. So see you in the next section. So hello everyone, welcome back. पिछले लेक्चर में हमने इफ और एल्स सीखा। अब हमारा प्रोग्राम तो डिसीजन ले सकता था। अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था और अगर फॉल्स हो तो एल्स एग्जीक्यूट होता था। लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ दो सिचुएशन थोड़ी होती है। सोचिए एक स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम। 90 या ऊपर ग्रेड ए, 75 से 89 ग्रेड बी, 60 से 74 ग्रेड सी, 40 से 59 ग्रेड डी, 40 से कम ग्रेड। सो यहाँ सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पांच अलग अलग आउटकम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें देता है एल इफ। सो इट्स रिटन लाइक दिस, एल एंड इफ। सो एल इफ का फुल फॉर्म होता है सिंपली else if. So it's a short version of else if. So else if इसी की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशन को एक बड़े एक के बाद एक चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पाइथन कंडीशंस को ऊपर से नीचे चेक करता है। जैसे ही किसी एक कंडीशन का आंसर ट्रू मिल जाता है, पाइथन बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी द सिंटैक्स ऑफ if else with else if. We will make a multi-line comment. So if there is a condition colon, then statement, yeah. Now below if we use else if, and we can add another condition to check, and if that condition is true, then we simply, then the statement below it are executed. It's simply a if block again with another condition. We can add any number of else.
And then else is optional here also, but if we want to cover all the other cases that are not included above, we can write else. So this is the syntax here. ध्यान से देखिए, सबसे पहले if, उसके बाद जितने चाहे उतने elif, और सबसे लास्ट में ऑप्शन else. ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, कभी भी else को बीच में नहीं लिखते, और if के बिना elif भी नहीं लिख सकते. फर्स्ट if else if स्टेटमेंट आती है, उसके नीचे elif स्टेटमेंट जितनी चाहे आप उतनी कंडीशन लिख सकते हैं विद elif स्टेटमेंट, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज else which is ऑप्शन अगेन. सो इसी कंसेप्ट और सिंटैक्स को देखते हुए हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे. एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें हम मार्क्स यूजर से इनपुट लेंगे, और अगर वो मार्क्स जो इनपुट किया है यूजर ने वो ग्रेटर देन 90 है, तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेड ए. अगर ग्रेटर देन 75 है तो ग्रेड बी. और अगर कुछ और भी है, मीन्स 75 से छोटा है, देन वी विल प्रिंट ग्रेड. So let's make this. We take input from the user, uh, and we compare this mark with 90. If the mark is greater than 90, we will print grade A. And if that is in if the marks is less than greater than equals to 75, then we will print grade B. And if both of the cases are not true, then simply we will write else, print grade C. तो अब इसे हम रन करेंगे. तो अगर हम मार्क्स डालें above 90, so 95 we get grade A. If we enter marks greater than 75, so 80 we get grade B. And any other marks that are less than 75 is given grade C. So फिर से समझते हैं, चलिए. पाइथन ने पहली कंडीशन चेक की, क्या 85 90 से बड़ा है. नाइन नहीं, सॉरी, 18 90 से बड़ा है नहीं, तो पहली कंडीशन फॉल्स है. अब पाइथन दूसरी कंडीशन पर गए, क्या है 80 75 से या बड़ा या इक्वल है, तो हाँ, कंडीशन टू. तो पाइथन ने ग्रेड बी प्रिंट कर दिया, और उसके बाद नीचे वाली कंडीशन को देखा भी नहीं, उसे स्किप कर दिया सिंपली. In the case of uh, input as 60, first Python compares if 60 is greater than or equals to 90. No, it's then it check the elif condition if 60 is greater than or equals to 75. Again, no. So both these get skipped. Then it's they see that 60 is a number which comes in bracket that is not part of other above two statements. So simply else, the statement inside else is get executed, and we see grade C here. So uh, ये रूल है जो if and else में होता है, और अगर इन ऊपर वाली स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट हो तो नीचे वाली स्टेटमेंट सिंपली स्किप हो जाती है. दैट इज कि uh, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो ये वाली स्टेटमेंट सिंपली स्किप जाएंगी पाइथन द्वारा, और इन्हें पाइथन बिल्कुल भी देखेगा भी नहीं, सिंपली इसे एग्जीक्यूट करेगा, एंड कंट्रोल विल मूव ऑन आफ्टर दैट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कंडीशन का ऑर्डर मैटर करता है, और बिगिनर्स इसी जगह सबसे ज्यादा गलती करते हैं. दैट इज, say we write it like this.
तो क्वेश्चन 95 मार्क्स वाले को डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए थी। अगर हम इनपुट डालें 95, सो से 95 वाले को डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारा प्रोग्राम कहता है उसे बस पास। पास क्यों आया? रीजन, पाइथन ने पहले ही कंडीशन चेक, दैट इज 95 is greater than 40, and that condition was true. So पाइथन ने पास प्रिंट किया और नीचे वाले स्टेटमेंट पे उस पाइथन ने भी नहीं और सिंपली उसे स्किप कर दिया। सो इसलिए हमेशा स्पेसिफिक कंडीशन पहले, जनरल कंडीशन बाद में। सो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन इज दैट कि मार्क्स ग्रेटर देन 75 को डिस्टिंक्शन मिलेगी, और अगर जनरल मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 40 है उससे पास कहा जाएगा। सो इट्स स्पेसिफिक कंडीशन, सो हम इसे ऊपर लिखेंगे ना कि नीचे। और इसे फर्स्ट स्टेटमेंट का हम हमेशा इफ लिखते हैं एंड सेकेंड को इफ। नाउ we will run it. If we community 5, we get distinction because this statement get executed first, evaluated first, and hence got executed, and now this one got skipped. So अब ऑर्डर सही है, सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स चेक हो रहे हैं और इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम लिखे जाते हैं। So now we will come to real world examples where we will make some simple systems that can be used in real life. So first we will try discount system. So एक practical example है, तो इसमें हम क्या करेंगे? So आप ये प्रोग्राम खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें आपको अमाउंट यूजर से इनपुट करना है एज अ इंटीजर, और फिर उस अमाउंट को हमें कंपेयर करना है टू मल्टीपल वैल्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन वी प्रोवाइड द यूजर discount. More the amount, more the discount the user gets. So we accept the amount from the user. Then if the amount is greater than equals to 10,000, then the user is given 20% discount. Simply print it on the screen. If the amount is greater than equals to 5,000, then the discount given is 10%. If the amount is greater than equals to 2,000, 5% discount is given, and else means if in any other condition no discount is given. Means if amount is less than 2000, no discount is given to the user. So pause the video and try to make this project yourself. Then after some time I will try it on my own. So now I will do it. So I accept the amount from the user in the form of integer. I give them prompt to enter the amount. Now I will compare this amount with the values I just said, and I will provide the user the discount accordingly. So either you can print each statement like 20% discount, 10% discount in each LF, or simply we can create a variable name discount and say just give it the value of 0. Now, if amount is greater than equals to 10,000, then discount becomes 20%. If LF amount is greater than equals to 5%, then discount becomes 10%. Similarly, if amount is greater than equals to 2000, discount becomes 5%, and in any other condition, discount is 0.
So now we provide discount a value according to the amount entered by the user. Now we will simply print how much discount the user get, right? So now, whatever the amount the user enter, it will get compared to the values we have written here, and accordingly, the user will get discount. So now we will run this program. There are no error. Let's enter amount that is greater than 10,000, and we get a 20% discount. Similarly, again, we will enter amount, say less greater than 5,000, we get a 10% discount. Now, say the amount is 1500, as it's less than 2000, we get 0% discount. So ऑब्जर्व करिए हर बार सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हुआ पाइथन में पहली मैचिंग कंडीशन मिलते ही डिस्प्ले देगा. So now we now move to another real world example that is of traffic type. So now I will give the description that what you guys have to make. You will pause the video and try to make this project yourself because it's same as the one I just made in front of you guys. So what you have to do, you have to ask the user for a color that is red, yellow, green, and the user will provide it. And then you have to compare the input with the colors red, yellow, and green. If the color is red, you have to print stop. If the yellow color, if the color is yellow, you have to print get ready. And if the color is green, you have to print put. And if the input is anything other than red, yellow, and green, you have to print invalid signal. So that's the description of the project. Uh, so pause the video and try it yourself. So, so hello everyone, welcome back. अब तक हमने if else और else सीख लिया है. अब हमारा प्रोग्राम टू या मल्टीपल डिसीजन ले सकता है, लेकिन कभी कभी एक डिसीजन के बाद ही दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है. यही यही यूज होता है नेस्टेड इफ. ये टॉपिक देखने में बड़ा लगता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है. सो व्हाट इज नेस्टेड इफ? सो नेस्टेड इफ का मतलब है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट. सिंपल, बस इतना ही. क्वेश्चन है, ऐसा कब करते हैं? जब दूसरी कंडीशन तभी चेक करनी हो जब पहली कंडीशन ट्रू हो. दैट्स व्हेन वी यूज नेस्टेड इफ. सो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप किसी बिल्डिंग में एंटर करना चाहते हैं. सबसे पहले सिक्योरिटी गेट पर आईडी कार्ड चेक होता है. अगर आईडी वैलिड है तब लिफ्ट एक्सेस मिलता है. उसके बाद ऑफिस के गेट पर फिंगरप्रिंट स्कैन होता है. नोटिस करिए, फिंगरप्रिंट तभी चेक हुआ जब पहला गेट क्रॉस हुआ. यही नेस्टेड इफ है. So if we have to write syntax of nested if, it will look like this. So this is a syntax of nested if. So after if पहले चेक होगा, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो तभी हम इस if के अंदर जाएंगे. अगर वो फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट सिंपली स्किप हो जाएगी. और अगर ये ट्रू हुआ तब ही सेकंड कंडीशन भी इवेल्युएट होगी. और अगर वो इवेल्युएट होगी ट्रू हुई तब जाके ये फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज नो.
So nested if statement, we are checking two conditions. Where first condition first get true. If it did, then only second condition get evaluated and the final statement get executed. If first or second condition evaluates to be false, then simply this statement never get executed. तो हम इसे एक एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं. सो इस एग्जाम्पल में हम देखें यूजर की एज लेंगे एज अ इनपुट और यूजर से पता करेंगे कि उसके पास आईडी है कि नहीं. तो अगर यूजर की एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है, तभी जाके हम उनसे उनकी आईडी पूछेंगे और उनके पास उनकी आईडी हुई तभी हम उन्हें एंट्री अलाउ करेंगे. अगर उनकी एज 18 से कम हुई तो हम उन्हें एंट्री अलाउ नहीं करेंगे और उनकी एज 18 से प्लस हुई पर उनके पास अगर आईडी नहीं हुई तब भी उन्हें हम एंट्री अलाउ नहीं करेंगे. सो हम इस डिस्क्रिप्शन को एज अ कोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस. So say we have a age which is greater than 18 and has ID. Let's say the user have a. So we will first ask the user if the age is greater than or equals to 18. And only if the age is greater than 18, we will ask the user for their ID. And if the have ID and the age is greater than or equals to 18, we'll print entry is allowed. And if any of these conditions are not true, we will simply uh, not allow them entry to happen. So इसे run करेंगे and entry was allowed because the user have the ID and their age is greater than 8. So if any of this is false, say user is 16-year old, so the entry was not allowed and nothing was print. So this condition just simply never executed. And if the age is 22 but don't user don't have the ID, then this condition will get true, but this will become false. So this will not get printed. And that's what happened here. So यहाँ दो कंडीशन है. पहली एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी आईडी भी होनी चाहिए. दोनों ट्रू है इसलिए एंट्री अलाउड हुआ. So now we will see nested if with else. So now I will write another example जिसमें हम नहीं बस ये कंडीशन लगाएंगे, दो कंडीशन यूजर पे लगाएंगे कि उनकी एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए और उनके पास टिकट होनी चाहिए टू गेट इनटू अ कॉन्सर्ट. बट उसके साथ हम यूजर को ये भी बताएंगे कि हम उन्हें एंट्री अलाउ क्यों नहीं कर रहे. सो मैं आपको एक कोड लिख के जाए समझ पाएगा. से यूजर की एज है 25 and the user has a ticket. So it's true. So if age is greater than equals to 18, then only we will check if the user has ticket. And if the user has ticket and age is above 18, we'll welcome the user to the console. But if the age is above 18, but the user don't have the ticket, we will state the reason why we are not allowing user in the console by saying please buy a ticket. And if simply the user 2 is not 18 plus, we will simply say entry restricted for age less than 18. So what we are doing here, so
We are asking the user again for their age, and if the age is valid, we are asking for ticket. If the user have age, right age and ticket, we will welcome. If user have age, the right age but don't have ticket, we will ask them to buy one. And if simply user is not of the right age, we will say entry restricted for the age less than 18. We will now run it and see different combination of this program. So, uh, yeah, so age was 55 and has ticket, so this was executed. Now see if the user don't have the ticket. This oh, now the age is correct, but the user don't have the ticket, so this statement will get executed to say please have a ticket. Now let's see if the age is less than 18. Then what will happen? Entry restricted for age less than 18. False. This become false, so this got false get, and directly this statement got executed. So अब एक बहुत important confusion clear करते हैं, the difference between nested if versus elif. So means एक, what is the difference between this, that is nested if, and the system we have with if else and else. So student अक्सर पूछते हैं nested if कब यूज करें और elif कब. So रूल बहुत सिंपल है. elif तब यूज होता है जब मल्टीपल अल्टरनेटिव चॉइस हो. एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल रेड येलो ग्रीन एक ही कलर हो सकता है, इसलिए elif. नाउ नेस्टेड इफ तब यूज होता है जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो. एग्जाम्पल लॉगिन सक्सेसफुल, अगर हाँ तो चेक करें यूजर एडमिन है या स्टूडेंट. यहाँ सेकंड क्वेश्चन तभी पूछा जा रहा है जब पहला ट्रू हुआ हो, इसलिए नेस्टेड. So now we will see the concept of multiple independent. So अब एक और concept है. कभी कभी हमें एलिफ की जरूरत नहीं होती, ही नहीं होती. हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we have marks is equals to 85, if marks is 85 equals to 40 plus if तो हम इसे रन करेंगे. हमें मिला pass and distinction means the user is both pass and have distinction. If we need to mention both of these about the user, then we simply use multiple if independent if statements instead of using if and elif, which would have caused only one of these statement to be executed. तो यहाँ दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंटली चेक हुई, इसलिए दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए. ये elif से completely different है. Now we will move on to ternary operator. It's called ternary because it has three operands. So Python में एक शॉर्टकट भी होता है, इसे ternary operator या conditional expression कहते हैं. ये सिर्फ सिंपल कंडीशन के लिए यूज होता है. So for example, if we have a code like this, तो एक सिंपल सी कंडीशन है. तो टर्नरी ऑपरेटर हमें अलाउ करता है कि ये ऐसी सिंपल सी इफ एल्स कंडीशंस को एक सिंगल मिनिमलिस्टिक वे में लिखने के लिए
so that we don't इस हमें ऐसे बड़े बड़े if else कंडीशन ना लिखना पड़े और हम एक ही सिंगल लाइन में उसे रीडेबल फॉर्मेट में लिख सकें. So this code can is its equivalent can be written in just a single line like this. Print adult if age is greater than or equals to 18 else minor. So what's happening here? So it simply says that print this is an expression that returns either this value or this value. So it's saying that return adult string if age is greater than 18, else return minor at another text. So we can see it's much more readable than this, and here we don't require the colon indentation in new line or anything. It's simple readable format. So it's a way you can use to write simple if else condition like this. So क्या हमें हमेशा टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करना चाहिए? नहीं. जब लॉजिक सिंपल हो तब. अगर कंडीशन बड़ी हो रही है नॉर्मल इफ एल्स ज़्यादा रीडेबल होता है उस केस में. So now we will discuss common beginner mistakes. So we write a code for you that will exclude that mistake. So यहाँ ये लॉजिक करते. सो 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट को सिर्फ पास मिलेगा. डिस्टिंक्शन कभी भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि पहली कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई और सेकंड कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई. So what is the solution here? Simply remove L to make two independent if statement or simply swap them to give distinction to any person having marks greater than 75 and any person having marks less than 75 but greater than 40 will get a pass. So another mistake, uh, fine mistake, it's the easy one as always. I've already shown you this mistake. Still, so what's the mistake here? What's the beginning to find it? Yes, it's the indentation here. It's a very common mistake, so it needs multiple reminders that not to do it. Though we also make it easy to spot. So now I will ask you some quick quiz questions. Pause the video, try to answer the question in your head or talk them out loud and see if your answer matches mine. So what is a nested if? So nested if simply is an if statement inside another if statement. Simple as that. Now, second question, which statement is better for grading system? So we have already done this type of question and the answer is if else. The third question is which statement is better when a second condition depends on the first? So we have already done it and that is nested if. Where the second condition depends on the first and the second condition simply don't get evaluated if the first condition is false. Now the fourth question is, how many else block can one if statement have?
So the answer is only one. If statement can have any number of LF, it can only have one if and one else statement at the start and at the end. If we use multiple if, it will simply become independent if statements. So now the fifth question is the ternary operator mandatory? So this no, it is just a shorter way of writing simple if else statements. So a quick recap and congratulations आपने Python के conditional statement complete कर लिए हैं आज से आपके प्रोग्राम सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते और डिसीजन भी ले सकते इस चैप्टर में हमने सीखा if else and if nested if multiple independent if ternary operator common mistakes and real world examples ये कंसेप्ट आगे आने वाले लूप्स फंक्शन और प्रोजेक्ट में बार बार यूज होंगे मैं रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आप कम से कम 10-15 कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम्स को देखने की प्रैक्टिस करें सो अब तक हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता था लेकिन अगर मुझे एक ही मैसेज 100 बार प्रिंट करना हो या 1 से 100 तक नंबर्स डिस्प्ले करने हो या 500 स्टूडेंट का डेटा प्रोसेस करना हो क्या हम 500 बार प्रिंट लिखेंगे बिल्कुल नहीं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लूप्स और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पाइथन को लूप्स की दुनिया में एंटर करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिए हैं अब हमारे प्रोग्राम्स डिसीजन ले सकते हैं लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ सपोज मैं स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक बार प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंपल है इसे रन करेंगे एंड वी गेट हेलो वर्ल्ड सिंगल टाइम लेकिन अगर मुझे ये मैसेज 5 बार प्रिंट करना है so I will have to write it 5 times right hello world again print hello world again hello world again hello world so आउटपुट हम निकालें तो हमें मिला 5 बार हेलो वर्ल्ड काम तो हो गया लेकिन इमेजिन करो अगर मैं बोलूँ 100 बार प्रिंट करो या 1000 बार क्या तुम 1000 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे बिल्कुल नहीं सो प्रोग्रामिंग का फर्स्ट रूल है नेवर रिपीट योरसेल्फ अननेसेसरी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लूप्स सो हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे रियल लाइफ में भी रिपीटिशन होती है रोज सुबह उठना रोज ब्रश करना रोज कॉलेज जाना स्कूल जाना रोज अटेंडेंस लगाना ये सब रिपीटेड टास्क है प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे टास्क बार बार रिपीट होते हैं एक वेबसाइट पर 100 प्रोडक्ट डिस्प्ले करना थाउजेंड्स ईमेल भेजना गेम में कंटिन्यूसली प्लेयर मूवमेंट चेक करना एटीएम मशीन कंटिन्यूसली नए कस्टमर का वेट करती रहती है हर जगह लूप यूज होते हैं सो व्हाट इज अ लूप a simple definition is a loop is a programming structure that represents a block of code until a condition changes or for a fixed number of times. So simple language में loop एक मशीन की तरह है उसे एक काम दे दो वो वही काम बार बार करता रहेगा so types of loop in python so python में mainly दो loops होते हैं one is while loop and second is for loop
हम while लूप से शुरू करेंगे क्योंकि इससे कंडीशन बेस्ड रेपिटेशन समझना बहुत इजी होता है. सो लेट्स स्टार्ट while लूप. तो while का मतलब होता है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड रिपीट करो. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप स्टॉप. So that's the most fundamental definition of while loop. कि जब तक condition true है, the code will get executed again and again and again until that condition becomes false. So इसका अगर हम syntax लिखना चाहें तो it look like this. We write while and we write the condition that needs to be checked at every repetition in the statement that's going to execute in each loop. So this statement gets checked and evaluated at each loop. Uh, so uh, leave that first. Okay, so what happens when we enter a while loop? So when we enter a while loop, this condition get evaluated, and then the condition is true, then the statement is uh, executed. Now, instead of Python letting the control go to the next line, say line 6 or 7, the control again go back to the line 4, and that condition is again checked if it's still true or not. If it's still true, then this statement is again executed. Again, the control doesn't go to the next line but to line 4 again, and that condition is again checked. And this process go on and on and on until this condition eventually become false. In some case, it never become false, so which results in a infinite loop. We will see of it later. So कंडीशन चेक करो अगर ट्रू कोड एग्जीक्यूट करो फिर दोबारा कंडीशन चेक करो ये साइकिल रिपीट होती रहे. So let's make our first while loop program. So there's some ways of writing this program as we need to take care that the loop starts and the condition gets checked and then loop also stops also and it doesn't just keep going on and on. So try to uh, run this pattern of ending the loop. So we have taken a count variable that stores the number of loops. So we will write while. The condition here we will set is that count is greater less than equals to 5. Means, and then I will explain it later. Then we will use boolean. We will write the statement that's going to iterate or repeat again and again. Here we are trying to achieve the same thing that is trying to print hello world uh, 5 times. And then we will do count plus equals to. So what is happening here? First we will run it and see what we get. And we get hello world 5 times in just these lines. And it doesn't stop at 5 times. We can write hello world any number of times by just changing this number here, say 20 times. And we get 20 hello worlds just in that instant. So what's happening here? So the count starts from equals to 1. Then that count is then checked if 1 is less than equals to 20. That is true. And as that condition is true, the statement is executed, which prints hello world. Now the count 1 is added in the value of count, that is count become 2 now. Now 2 is evaluated here and 2 is less than equals to 20 still it's 2 so it get printed and this also get executed. Now count becomes 3. This goes and goes on and on until we get at 19. 19 again it's true. For count equals to 20 it's still true so hello world is printed
again, and now it becomes, and after this statement, count की value हो जाती है 21. Now the control goes back here, and the condition is checked. 21 is less than equals to 20. This condition becomes false. Hence, the control don't go inside, and the loop simply terminates, and the controls moves away from the loop statement. And that's how the loop ends at this point after printing hello world 20 times. When the condition is become false. This condition becomes false. So, what is an iteration here? These are some terminology you should know. एक important word है iteration. लूप का एक complete cycle को हम कहते हैं iteration. अगर लूप 5 बार चला हम बोलेंगे लूप ने 5 iteration complete की. जैसे यहाँ पे लूप ने 20 iteration complete की. Now let's see another example. In this example we will print uh, numbers from 1 to 10. So instead of doing it manually, we will use loop again. Uh, so see if you can understand it. Just for what I meant. So it's similar to the previous case, and the only thing changed here is we are printing the number itself instead of printing any text here. So what you guys think will be the output? Pause and think. And till what number do you guys think the output will print? Okay, I will run it now. The output is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what is happening here? So 1 again is goes there, 1 is less than equals to 10. So it's a true statement. So we enter the loop, 1 is printed, that's there. Then number plus equals to 1 means number become 2 now. 2 get evaluated here, 2 is still less than 10. It prints 2 here, and then number is 1 is added here. So it goes and goes and goes. The iteration goes till 10. Now, when it becomes 10, 10 equals to 10. Now print number that is 10. So 10 is printed. Number plus equals to 1. Now it has become 11. Now 11 is greater than 10. So the control don't enter the loop and the loop terminates. So we don't see 11 here. So it was a simple example of a value for printing number from 1 to 10. That's how powerful loops are. They allow us to uh, do a repetitive task by writing just some lines of code. Now एक another practical example जहाँ पे हम एक countdown timer लिखेंगे जहाँ पे uh, हम timer start करेंगे with 5 and we will go till 0, and when the timer hits 0 we will print times is 1. So if you want you can pause the video and try it yourself first, and if you can't we will try. So let's see how we do it. So let's take timer available equals to 5. Now the condition will be that timer loop will run until the timer is not equals to 0. If timer is greater than 0, then we will print the timer, and as we are going from larger number to smaller number, the timer value should decrease with each iteration. So minus equals to 1. And then when the timer hits 0, the loop will terminate. We will welcome the user with this message. Now we will run it, see what happens. So this is the output. So the timer starts at 5,
It's true, 5 is greater than 0, it gets printed. And same happens with 4, 3, 2, and then we reach 1, 1 is greater than 0, 1 get printed. Now timer becomes 0 at this point. So 0 is greater than 0, false, and time's up. The control goes out of the loop and this statement is get printed. And we don't get a 0 because the loop don't enter here. The control don't enter the loop. So इस तरह के countdown games, quizzes or online exam में बहुत use होते हैं. Now we will see another example. Password attempts. So this is a program where we are asking user for entering their password, but we are uh, giving user only 3 attempts. If they uh, take more than 3 attempts, uh, then simply program don't allow them to enter the password, so they can guess it eventually. Uh, So it's going to be like this. You can again pause the video if you want to try it. We have attempts, that is 3. These are the maximum number of attempts we are allowing user to enter their password. If they try to do more attempts, they will simply not be able. So this is the program we have. So यहाँ दो नए कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं हमें. दैट इज पहला लूप के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है एंड दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि सही पासवर्ड मिलते ही लूप रुक जाएगा. So that is the main work of break here. That is, if the password is correct, break statement will execute. And break statement for now you can understand is that when it's executed, the loop inside which it's executed simply ends and it simply stop repeating itself and exits the loop. So what's happening here? So we have provided the user the 3 attempts and the 3 is greater than 0, so we enter the loop. The user is prompted to enter the password. If they enter the right password, they log in successfully in their first attempt, and the loop breaks and we exit the loop. But if this is not true, then this is printed to say that the password is wrong and the attempts are decreased to 2. Now 2 is greater than 0, same thing happens. 1 is greater than 0, same thing happens. And when this becomes 0, the loop ends. The loop ends and this is printed and the user is not allowed any more chance to guess the password. Okay, so we will run it and see how it will act. Okay, so the symbol is running here.
It was create password, password here, password is it was editor issue. There was nothing wrong here. Let's enter wrong password again, wrong password again. We got three chances, and then after three chances, we were denied the access and program ended. But if we get it right, say in our second attempt, the password is 5.1.3, we log in the system, and the loops end and the program ends here also. So, now uh, we are done with it. So we'll do another example where we will use while loop to find the sum of first 10 numbers. It's another concept that get used a lot in different scenarios. So what we are doing here is we will find the sum of first 10 numbers. We will use while loop, uh, and then we simply add all the numbers in each iteration to find the sum of first 10 numbers. So it will look like this. I'll explain it after I go. So this is it. Was not a big program to make. So what's happening here? First, I will show you by running it. See if it's working right. It's correct. Yes. So the sum of first 10 numbers is 55. So what is happening here? So we start with number one, where and we take a variable sum, which is equals to 0. Now, the loop check if 1 is less than equals to 10, which is true. So sum, uh, we enter the loop, and here the variable sum get added a value of 1. So if 0 plus 1, it's 1. Now we add plus 1 into the number, so it becomes 2 now. So 2 is less than equals to 10, 2. Now in the variable sum which stores 1, we add value of 2. That is become 3. Again, the addition happen of 1 here to make this number 3. This way, the number keep incrementing and that incremented number keep getting added into the sum variable, uh, and this loop goes on for until it reach until the number becomes 10. As it becomes 10, it get added in finally at last for the last time and in the sum variable, and then finally we get the output here, which represents the sum of first 10 units. So this is also a way of writing while loops. So ये प्रोग्राम एक से 10 तक के सारे नंबर को ऐड करता है. ऐसे प्रोग्राम मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा प्रोसेसिंग में बहुत कॉमन हो. Now we will move on to another example where we are going to print a multiplication table. So let me first write the code and then I will explain the code to you guys. We are writing the multiplication table of 7 here. Okay.
This balance I was so so this is the program. You would have thought that printing multiplication table would be a complex code or a large code, but no, it's a very small code. So what's happening here? First, I will run it to show you guys what we get here. So it's very beautiful and it's a whole table of seven. It's written just like in this one. So what's happening? So simply this loop is running for 10 times where I is getting incrementing from 1 to 10. We are written this part only for the multiple as for showing. The main thing happening is here where 7 is getting multiplied by each value 5. So first it multiplied by 1, then 2, then 3, then 4 until we reach 10. And when I become 11, the loop simply ends and no table is get printed. Uh, इस प्रोग्राम को हम बेटर बना सकते हैं by taking user input where the user simply choose which numbers table they want. Uh, so I will modify it to make it more interactive and useful for the user. And so, whatever number the user provide, we will get the table of that number. Say I want a table of number 55. See, it's very easy and quick. And we can this way get table of any number you can think. Let's say 112. We can table of number 2 just like that. That's the power of coding and Python. And you can do these just with the line of this number panel. Now, अब एक dangerous mistake पे हम आते हैं. That is the mistake of infinite loop. So let me write a code for you. So you guys think will be the output of this code? So I will run it and let's see what happens. And yeah, this is what a infinite loop looks like, where the program is just not terminating and it's keep printing and printing and printing and printing. You can see this sidebar, it's just keep going on and it's not stopping on its own. So I will just terminate this. So प्रॉब्लम क्या है सो हम काउंट को इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू रह रही है और रिजल्ट प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं बिकॉज यहाँ पे हमने काउंट इक्वल्स टू 1 लिया और काउंट लेस देन 1 है इट्स ट्रू but we are not incrementing count with plus 1 so it always stays 1 and it keeps iterating and there is just no stop to it. The simple solution for stop is to increment the number by 1 at each iteration so that we get the 5 iteration of the number. So इस सिचुएशन को कहते हैं इनफाइनाइट लूप और अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए VS को टर्मिनल में कंट्रोल प्लस C प्रेस करके प्रोग्राम स्टॉप कर सकते हैं लेट मी शो यू दिस if you press control C the program terminates you can see keyboard interrupt. So this is the way of exiting infinite loop if you have a अब हम डिस्कस करेंगे some practice questions. So the first question इनमें इन क्वेश्चन में पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है फिर आपको ये खुद ट्राई करना है खुद ट्राई करने
but आपको ये वीडियो आगे देखनी है जहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूँ. So the first practice challenge is print even numbers. तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. आपको फर्स्ट 20 तक जो भी इवन नंबर होते हैं वो प्रिंट करना है यूजिंग द वैल्यू. So pause the video and try it yourself. And after you have tried, you can resume the video and I will now show you the solution for it. Oh, so let's go. So the solution is for it is that's it. So many of you would have thought that it would be a complicated question that how we are going to like going to print all the even number till 20. We would have to use remainder or if else, but no, nothing that thing are not required. We can simply and start from 2 and keep adding 2 until the number becomes 20. And this way we get even number till 20. We don't require if statement anything. Yeah, if you have to like sort out the number from 1 to 20 that even then we would have required if else and remainder. No. Now the second challenge and question I have for you is very similar to the countdown we saw earlier. The only difference is that we start from 20 instead of 5. That is, um, you have to write a program that starts from 20, count down from 20 till 1, and then print anything like times up, last of anything. So pause the video and try it yourself first, then I will do it for you guys. So hopefully आप सबने इसे ट्राई किया होगा और मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ. हमें 20 से स्टार्ट करना है और काउंट डाउन करने के 1 और हमें इसे प्रिंट करके जाना है और जो नंबर जो है हमें हटा के जाना है. And once the countdown is 0, we print everything like that. So this was the solution for the problem. We will run it and see if it works. Yeah, it works. It countdowns from 20 to 1 and then it's the blast. It's it's the same thing as the program we have done already, just the countdown starts from 20 instead of 5. So now uh, we have another question for you guys. So this is our first slightly bigger problem. It's a running total question. We need two variables. One variable keeps track of how many numbers the user has entered. And the second variable stores the running total. So we will attempt it here. I will do it. Is equals 0, 5, 6, this equals 5, 1 equals 15, and 4, total plus equals 1, plus equals 1, and total. So this was also a very easy. We will also choose the very large numbers. 5, 1, 2, 5, and 2, and 3. So that was it.
We take file number and then we submit and then we show. Okay. So now that was all for the practice question, and I will discuss small questions with you. Just pause the video and type answer to yourself in your head or any way you want, and then listen to my answer and see if it's matching or not. So what is an iteration? So iteration is one complete execution of the loop code. That is what is iteration. Now the second question for you guys is what happens if the loop condition is false initially? So if the condition is false initially, the loop body just never execute. The control just never go inside the loop and the loop just never starts. So it's like loop is just not there. Now another question for you is what causes an infinite loop? So when the condition never becomes false, uh, then in that case, we get an infinite loop. The solution for it is that writing a condition and creating the loop body in such a way that the condition eventually gets false. So excellent आज हमने लूप की फाउंडेशन समझ ली हमने सीखा कि while लूप कंडीशन के बेसिस पर कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है हमने इटरेशन इनफाइनाइट लूप और कई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है कभी कभी हमें लूप को बीच में ही रोकना होता है या किसी पर्टिकुलर इंटरेशन को स्किप करना होता है इस काम के लिए पाइथन देता है ब्रेक और कंटिन्यू और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों कीवर्ड को डिटेल में सीखेंगे so see you in the next section तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप सीखा था हमने देखा कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप बार बार चलता रहता है लेकिन अब एक क्वेश्चन क्या हर बार हमें लूप को उसकी कंडीशन फॉल्स होने का वेट करना पड़ता है आंसर है नहीं कभी कभी हमें लूप को बीच में ही रोकना होता है और कभी कभी सिर्फ एक पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना होता है और कभी कभी हम कोड का स्ट्रक्चर लिख देते हैं लेकिन इसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन बाद में करना होता है सो पाइथन हमें इन तीनों सिचुएशन के लिए तीन स्पेशल कीवर्ड देता है दैट इज ब्रेक कंटिन्यू एंड पास चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं सो ब्रेक सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक की नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा होगा ब्रेक यानी रुक जाना प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली वही मतलब है इसका जब पैटर्न को ब्रेक मिलता है द कीवर्ड इन एनी लूप वो उस लूप को तुरंत वहीं पर रोक देता है कंडीशन दोबारा चेक नहीं होती लूप सीधा टर्मिनेट हो जाता है और एग्जीक्यूशन लूप के बाद वाली लाइन से कंटिन्यू होती है so let's understand it with an example we have seen similar example in the previous lesson so I will write a similar thing to it. Uh, See here, we are not taking any count or anything or any condition that may get false on its own. We are simply creating an infinite loop here in a way. False. Well, this is the password that needs to be entered. Please enter it. Um, What's this code for? So this code provides us infinite chances to enter the password. And if we keep inputting the wrong password, it will take the password here
this will not get through. So this whole thing will get skipped and this will get printed. Then we will again go into top. The condition is always true. So it will again ask us for next password. And this will continue till we get the right password inside the text box. If we keep putting the wrong password, it will just keep going on for infinite. And as soon as we write the correct password in the input box, it gets equals. And then we enter inside this if statement, where we first print that access is granted, and then the break statement is executed. So इस प्रोग्राम को समझना है यहाँ हमें while true लिखा है इसका मतलब है कि ये लूप थियोरेटिकली कभी खत्म ही नहीं होगा अब यूजर पासवर्ड एंटर करेगा अगर पासवर्ड गलत हुआ तो रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट होगा और लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन जैसे ही यूजर सही पासवर्ड एंटर करेगा सबसे पहले एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होगा उसके तुरंत बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और लूप वहीं पर खत्म हो जाएगा यानी हमें कंडीशन फॉल्स होने का वेट नहीं करना पड़ेगा now we will execute it so I can enter any number from password and it will just going to keep going. Like there is no stop here, and the only way to stop and get inside the if statement is by entering the right password. It is Python and the as soon as we write it, access granted, break statement is executed, and which breaks this while loop, and the control slips out of the while loop here. If break was not there, we would have been stuck in an infinite loop, even if we had entered the correct password. Now we will get to the second example where we have to guess the secret number. It's the same thing as writing the password, but just here we are guessing a number. So say secret number is 17. Why? Oh, it's an infinite loop. Yes, is equals to int. We will take as an integer input as a secret number is a number, not a string. And if yes is equals to great, then we will print and select two equations and if yes is one, and then yeah, we will also take the loop so we can exit it. And if the guess is not wrong, we will continue this until we get it up. So again, this is a simple program. ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है गेम्स में इसी तरह गैसिंग सिस्टम बनते हैं हम नहीं जानते यूजर कितनी अटेम्प्ट होगा इसलिए हम लूप को कंटिन्यूसली चलने देते हैं और जैसे ही करेक्ट आंसर मिलता है ब्रेक लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं सो let's guess a number stop guess a number that's wrong guess a number that is wrong we guess a number and we got it right we got congratulations and due to the break statement, we exited out of the while loop. So now that was all for the break statement. It simply exit us from the loop even if the loop is infinite loop. Now we move on to continue statement. So अब बात करते हैं continue की बहुत सारे बिगनर्स एक और कंटिन्यू को सेम समझते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं ब्रेक पूरा लूप बंद कर देता है लेकिन कंटिन्यू से करंट इटरेशन को स्किप करता है लूप खत्म नहीं होता बस करंट नाउन स्किप होता है और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाता है so let me explain it using an example
Here we have to remember is of continue. We do have need to provide a condition. So it gets stopped at some time. You can't have an infinite loop and use continue to stop the infinite loop. So it only stops using uh, the break statement for it. But here we are not using break, so we will go the usual way of using condition to stop the loop. So we will continue. So what's happening here? So यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है। इनिशियल ये लूप 10 बार चलेगा जैसे आप देख सकते हैं ये इंक्रीमेंट हो रहा है +1 और ये लूप 10 बार चलेगा। फिर अगर हम इनिशियली स्टार्टिंग से देखें तो नंबर इज इक्वल्स टू 1, नंबर इज लेस देन 10, वी एंटर द लूप। Now 1 is not equals to 5, so we will not get in here. We will print the number directly that is 1 and then it will get empty. Then 2 will come, it's not equal, so we will jump here, 3, 4. Now, when 5 comes, 5 is less than equals to 10, so we enter the loop. Now, 5 is equals to 5. So, we will add the number, that number becomes 6 and continue. Now, this iteration will be get skipped, means this part of the loop will get skipped, but it will not exit the loop. We will still come back. Number is now 6 due to this, and 6 is less than 10, but not equals to 5, so 6 will be 10. So what will happen will that this loop will print 1 to 10 and will skip number 5 due to this part and continue statement. Let me run it. So, so you can see 1, 2, 3, 4, 5 is skipped, 6, 7, 8, 9, 10. तो इस एग्जांपल में हम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं लेकिन एक कंडीशन है नंबर 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए। जब नंबर 5 बनेगा पाइथन कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा उस इटरेशन के बाकी कोड स्किप हो जाएगा और लूप नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाएगा। रिजल्ट सारा नंबर प्रिंट होंगे बस 5 नहीं। सो अब हम करेंगे डिस्कस सब कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। अब एक बहुत डेंजरस मिस्टेक देखते हैं। आई विल ऐड द टूल एंड वी विल सी what is the mistake in it. So say we have this one number is less than equals to 10 equals to 5 then number equals to तो यहाँ पे क्या ये कोड सही है? नहीं, ये इनफाइनाइट लूप बना देगा। रीजन समझिए, जब नंबर 5 बनेगा तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो लाइन है नंबर प्लस इक्वल्स टू 1 वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिजल्ट नंबर हमेशा 5 ही रहेगा और कंडीशन कभी चेंज नहीं होगी और लूप कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए एक रूल याद रखिए, अगर कंटिन्यू के बाद लूप वेरिएबल अपडेट होना है तो अपडेट कंटिन्यू से पहले ही कर दीजिए। Let us run it. So now we will see an example where we will print only odd numbers. That is, we will uh, print the first 10 numbers, and in those first 10 numbers, we will print only the odd numbers.
So pause the video and try it yourself. Uh, in this question, while loop with if else, sorry, on the if statement and remainder operator will get used along with continue. So pause the video, it's a good question and try it yourself. So अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा तो हम इसको सोल्यूशन बता देंगे. So we will write 5 and extract the solution first and I will explain what's happening here. Okay, so that's it. The question. So what's happening here? So we are running the loop from 1 till 10 means the loop will the number variable will have value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and as it get equals to 10, it will get terminate as the next number is 11. So what happens is that first one will go in, one remainder 2 is not equal to 0, so 1 will get printed, then uh, the number will get incremented to 2. Now 2 remainder 2 is equals to 0. So number get implemented but nothing get printed means 2, number 2 doesn't get printed. Now we have the loop iterates and we get 3 number equals to 3 which not equals to 0 whose remainder is not equal to 0 for 2, so it will get printed through here and this cycle will go on till we reach 10 where all the even numbers will get skip due to printing statement and will not get printed, while all the odd numbers will get printed due to this. So यहाँ पे हम even number को skip कर रहे हैं. जब भी पाइथन को even number मिलता है वो कंटिन्यू एक्सिक्यूट करता है और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाता है. रिजल्ट में से odd numbers प्रिंट होते हैं. So now we will see the difference between break and continue. So एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं. ब्रेक का मतलब है बस ना काम खत्म लूप बंद और कंटिन्यू का मतलब है ये वाला राउंड स्किप करो बाकी लूप चलो. ये डिफरेंस कभी मत भूलो. नाउ वी कम टू द लास्ट कीवर्ड ऑन फॉर आवर लूप दैट इज पास. अब आता है आज का लास्ट कीवर्ड पास. ये सबसे सिंपल कीवर्ड है और ऑनेस्टली बिगिनर्स इसे कम ही यूज करते हैं लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स बहुत यूज करते हैं. सपोज आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो. आपको पता है कि यहाँ फ्यूचर में कोड लिखना है लेकिन अभी नहीं. पाइथन एम्प्टी ब्लॉक अलाउ नहीं करता इसीलिए टेम्पररी प्लेस होल्डर के लिए हम पास यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल we have a code and I will write it for you which will explain you on the role of the pass keyword here. So यहाँ क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हमने यूजर से एक इनपुट मांगना है कि वो एक चॉइस थी आइदर ए और बी.
सो अगर यूज़र ने हमें चॉइस दी ए तो हमारे पास उसका एक ऑप्शन है कि हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि हमें प्रिंट करना है कि ऑप्शन ए सिलेक्टेड, सो वी प्रिंटेड it, but we still don't know what we want to print when option B is selected, so we have kept it for later. uh, that's why we don't know what to write here, so we simply write password. We can't left it empty if we want to, because that will give us an error, as else should have a statement inside it. So pass is simply a placeholder that will allow us to keep this block empty and fill it with the content that we want to in future, when we will know what we want to. So यहाँ ऑप्शन बी का फीचर अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हम स्ट्रक्चर पहले ही बना रहे हैं। पास पाइथन को बोलता है अभी कुछ मत करो, बस एरर मत दो। So we will run it, and if we write p here, nothing will happen. But if pass was not there and we then still don't know what we provide here, and we will leave it empty, that would have given us an error. So to escape from this error, we have this pass keyword. So अब चलिए देखते हैं ये keywords रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं. So break keyword, login systems, ATM machines, guessing games, menu driven programs में यूज होता है. तो अगर बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो वो इनवैलिड डेटा को स्किप करना, करप्टेड रिकॉर्ड्स को इग्नोर करना, इवन या ऑड नंबर स्किप करना में यूज होता है. और अगर हम बात करें फर्स्ट कीवर्ड की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम फ्यूचर कोड को के प्लेस होल्डर के जैसे, और क्लास और फंक्शन डिजाइन के इनिशियल स्टेजेस में पास बहुत यूज होता है प्रोफेशनल. तो अब आपके लिए पहला चैलेंज, पॉज द वीडियो और खुद ट्राई कीजिए. एक प्रोग्राम लिखिए जो यूजर से बार बार नंबर इनपुट ले. जैसे ही यूजर जीरो एंटर करे, लूप स्टॉप हो जाना चाहिए. और आपका एक हिंट है इस प्रोग्राम के लिए, यूज ब्रेक कीवर्ड. एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें क्या करना है. आपको सिंपली बार बार यूजर से इनपुट मांगना है यूजिंग while loop, और जैसे यूजर इनपुट डाले जीरो, द लूप शुड स्टॉप. So pause the video and try yourself. आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा. मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन लिखता हूँ. Maybe the infinite loop, because the only way to stop this loop is when the input is zero. We will get the input, let's say it's a, and input, input. So the user will keep entering the number, and it will stop only if a is equals to zero. If it equals to zero, it will quit. Otherwise, it will not. So it was this simple. Um, I will show you by running it. It's infinite loop. I can keep entering number and it will just keep going on, and it will stop only when the input is zero. So I hope आपने क्वेश्चन अपने आप ही कर दिया होगा. अब हम आते हैं दूसरे प्रैक्टिस चैलेंज पे, जो आपको करना है तो ट्राई कीजिए. मैं अभी आपको सोल्यूशन बाद में बताऊंगा. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 से 20 तक नंबर्स प्रिंट करिए, लेकिन जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं उन्हें स्किप कर दीजिए. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. तो आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा. तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ. So we'll start by question 1. The number is less than or equals to 20. So this will keep going till 20. And we will see if the number is
divisible by 3, then the remainder now the remainder of the number divided by 3 will be 0. And in that case, we will just increment the number without printing anything and we will simply continue. And if the remainder by 3 is not equal to 0, then we will print the number and then we will print it like this. So this will print all the numbers that are not multiple of 3. They will give it around. You can see all the multiples of 3 are not part of this number series. So आज आप हम इसका क्लोज करते हैं और एक रिकैप देखते हैं आपको आज हमने 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड सीखे ब्रेक पूरा लूप टाइमिंग का देखा है कंटिन्यू जो करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन को चला जाता है पास एक प्लेस होल्डर है जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है ये तीनों कीवर्ड आपको लूप्स पर और ज़्यादा कंट्रोल देते हैं सो एक्सीलेंट अब आप लूप्स को सिर्फ रिपीट ही नहीं कर सकते बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक जितने भी लूप्स हमने लिखे हैं सब कंडीशन के बेसिस पर चल रहे हैं लेकिन अगर हमें पहले से ही पता हो कि लूप एग्जैक्टली कितने बार चले जैसे 10 बार या लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए ये या स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के लिए तो while लूप से बेटर एक और लूप होता है for लूप और नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन का सबसे कॉमनली यूज टू for लूप डिटेल में सीखेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक पिछले लेक्चर में हमने while लूप सीखा था और हमने देखा था कि while लूप तब यूज कर होता है जब रेपिटेशन किसी कंडीशन के बेसिस पर होती है लेकिन एक क्वेश्चन सपोज मुझे बस 10 बार हेलो प्रिंट करना है या मुझे किसी लिस्ट के सारे आइटम देखने हैं या किसी वर्ड का हर कैरेक्टर को प्रिंट करना है यहाँ मुझे कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे सिर्फ एक कलेक्शन के हर एलिमेंट पर जाना है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना और इसी काम के लिए पाइथन देता है फॉर लूप पाइथन में फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लूप है अगर आप किसी प्रोफेशनल पाइथन कोड को देखेंगे तो आपको फॉर लूप बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेगा सो सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं दैट इज व्हाइल लूप वर्सेस फॉर लूप सो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सो व्हाइल और फॉर में डिफरेंस क्या है सिंपल रूल याद रखिए अगर रेपिटेशन किसी कंडीशन के बेसिस पर है जैसे पासवर्ड सही आने पर तो व्हाइल लूप और अगर हमें पहले से पता है कि कितनी बार रिपीट करना है लूप को तो ये किसी कलेक्शन के एलिमेंट हर एलिमेंट पर हमें जाना है हमें हर एलिमेंट एवेलुएट करना है तो फॉलो ये गोल्डन रूल है now we will understand it of an example so एक एग्जांपल लेते हैं सपोज क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो वो एक एक स्टूडेंट के पास जाएगा पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट तीसरा स्टूडेंट और ऐसे ही लास्ट स्टूडेंट तक टीचर को हर बार मैनुअली काउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता बस एक एक स्टूडेंट के पास जाना है पाइथन का फॉर लूप भी एग्जैक्टली यही करता है वो कलेक्शन के हर एलिमेंट के पास ऑटोमेटिकली जाता है सो नाउ I will discuss the syntax of for loop with you guys. So the syntax is for variable or say fruit variable collection
So this is the basic syntax of for loop. इस सिंटैक्स को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आता है कीवर्ड दैट इज फॉर लूप, दैट इज फॉर, दैट इज फॉर ये वेरिएबल हर उसके बाद आता है एक वेरिएबल जिसे कहते हैं हम लूप वेरिएबल। ये वेरिएबल हर इटरेशन में एक नई वैल्यू होल्ड करेगा और उसके बाद आता है हमारे पास इन कीवर्ड और फिर आता है कलेक्शन। सो कलेक्शन मतलब any data type that have any elements inside it, that is it can be a string, list, tuple, set, डिक्शनरी या फ्यूचर में हम रेंज पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन वो भी हो सकता है। सो अभी हम स्ट्रिंग्स और लिस्ट से शुरू करेंगे। सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम एंड टेक अ एग्जांपल where we will loop through a string. सो सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ हम एक एग्जांपल देखेंगे। Let's say we have a variable with which holds a string named Python. Now we will loop through it by using for method field. So what's happening here? So simply ये एक loop variable है जो represent जो कि इस collection के हर एक element की value देगा in each iteration. So first iteration में letter will be equals to get p, and that p will get printed. Now the loop will repeat and then letter will get the value of y, and then letter y will get printed, then t, then x, then o, and then n. And at last, when there will be no element left in the string, the loop will terminate on its own. We don't require any continue or break statement or any condition. Just as soon as the elements of the collection are exhausted, the loop get exited on its own. So let's run it. Yeah. So this is what we got as I explained it. So string Python actually कैरेक्टर का कलेक्शन है। लूप की पहली इटरेशन में लेटर की वैल्यू बनी p, दूसरी इटरेशन में y, फिर t, और ऐसे ही हर कैरेक्टर एक एक करके प्रिंट होता गया। नोटिस करिए हमने मैनुअली इंडेक्स या काउंटर मेंटेन नहीं किया। फॉर लूप खुद से ये काम कर सकता है, हमें वाइल लूप की तरह कोई अब एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फॉर लूप में सब अपने आप मैनेज कर। So now I will move on to another example. So uh, here we will print the character of a word, say code, but with a message like. Now what will happen here? Character that was ch for short will take each value of CODE, and for each of it this statement get printed. So it will be like current character C, current character O, like this till E. Let's run it and see what we get here. This is the output. तो यहाँ हम सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर रहे, हम उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं। ये बताता है कि लूप के अंदर आप कोई भी वैल्यू पाइथन को लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सी एच को हटा दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The loop simply will run for times. We will see another example where we will now use a list instead of string. List just मैंने आपको बताया is simply a collection of elements that are comma separated. Let's take a list of strings which represent name of fruits. Now this is the list. So just like the string, a for loop
Now, for the loop variable, now we'll take the value of each element of this list instead of each character of the string. Means in the first loop, the loop variable become apple, in the second banana, and the third mango. Like this, the loop variable will take each of the value of the list that are present in the list. So now we will loop through it, loop variable, and collection which is fruits, and we will simply print the fruit name. Right. So, uh, by convention, we write a singular form of uh, the collection as loop variable to make sense out of it. As this is a collection of fruits, so we name it fruits, and as loop variable take one fruit at a time, so it's named fruit or fruit. It also make it more meaningful. Let's run it and we have the solution like this. So list की collection है हर iteration में proof वेरिएबल लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को होल्ड करता है पहले एप्पल फिर बनाना फिर मैंगो और लास्ट में ऑरेंज सो सिमिलरली हम एक और लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे इन केस वी विल वेलकम न्यू स्टूडेंट्स we will show a welcome message to the new student that have admitted in the school. So we have a list of new students and we will use for loop to welcome each of the new students using the for loop. So say we have a list of students and then we are this. Now we will simply loop through it using a for loop. Will welcome each of the students. We will run it. Again, loop variable will take the value of each of the elements in each iteration and will print it for each of the iteration. So ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत कॉमन है इमेजिन कीजिए स्कूल का सॉफ्टवेयर हर स्टूडेंट को वेलकम मैसेज भेज रहा हो so this way we can send it instead of print we can write a complex function that send a mail to student or anything like a similar example we will take where we will have a cart list which means cart and have products in it and we will print each of the item that are present in the cart to show to the user that what have they added to the cart. So say we have cart, it contains list of products that the user have added into the cart. Now, so now the user want to see all the items that are present in the cart. So for that we will simply do for item in cart print item. So what it will do, it will show the user each of the item that they have added into the right. So suppose किसी शॉपिंग वेबसाइट को ऑर्डर समरी दिखानी है कार्ट में आइटम दिखाना है तो उसी तरह कार्ट के हर आइटम पर लूप लगा सकता है now एक important example लेते हैं जो बहुत जगह आपको दिखेगा ये क्वेश्चन that is counting vowels means हमें वर्ड क्या होगा अब हमें उसमें काउंट करना है कि उसमें कितने लेटर्स हैं जो vowels हैं so if you want to try this question on your own first then you can pause the video and try this question on yourself so now I will do the question say I have a word let's say education we will use a count variable to count the number of vowels. Then we will loop to the word. Now loop variable letter will
have the value of each of the letter in the word. Now we will see if that letter is present in this text, which represent all the vowels, both capital and small. And if the letter is in this text, that means that letter is a vowel. And so simply we will increment the count to keep track of all the vowels. Now, once the loop is ended, we will have all the increments done in the count variable, which will represent the total number of vowels in this word, and then we will simply write it like this. So, how many vowels this letter have? So it is one, two, three, 4, and 5. So there are 5 vowels, and let's see what we get here. Yes, we get 5 vowels. We can even change it, say Python. Let's see how many vowel Python we have. Which I believe in latest. So यहाँ देखिए हमने कितनी चीजें कंबाइन हो रही हैं. For loop, if statement, membership operator, that is in here, और काउंटर वेरिएबल जो हमने while लूप से सीखा था. इसी तरह ग्रेजुअली प्रोग्रामिंग पावरफुल बनती जाती है. Now we will do another example. So suppose we have a list of students, uh, and we need to search in this list of students that if any uh, say we have a list of students and we need to search for a student if he or she is present in the list or not. So for that we can use for loop and mention if the student is found, we will say student is found. And if we don't get any response, that means student was not found. So you will pause the video and try it yourself. So hopefully आपने ये भी ट्राई किया होगा. हम आपको ये solution को फिल आता है. Let's say we have list of students. Such we have to search a name that if it's in the list or not. So let's say we are searching for Rahul here. Now we will get a loop variable that will get the value of each student, and then we will match the thing we need to search with each of the student name. And if it ever matches, we will simply print student. And if the student is not found, we will say nothing. So let's see if Rahul is in the list or not. Yeah, we can see here that the list is rich. Also, we can directly say, yes, Rahul is in the list. But say this list was thousands and thousands of elements. And in that case, this will be much more better to do instead of searching for it on our own. Let's see if Rahul is in the list or not. And yes, Rahul is in the list. Let's say if there was another name that is not in the list, then we will get nothing else. Response means Rohan is not in the list. So अभी हमने ब्रेक यूज नहीं किया. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्च मिलते ही लूप को कैसे स्टॉप करते हैं. बिकॉज अगर हम राहुल मिल गया तो लूप स्टॉप नहीं होगा. इट विल स्टिल keep searching for Rahul again in other student names also, which is not required here. Now, some common mistakes that people do are like hope.
and you will try to guess what's the mistake in the. So, what do you guys think is the problem here? So, we will run the code, and yeah, we thought of that is very good. So, it is, we don't have a, like, why would we need to print name here instead of letter? Yeah, we can do print the name out. So, but it will simply print the name in number of times the there are character that is six. So 6 times we get 5. Now we'll some practice challenge. So pause the video and you have to first type a name. So create a string that is country equals to India and print every character in the word using for loop. We have done it already, so I would like to you guys to do it on yourself. So take a variable, give it a name, give it a string called area, and then print each character of that string. So we have a variable which have string called area. We will print each letter of this string, string code, and here we want the answer. Hopefully, आपने खुद भी कर लिया होगा. Letter simply takes on each of the values, say I and the I k in each iteration, and in each iteration, each letter get printed, and new line is added automatically due to the print. Now, another practice challenge. So after putting it, that is create a list of five favorite movies, your five favorite movies, and then print each of the movie name um, separately. So pause the video and try this question on yourself. So hopefully आपने try कर लिया होगा. आपने ये try करता हूँ. So enter mm, mm, how this would be. Good thing it was a movie in with each of the movie. That's when we get each of the movie name here. Now, another question for you guys, and it's a bit different. So, you guys have to create a list of marks and print only the marks that are greater or equal to 80. So, यहाँ पे for loop के साथ if statement भी यूज होती है, मैं आपको वीडियो पॉज करेंगे ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. We'll do this question for you. So, say we have a list of marks 85, 92, and this is 65, 9. We will access each mark in marks using the loop variable and the for loop.
and then we will compare each mark if it's greater than equals to 80 or not. If it's, we will print that mark, and if it's not, it will not be printed on its own. So let's run it. And we got each mark that was greater than equals to 80. Now another question for you guys. So what you have to do in it? You have to take a variable, give it a string that represents a sentence, say Python programming. And what you have to do, you have to count the number of spaces in the string and count them and print them in the end. So pause the video and try this. So now I'll do it for you guys. Let's say we have a variable for sentence. So we can see we have two spaces here. Now we will access each letter in this sentence and we will compare this letter with space. Space in Python is a character on its own, so letter will get equals to this space here and will get compared to this space here, which is a character, which will increment the and that's it. After this one, we will just see the this is that's it. We will run it and the number of space is so now some question for guys. Which keyword? It's a quiz, so you will pause video, think about it, and answer the question in your head and see if you answer it right or not. So which keyword connects the loop variable with the collection? So the answer is in. So in keyword is here so that each the loop variable can get the value of each element of the collection. Now another question, can we use an if statement inside a for loop? So the answer is yes, as we have seen it already in our practice question. So today we learned the basics of the for loop. हमने देखा कि for loop collection के हर element पर automatically iterate करता है. हमने string और list के साथ examples देखे और हमने ये भी समझा कि for loop को if statement के साथ combine करके और भी useful program बनाए जा सकते हैं. So excellent. अब आप while loop और for loop दोनों loops यूज करने जानते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन आती है. अगर मुझे नंबर 1 से 100 तक प्रिंट करनी है, क्या मुझे 1 से 100 की लिस्ट मैन्युअली बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं. पाइथन हमें एक बहुत पावरफुल बिल्ट इन फंक्शन देता है दैट इज रेंज फंक्शन और ऑनेस्टली फॉर लूप की असली पावर रेंज के साथ ही आती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज को डिटेल में समझेंगे और उसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप सीखा. हमने देखा कि फॉर लूप स्ट्रिंग्स और लिस्ट के हर एलिमेंट पर ऑटोमेटिकली इटरेट करता है. लेकिन एक क्वेश्चन, सपोज मुझे सिर्फ 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं या 1 से 100 या सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, क्या मुझे इतनी बड़ी लिस्ट मैन्युअली बनानी पड़ेगी? जैसे सपोज सेव इट फर्स्ट. विल क्या मुझे बार बार एक ऐसी लिस्ट लिखनी पड़ेगी जिसमें I will have numbers this.
तो 10 नंबर के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर हमें 1000 नंबर्स या 1 लाख नंबर्स लिखने हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन दैट इज रेंज। अगर आप पाइथन में फॉर लूप लिखोगे तो रेंज आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन बन जाएगा। सो व्हाट इज रेंज? सो रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस जनरेट करता है। रेंज फंक्शन ऐसे दिखता है। तो एक ये रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस जनरेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये नंबर की एक सीरीज बनाता है और फॉर लूप उन नंबर्स पर एक एक करके इटरेट करता है। So let me show you one the syntax of this function. The most basic syntax of this function is where stop is a number. So where stop is a number. So सबसे सिंपल फॉर्म है ये, सिर्फ एक आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट होता है स्टॉप। ध्यान रखिए ये स्टॉप वैल्यू जो रेंज फंक्शन लिस्ट बनाता है उसमें इंक्लूड नहीं होती। ये बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक है। सो आई विल शो यू हाउ टू use this range function with for loop now. So the code looks like number in range 5. Then number. So यहाँ पे range function एक list बनाएगा on its own which will go from 0 to 4 because ये नंबर जो stop वाला है वो उस लिस्ट में by default include नहीं होता है। So it will make a list of 0, 1, 2, 3, 4 and this loop variable will take each of the value of this sequence and will iterate through it and will print it in each of the iteration. So let's see what we will get when we run the program. And we get 0, 1, 2, 3, 4. You can see 5 is not included in here. You can even see what this range function provides us by using the list type cast typecasting function to see what this range function returns. If we run it, we get this. So you can see this line here represents a list of numbers from 0, 1, 2, 3, 4, and this for loop is iterating through this list and hence printing 1, 2, 3, 4 like this. So एक शॉर्टकट याद रखिए, रेंज 5 मतलब स्टार्ट होगा 0 से एंड स्टॉप होगा 5 पे वेयर 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके ज़रूरी नहीं है कि हम uh, वो नंबर जो हम लूप वेरिएबल है उसे हम बार बार प्रिंट करें। हम इसी सेम कंसेप्ट को यूज करके say we need to print hello for 5 times, so we will simply write for loop like this and hello. So whatever number you write here, the loop will simply iterate that number of times. So if you have written 5, loop will iterate 5 times because it's a list of 5 numbers that is 0, 1, 2, 3, 4. Uh, as there are 5 numbers, so this loop will get iterated for 5 times and hello will get print 5 times. You can see there is hello 5 times. सो नोटिस करिए यहाँ आई का यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ लूप को 5 बार चलाना था इसलिए रेंज 5 यूज किया हमने। नाउ रेंज का हमने सिंपल सिंटैक्स देखा। नाउ रेंज का एक और सिंटैक्स है दैट इज रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप। So this is another syntax of range where
हाँ, ये जो स्टार्ट है ये नंबर डिसाइड करेगा कि जो लिस्ट है, जो रेंज और द सीक्वेंस है जो रेंज रिटर्न करेगा वो स्टार्ट किस नंबर से होगा, और स्टॉप डिटरमाइन करेगा कि वो स्टॉप किस नंबर पे होगा, where start number is included in the sequence but stop is not included in the sequence. So let's again see what this look like in the form of a list. Say we want a list of number from 10 to 20. As 20 we want in the list, we will write 21. So uh, we get number till 20 and 21 is will not get included. So when we run it, we get a list of number that is 10 to 20. It starts from 10 and it's included, and it's end at 21 and it's 21 is not included, so we get it till 20. So अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें, is if we have, want to use it with for loop, we will write for I in range 10 to 21, and in each I we get this. So ऑब्जर्व करिए, अब लोग 10 से स्टार्ट हुआ और 21 से पहले स्टॉप। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे, से वी नीड टू प्रिंट row numbers where row numbers in a class starts from 101 and goes till 106, where 106 is not included. So pause the video and try to write this program yourself. Now I will write it. So let's say we have got rows in range 101. This is our first row number and our last row number is 105. And to include it in here, we will end it at 106. And now we will simply print the row. Just to print the row number from 101 to 105. That we got. So स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में इसी तरह रोल नंबर प्रोसेस किए जा सकते हैं if they are in a direct sequence. So now I will introduce you to the third type of syntax of the range function, that is range start. You know already what it do. Stop. You also know it, and then there is step value. So now what step is? So step here is simply a number that tells कि हम जब start से stop में जाएंगे तो what how much we jump when we are going to from start to stop. So by default, step value is equals to 1. So in each iteration, the number starts from start and then it jump by 1 to go to the second, let us say start as 1. Then it will jump by 1 to go to 2, and it will jump by 1 to go to 3. And similarly, it will go keep jumping by one number until we get at stop minus 1. So if we change it to say from 1 to 2, then if we start from 1, it will go from 1, jump by two numbers, that means it will print 3, jump by two numbers again, it will print 5, then 7 until we reach the stop minus 1 number. So simply step value decide करता है कि वो नंबर कितना जंप ले रहा है, इससे हम इन द लिस्ट के फॉर्म में फिर से देखेंगे. For example, we start from 1, we go till 21, and we are jumping by two numbers instead of 1. And we print it, so you can see we start from 1, we jump by two numbers, that is 1, 2. 1 से हम 2, 3, that is 3.
473,745, that is 5. So we are jumping by two numbers. By default, step value is 1, so we get just like this. We can do it in anyways, say 5, and it will jump by 5 numbers each time. And we get a smaller estimate. Again, we will now use it with for loop, like something open, cycle is 2, open, we run it, we get uh, the sequence where jump the step value is 2. So इसी कंसेप्ट का यूज करके आप एक प्रोग्राम बनाओ कि जिसमें आप 1 to 10 नंबर प्रिंट करोगे, 10 इंक्लूडेड, और उसमें आप सिर्फ और नंबर प्रिंट करोगे, इवन नंबर नहीं। एंड ये प्रोग्राम आपको विदाउट यूजिंग रिमाइंडर ऑपरेटर इफ एल्स बना, and using for loop and range. So pause the video and try it yourself. So अभी मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ। So it's simple for number and number 11. So 10 is included, 7 will be 2, will print. So what's happening here? We get all our numbers between 1 to 10 here. So here the sequence start from 1, then it jump by 2, that is to 3. So the even number that is 2 gets skipped, and this way all the even numbers get skipped, and we get a sequence of polynomials. Now we will give you a description and pause the video and try to make this again. Program where there is a countdown going, where the program goes from 10 to 0. Means it's not increasing, it's decreasing from 10 to 0. And once the countdown is up, we will print times up. So pause the video and try it yourself. Now I will write the program. So I'm making a from um, for number in range. So we need to count down, not count up. So we will start from a bigger number, and as we need to go from 10 to 1, we will write 10, and we will write 0. 0 will not be included, it will be the countdown will go from 10 to 1, and then the step value will be -1. That is, instead of uh, jumping in forward by 1, we will jump backward by 1, like this one: 10, 9, 8 till 1. And then we will print that number, and, and the countdown is up, every time up. I will run it, and you can see it goes 10 to 1, and then times up. You can even see how the list version of the strings function looks like. So this is the sequence we had in the loop variable. Take value of each of this till 1, and then the loop ends. Now let's say a similar question करेंगे जो हमने while loop के संग किया था, that was writing multiplication table of any number but using for loop instead of using while loop. So pause the video and try it yourself. So now I will write multiplication table of any number. So we take table if integer, when bring a user say
फिर हमें जो नंबर यूज होना किया है उसकी हम टेबल लिखेंगे। हमें आई चाहिए 1 से 10 तक, तो हम लेंगे 1 से 11 तक। सो 10 is included, and now we will print table into I is equals to table. So this is the simple program that will print the table of um, any number. Let's run it. Print the number. Let's say 25, and we get the 25 the table just like that in a single enter. So आप देख सकते हैं कोड कितना क्लीन हो गया है। इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन टेबल पे ऑलमोस्ट हमेशा फॉर लूप और रेंज यूज किया जाता है। व्हाइल लूप भी हम यूज कर सकते हैं, पर you can see how little code we need to write for loop and loop. So now another example we will do. We will pause the video and try to ourselves here. We will find the sum of first 100 numbers, that is sum of 1, 2, 3 till 100, and then when the sum is calculated, we will print it at the end of the loop. So try this program on your own by pausing the video. Okay, I hope you would have tried this program. Now I will go for it. I will go for it. So let's make a variable that is total, which will have all the sum of the numbers, and we will iterate through range function, which will go from 1 to 101. So 100 is included in the sequence that will be generated by the range function, and then simply we will add each of the loop variables value in total. And once it's added, we will simply print it like this. So it's for the simple program. We just need to use the assignment operator with plus equals to, and each number that the number loop variable take, uh, it will simply get added into this variable, and at the end of the loop, we will have some of number from 1 to 100 that will get printed at last when the loops end. The denominator in the total is 550, which is the sum of numbers from 1 to 100. सो ये रनिंग टोटल वाला कंसेप्ट है जो हम while लूप में भी देख चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ काउंटर मैनुअली अपडेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे काउंटर की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली फॉर लूप खुद ही रेंज फंक्शन के थ्रू उससे अपने आप हैंडल कर लेगा। नाउ वी विल मेक अनदर प्रोग्राम. So in this program, what we need to do is we need to print the square of numbers from 1 to 10. Means we need to print square of each of the numbers between 1 to 10. So pause the video and try it. It's a simple question. It's just like the multiplication one. We just need to square the number instead of multiplying it with I. So now I will do program for glass. So I hope you will have tried it, and then if you got anything wrong, you can check the code. My code, let's see what's on the input. So we need 1 to 10, so we will write 11. Then we will print the number of where is number multiplied by 100. This is square basically. So this program simply prints the square of 1, then 2, then 3, then 4, and until 100. So if we run it, we should get it, and we got the square of all the numbers from 1 to 10.
सो इस तरह के लूप्स मैथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस में काफ़ी कॉमन होते हैं. सो नाउ मैं आपको एक कुछ होमवर्क देना चाहूँगा जो प्रैक्टिस चैलेंजेस है आप उन्हें खुद ट्राई करेंगे. The first question is that you have to print number from 50 to 100, 100 included and 50 included. Then the second question that I would want you all to try is to print all the multiples of 7 from 7 to 70 without using this method. Means you don't have to use any of the operation by just using this range function. You have to print multiplication of 7 from 7 to 70. Okay, I think I will just do it for you guys. Pause the video and try to observe once. So now I will do it. So to write the multiplication table of 7 without using any mathematical operator, arithmetic operator is by using range function methods. We will start from 7, we will end at 71 because we need 70 in our table, and we will add write the step value by 7. So what it do? It will start from 7, it will make a jump of 7 numbers that will get us to 14, and then it will again do jump of 7, it will give us 21. So this is the table of 7, and it will go on till we reach 70. So simply now we will link the table next. Now this way we will get a table of 7 without using any alternative operators. So you can see it's the correct table of 7. Another practice question I would like to give you is write a program where uh, the program prints number from 100 to 0 in reverse order, where 0 is included in the printing sequence. So pause the video and try it. I will also do it for you guys. We will show you the solution. This is now the program. So we will log in for number in range. We have to start from 100. We need to go to 0, right? 0 is included. So we will write the number after 0, that is -1, as we are going in reverse order. So we will add -1 instead of 1. And then as we need to print the number in decreasing order, step value will be -1. So the jump is backwards, not forward. And simply then we will print it. That is normal. So this should print the number from 100 to 0 in reverse order. And you see we got it. It started from 100 and it goes to 0 with 0 inequality. ना हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देना चाहूँगा जो सिमिलर है जो हमने किया था अभी. ये मैं नहीं करूँगा, बस आपको बताया है that you guys need to write a program where the program prints the cube of number from 1 to 10. हमने already कर दिया है. uh, with square you just need to do this question for cube. Another question that I would like to do is uh, leave it. We have done it already. So now it's quiz time and I will ask you some basic question. Pause the video, try to think about it, what will be the solution, and then match it with my answers. So does range include the stop value? So it's the easy question. No, range does not include the stop value. Uh, means it's get excluded in the sequence generated by the range. Now, can the step value be negative in range function? So the answer is yes, as we have seen it already. To print the numbers from in reverse order, we need to
have the step value नहीं। So आज हमने पाइथन के सबसे यूजफुल फंक्शन में से एक रेंज फंक्शन को डिटेल में समझा। हमने उसके तीन फॉर्म्स देखे दैट इज रेंज विद only a single argument that is stop, range with two arguments that is start and stop, and range with three arguments that is start, stop and step. और हमने ये भी समझा कि स्टॉप वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती, वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। अब हम ऑलमोस्ट हर काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम को फॉर लूप और रेंज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्सीलेंट। अब आप फॉर लूप और रेंज दोनों को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने पाइथन में वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के बारे में सीखा। अब एक क्वेश्चन। सपोज मुझे किसी प्रोग्राम में 20 अलग अलग जगह पर वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, मैं क्या करूँ? शायद कुछ ऐसा लाइक प्रिंट welcome to our Python course. I can write it here, then I can say to and then below it again print welcome to. So अगर ये मैसेज हमें 100 जगह इसी तरह लिखा हो, कि हमने ये मैसेज यहाँ लिखा, फिर हमने सेम मैसेज यहाँ लिखा, तो या कल मुझे मैसेज चेंज करना पड़े, से वी नीड टू चेंज ऑल दी 100 मैसेज, तो मुझे 100 जगह चेंज करना पड़ेगा। ये अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रोग्रामिंग में हम हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं दैट इज डोंट रिपीट योरसेल्फ, या ड्राइव प्रिंसिपल। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फंक्शंस। सो फंक्शन प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। और अगर आप फंक्शंस अच्छे से समझ गए, तो आप बड़े और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ फंक्शन? तो सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी एक ऐसा कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है, और जब भी हमें उस टास्क की ज़रूरत हो, हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। एक बार लिखो और जितनी बार चाहो उसे यूज करो। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन इमेजिन करिए। अगर आप हर बार मशीन खोलकर मोटर, ड्रम और वायरिंग मैन्युअली ऑपरेट नहीं करती, आप बस स्टार्ट बटन दबाते हो वॉशिंग मशीन में, सो मशीन अपना काम खुद करती है। फंक्शन भी बिल्कुल भी वैसे ही होता है। हम फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन अपने टास्क परफॉर्म करता है। हम हर बार उसकी वर्किंग हमें रीराइट नहीं करनी पड़ती, हम उसमें बार बार लॉजिक नहीं लिखते। हम सिर्फ एक बार लॉजिक लिखते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, जिधर भी हमें चाहिए, जहाँ भी चाहिए और जितने बार भी चाहिए। और वो लॉजिक अपने आप रन होता है विदाउट वी हैविंग टू राइट इट अगेन। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ऑलरेडी फंक्शन यूज कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेल्प। सो प्रिंट is this is itself a function. So इसी तरह हमने और भी फंक्शन इस कोर्स के दौरान देखे हैं, जैसे we have discussed input function, then we have len function. It tells us the length of a string or list that we can put inside it. Then हमने range function भी देखा है। ऐसे ही हमने बहुत फंक्शन देखे हैं, हम देखना चाहेंगे बहुत सारे हमने फंक्शन ऑलरेडी।
कवर कर देते हैं। यानी पाइथन हमें पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस देता है जो हमें हमारे लिए काम इजी कर देते हैं बहुत सारा, बिकॉज हमें प्रिंट से द फंक्शन हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि प्रिंट के अंदर क्या लॉजिक जा रहा है, कि वो ये टेक्स्ट ले रहा है फिर उसे हमें हमारे मॉनिटर पे प्रिंट कर दे रहा है, विदाउट we have without us having to worry that how it's working. It simply works by calling it. So that's what function are for. They may work so much easier and efficient and simpler. So अब हम देखते हैं फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स। सो पाइथन में बहुत से फंक्शन के पाइथन में फंक्शंस के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो पाइथन में फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और इसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊं तो वो दिखता है ऐसे। That is that function name, the brackets, colon, and the content of the matrix. Again, one step next. तो ध्यान से देखिए, फंक्शन बनाने के लिए हमने यूज किया है डेफ कीवर्ड। फिर उसके बाद हमने इस फंक्शन को एक नाम दिया है। फंक्शन का नाम हम जब देते हैं तो ये वो सेम रूल फॉलो करता है जो वेरिएबल के नाम को देने के टाइम हम फॉलो करते हैं। दैट इज देन फंक्शन नेम कैन हैव लेटर्स, numbers, and this underscore symbol. Um, the function name should not start with a number. It can start with a letter or underscore, and it cannot have any spaces or any other symbol or character other than letter, number, and what underscore. And we also follow the same conventions, that is to use underscore letters or simply use a capital letter to differentiate between the different words in the function name. So function name लिखने के बाद हम मैंडेटरी पैरेंथेसिस ऐड करते हैं और फिर कोलन, और फिर इंडेंटेशन के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो फंक्शन की बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। So let's write a your first function and see how it will look, and what's the difference between defining a function and calling it. So let us define a function. So it is defined, the keyword which means defining a function. Let's give it a name that's p, then parenthesis and then colon. The body of the function is determined by keyword or indentation. The body is simply welcoming us to। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ देखते हैं अगर हमें क्या मिलेगा अगर हम इस कोड का रन करें। हम इसे रन करेंगे एंड वी गॉट नथिंग। सो कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ? अगर हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, हमने फंक्शन को सिर्फ बनाया है। अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मतलब हमने पाइथन को ये ऑर्डर नहीं दिया है कि फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करे और रन करे। हमने सिर्फ डिफाइन किया है और पाइथन को बताया है कि what does greet function is and what it need to do when it's get called. So how do we call a function? So we call a function in the same way we do for the other functions. So example here, the print is a function call where we are providing the function print a value. So simply, we will also call the function greet in the same way we call the print function, that is by writing the name of the function with parenthesis at the end. So now when we run it, we get the output that we wanted. So what happened here?
So simply this line define the function B, and when we call the function by writing the name with the parenthesis, Python execute the code inside the function, and hence we got welcome to Python. Now, जैसे कि हमने function का नाम parenthesis के साथ लिखा, function executed. Now, the most powerful thing about function that this function now can be called anywhere and any number of times without us having to write the statement again and again. So a मैं greet function कितने बार भी और कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ और and it will work like I have written this greet statement here, 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 and here. So now I run it. You can see the same statement got executed 4 times because I have called the function 4 times. So और ऑब्जर्व करिए कि हमने कोड सिर्फ एक बार लिखा लेकिन उससे 4 बार हमने कॉल किया। यही फंक्शन की सबसे बड़ी पावर है। अभी हमने बहुत सिंपल से स्टेटमेंट लिखा है तो आपको इसकी पावर पर ज़्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि ये फंक्शन हम यहाँ पे भी लिख सकते थे स्टेटमेंट। बट अगर यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखें जो हमने बहुत अपना दिमाग लगा के बहुत सोच समझ के लिखा है, हम उसे चाहेंगे कि हम उसे एक ही बार लिखें और उसे फिर बार बार कॉल करते रहें इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट फंक्शन और या फिर कॉपी पेस्टिंग दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन लाइक 4 times. So we will see the more complex function as we go. So अब हम अपना second example लेते हैं to see some more power that function provides us in our Python programs. So the program we are going to make will have a function which will be which will do the work of line separator. That is, whenever we call that function, it will simply add a line separator uh, wherever the function is called. So line separator basically are these. So it means very prettier or cleaner to write text like person and another line. Sorry, line separator function. So for if we want to make like these kind of separations or blocks in our like output, then we can use the line separator function. So first we will define the function and then we will call that function again and again wherever we want the line. So we will write the function now, we write that line. So it will define a function that will print a line like this. How many lines? You can add any number of lines. And once we're done, we can use this function by calling it again and again. So what's happening here? We instead of having to write the statement again, again here and here and here and trying to match the number of dashes, we can simply define it and then call it again and again and again to get the same effect without having to redo this multiple times. So now we'll execute it and B got let's see how easy and convenient it was. So अगर मुझे सेपरेटर चेंज करना हो मैं सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज करूंगा और बाकी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा फॉर एग्जांपल if I change it say now I want a separator made up of equals to not dashes simply I change it here and it got changed everywhere so I didn't have to means think about
having to redo this line again at each of these places. So now we will take another example where we will write a greeting function. So what is a greeting function? So we will define a function welcome, which will greet the user good morning. It will welcome the user to the Python course, and it will tell the user to let's start learning, and then we will call that function. It's an easy one, and I would like you guys to pause the video and write the function yourself first. So I will do the question now. Okay, so अब हम बनाएंगे एक फंक्शन जो क्रिएट करेगा टू द यूजर सो एज वी डिस्कस्ड इट ऑलरेडी अब हम इसमें लिखेंगे एक greeting message for the good morning, then we will write our greetings say welcome to the site, and then we will write print let's uh, and then to execute all these statements we will simply write welcome. That is, we will call the function, we forward the coding, so now we will run it, and we get the ratings. Now we can get any number of rating we want. Let's see, second rating, and after it we can call the function, that's welcome, it will bring the same three lines again. This and this. So notice करिए फंक्शन के अंदर एक लाइन नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखी तीन स्टेटमेंट्स हमने लिखी जो हर बार एग्जीक्यूट होंगे जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन नेमिंग रूल जैसे मैंने आपके साथ पहले से डिस्कस कर रखा है, वो वेरिएबल के जो नेमिंग रूल होता है वही फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि व्हाट आर सम गुड फंक्शन नेम। सो फंक्शन का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, सो इट शुड बी लाइक कैलकुलेट टोटल and say display menu, say print table. The function name should be like this. They should be meaningful and should tell the programmer what they do. So the programmer don't get confused by seeing the function name like say ABC X1, say test 1, 2, 3. These are meaningless and will are not helpful when we are coding large projects, as when you see this you don't get what the function do, but when you read this you know that the function is displaying a menu. So code जितना readable होगा उतना maintain करना easy होगा, so use this type of functioning instead of these. Yeah, these are easy to write and faster to write, but still these are much better. So now we will discuss some common mistakes that happen while using functions. So some mistakes are like, so say we have a function called greet, which greet hello to the user, and some people like this and hope that their function will call. So pause the video and think, what is the problem here? So the problem here is that we forgot to use parenthesis in the function call. Parenthesis in function call and in definition of the function is very mandatory. If they will be not there,
and simply the function will not get called and it will give us an error. For example, let's run it and the function just didn't run because it's not a valid function for it. No, it will run fine. So a function for name parenthesis missing here is here. So now the second mistake we many people do is like they write their function like that is the format for indentation. So indentation again is very important in statement like function definition, if else loops, and we have covered them a lot of time here. Now the third type of mistake people usually do is they define the function like this and then they call the function. So is this correct? Pause the video and try to guess what's the issue here. If it's correct, we will run it and see we get error that heap is not defined. So what this program tells us is that we can only call those functions that are defined already. So if we call this function, it is not defined here anywhere above. It should be defined, uh, the function name should be defined before it being called. So the definition is below the function call. So for Python, there is no greet function definition in this program. So we fix it by calling the program after defining the function. And we defined it, and then we call it and we get our execution error. So um, I will give you guys a practice challenge where you will write a function that will be named about codes, which will print 3 lines, it will it will like say 3 lines, which can be Python is beginner friendly, practice every day, and programming is fun. These 3 lines it the function will print. So first define this function and then call the function to print this lines. So pause the video and try this. तो hopefully आपसे ये ट्राई कर लिया और मैं ये कोड आपको लिख के दिखाता हूँ पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें तीन स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे पैटर्न फिर स्टेटमेंट assembly Python sorry practice and a the third is programming and then we will call the function to print this line. Writing the name of the function and using the mandatory parentheses. Now we will run it. And so we got the solution here. So now it's quiz time. I will ask you some question and you will try to answer those questions. So first question is, which keyword is used to create a function? So I will tell you guys the answer. The answer is def keyword, and you will have already seen it on the screen. Def keyword is used to define a function. Now, does defining a function automatically execute it? So we have already covered this, and the answer is no. Defining a function doesn't execute it. We need to call it to execute it. So how do we execute a function? This is the question number 3.
So we execute a function by calling it using its name followed by parentheses. That is, if we have a function name greet, we call it by writing its name and followed by parentheses. Now the question number 4. Can a function contain multiple statements? So answer is yes. A function can have any number of statements inside it. We can even write whole programs inside a function. So that's not an issue. Just we need to take care of indentation. सो एक्सीलेंट आज हमने फंक्शन का फाउंडेशन सीखा हमने देखा कि फंक्शन कोड को रियूजेबल और ऑर्गेनाइज बनाता है लेकिन अभी हमारा फंक्शन सिर्फ फिक्स काम कर रहा है अगर हमें फंक्शन को डिफरेंट नेम्स के साथ रेटिंग देनी है वो अ, किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो हर बार अलग फंक्शन हम नहीं बनाएंगे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंक्शन के अंदर डेटा कैसे भेजते हैं और उसके साथ हम कैसे काम करते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सीखा था कि फंक्शन क्या होते हैं और हमने अपने खुद के फंक्शन कैसे बना सकते हैं ये भी सीखा लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया step to understand properly सो हम इसे रन करते हैं तो हमें मिला क्या है हेलो राहुल सो ये फंक्शन सिर्फ राहुल को ही ग्रीट कर सकते हैं अगर मुझे अमन को ग्रीट करना हो या प्रिया को या किसी भी यूजर को क्या मैं हर पर्सन के लिए अलग अलग फंक्शन बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल ग्रीट राहुल then we will have to now make another function to greet any other person say Aman and inside it we will have to write hello Aman तो बिल्कुल नहीं ये बहुत रिपीटेटिव होगा और ये बहुत पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होगी सो प्रोग्रामिंग का गोल होता है रीयूजेबल कोड लिखना और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स सो आज के लेक्चर के बाद आपके फंक्शन स्मार्ट हो जाएंगे और एक ही फंक्शन डिफरेंट डेटा के साथ अलग अलग काम कर पाएगा सो लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल सो एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट इमेजिन करिए रेस्टोरेंट का प्रोसेस सेम होता है पिज्ज़ा बनाना लेकिन कस्टमर हर बार अलग ऑर्डर देता है सो कभी फार्म हाउस कभी पनीर किचन अलग मशीन नहीं बनाती बस कस्टमर को ऑर्डर रिसीव करता है और उसका अकॉर्डिंग पिज्ज़ा बना देता है फंक्शन भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है फंक्शन सेम रहता है उसके अंदर का बस डेटा चेंज होता रहता है सो व्हाट आर पैरामीटर्स सो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हम क्लियर करते हैं ये बिगनर्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं दैट इज फंक्शन हम जब बनाते हैं तो फंक्शन बनाते वक्त जो वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाता है उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स और फंक्शन को कॉल करते वक्त जो एक्चुअल वैल्यू हम फंक्शन को देते हैं उन्हें कहते हैं आर्गुमेंट्स सो सिंपल ट्रिक याद रखिए पैरामीटर्स रिसीव करते हैं एंड आर्ग्यूमेंट data sent करते हैं so I will show you an example of a simple function which uses parameters and arguments to receive data from the user and then use that data to provide custom output. So let's say we have a function 3. Now it receives a data that is name and then whatever data it receives, it says hello to that
data, and we provide this data to the function while calling the function. So let's say, so when we run it, we get hello world. So यहाँ नाम एक पैरामीटर है, that is name is a parameter और राहुल एक argument, that is this is an argument. So जब function कॉल हुआ, Python ने automatically राहुल को नाम वेरिएबल नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, फिर print statement execute हुई. So what's happening here? I will explain it again. So when we write anything here, it become a parameter, and that parameter can be used inside the function like we have used here. And this variable, which are parameter, can be provided value while calling the function. So when we call the function, we provide the value for these variables. So we provided the value for the name variable by calling the function, while calling the function. So this data will become name. So name is equals to Rahul, and wherever name variable will be used inside the function, it will get replaced by Rahul, and it will get hello Rahul. So if we provide any other data while calling the function, say Aman, then we will get hello Rahul and hello Aman. Means हमारा function अपनी बात डिफरेंट एक ही कोड हमारा हम फंक्शन में हमने एक ही कोड लिखा है और वो एक ही कोड डिफरेंट डेटा को ले लेके अलग अलग हमें आउटपुट दे रहा है. मीन्स हमारी सेम मशीन डिफरेंट इनपुट के लिए हमें डिफरेंट आउटपुट दे रही है. सो नाउ हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें जो नाम होगा फेवरेट गेम, जिसमें हम अपनी फेवरेट गेम प्रिंट करेंगे. अ, और हम इसे एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक वेरिएबल एक आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू लें और उसे प्रिंट करेंगे while calling the function. So let's say we have function that will receive a will receive a name from the user of their favorite game, and then we will print my favorite. And we will simply receive this name from the user while calling the we go. Now we will run it. So notice करिए फंक्शन सेम है, सिर्फ आर्गुमेंट चेंज हुआ और आउटपुट भी automatically change हुआ. And one important thing that if we are writing a parameter here, then we will need to provide it a value. If we will not provide it a value, say we don't provide name to the function while calling a function, this is what happened. We will get the error that we are missing one argument when we are calling this function. So it's very important to provide a argument when we have a parameter. So अब हम लेते हैं थर्ड एग्जांपल जहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे दैट इज स्क्वायर, जो हमें स्क्वायर प्रिंट करके देगा. हम जो भी नंबर उस फंक्शन पे हमें डालेंगे उसका हमें स्क्वायर वो प्रिंट करके देगा. तो write a function, pause the video and try to write this function yourself. बस आपको एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है स्क्वायर, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट देंगे नंबर और हम वो फंक्शन उस नंबर का हमें स्क्वायर प्रिंट करके देगा. So now I will write the function and the program for you guys. Let's write square
And what we have to do, we have to print the square of the number. So we will square, and square is simply number multiplied by number, or we can say, now this is a machine that can take any input, and it always will provide a square. And we now don't have to uh, think about that how the internal code of the function is running. We just know that the name of the function is square, and whatever number we provide inside it, we simply get it square as an output. So that's the strength of functions. Let's get some square of these three numbers and get these directly. So simply for us, this code is hidden, and we just need to call the function and just provide it the input, and we get the square of this number by itself. So हमारा function सिर्फ मैसेज प्रिंट नहीं कर रहा, अब ये कैलकुलेशन भी कर रहा है. Now you guys will pause the video and write a program for me, where this program will have a function that will be named area. It will ask the user for uh, it will ask the it will have two parameters, that is length and width, and it will print the area of rectangle using these two parameters. So as we are having two parameters in a function, so we will need to provide two arguments also while calling the function. So pause the video and try to. Okay, so now I hope you would have tried it. Now I will do it. So we have a function whose name is area, and it has two parameters, that is length and width. Now the these value will be provided to us when the function is called. So we will find the area with the formula for it is simply left and right. So to use, we just need to provide length and width in argument while calling the function, and we will get the area of the rectangle directly. So let's say we have 5, 8, so we have 7, 15. So we provided two arguments for two parameters, and these will be used to find the area of rectangle. Now we will run it, and we got the area of rectangle. So अब देखिए फंक्शन एक में ही दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और लेंथ और विड्थ, और फंक्शन के अंदर हम दोनों वैल्यूज का यूज करके एरिया कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर मैटर करता है. सो फॉर एग्जांपल let me make a function for you that info with so this function take name of the person and city, maybe let's see, and prints in lives lives in city. So now we while calling this function we will need to provide two arguments. One will be name of the person and one will be the name of the city. So let's do it. We if there is an email, make a limit, and Aman lives in Mumbai. But as I said, there's an important rule that we need to consider, that is the order in which we provide the argument. So if we change the order here, say
if we write Mumbai, and if we run it, so we get Mumbai less. So it's nice. So it became wrong because कोड में कोई यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे एरर है हमारे कोड के आउटपुट के मीनिंग में। बिकॉज ये प्रॉब्लम हमारे पास इसलिए आई क्योंकि पाइथन मीन्स इसे ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि पाइथन प्लेस बाय प्लेस आर्गुमेंट और पैरामीटर को कंपेयर करता है। सो इट इज कंपेयरिंग द फर्स्ट आर्गुमेंट विद फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड आर्गुमेंट विद सेकंड पैरामीटर. So now name is equals to Mumbai here and city is equals to Ahmed, which is true. So it's very important to enter the argument in the same order as the parameter, as Python will be comparing it by place. So now हम करते हैं प्रेडिक्शन एक्सरसाइज जहाँ पे मैं आपको एक कोड लिखूंगा और आपको प्रेडिक्ट करना है कि उस कोड का आउटपुट क्या है. Let's write the code which will multiply two numbers, that is A and B, and will print the result. So first we will say what will be the output of this code. We run it and the output will be 28. And thus this the power you can say of function is that if you didn't have this part here visible in the screen, let's say, even if I have written this here, just I would have called the function, you would have simply understood that the output most probably would have been the multiplication of 7 and 4. So that's the benefit of using meaningful function names. It make it easier for programmers to understand that what a function call do without having to know that what's written inside the function. Because when function become big, it it will take a lot of time to understand what a function do by reading each function. If the function name don't specifically specify what function do. So it's a good practice to write meaningful name of the function. So now हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक रिपोर्ट प्रिंट करेंगे ऑफ स्टूडेंट बाय आस्किंग द नेम एंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. If you want to try this program yourself, you can do it. What you have to do is to write a program function that will be named report. It will take two arguments, name and marks, and it will print them in a beautiful manner. And we will call this function for two or three students to print their report out individual. So now I will do this program. It will take name and marks as input. It will print the student name as first. And I will also print the marks of student. We will print the report of two students. So let's empty print statement to add a new line between the two reports. We get two report. We get a report card of two students just by providing the name and marks to the function call.
So ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। नाउ हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत रिपीट होता है, बहुत जगह पूछा भी जा सकता है। दैट इज अ फंक्शन दैट टेक Celsius as input and provide us an output that is temperature in Fahrenheit. Means एक फंक्शन लिखेंगे हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर रिसीव करेगा इन फॉर्म ऑफ सेल्सियस and will give us the output uh, that will be temperature in Fahrenheit. So pause the video and try to make this project yourself, and then I will do it. Now I will do the project now. So we need a function that is Celsius. So it's this to Fahrenheit. So it will take in temperature in the form of Celsius. We know we will now calculate the Fahrenheit from the temperature given in Celsius. The formula for it is Cel into 9 divided by 5 plus 30. So this is the formula for converting Celsius to Fahrenheit, and then we will print temperature in and rain. Yes. Now this function is ready, and we can provide any input to it in Celsius, and we will get the temperature in Fahrenheit. Let's write out say 0, 25. These are temperature in Celsius, and we will get the Fahrenheit equivalent in just a click. These are the Fahrenheit equivalent of this temperature. So यहाँ पे हमने देखा कि हम फंक्शन का इस्तेमाल करके फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला परफॉर्म कर सकते हैं by just providing a simple number input to the function and without having to worry what the function internally is doing by after just writing it once. So now एक हम रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे दैट इज ऑफ एटीएम रिसीट जहाँ पे हम यूजर से उनका नाम और अमाउंट रिसीव करेंगे और फिर हम उनकी एक रिसीप्ट बना के स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे. Receipt will look like ATM receipt will be the heading, and below it we will have account holder and the name of the user, then amount withdrawn, and we will have a beautiful line separator into it. So pause the video and try it yourself. Yeah. I will make an example, guys. We will receive the name and amount of one user, and then you will find the and having in the name of the account holder, in the amount with and after it we will print a simple line separator making it look good. And once we're done it, we can receive any number of name of the user and the amount returned to print the ATM receipt. So let's say receipt, I will say receipt, and
Just by providing name and the along with them, you can print the receipt of the users like this. And it looks good. So real banking software में भी similar idea use होता है. Data अलग होता है, logic same होता है. Means they just receive the data from the user and they print them in this manner. तो चलिए अब हम सब some common beginner mistakes को discuss करेंगे. So say we have a program like this. CDP. And inside it we have print name and then simply we call the function that is print. So pause the video and see if you can find what's the issue here. तो अब मैं इसे रन करूँगा एंड हम देखते हैं हमें मिला एक एरर एंड उसका रीज़न क्या है. रीज़न ये है कि हमने फंक्शन को एक आर्गुमेंट देना चाहिए था लेकिन हमने वो आर्गुमेंट नहीं दिया बिकॉज हमने एक पैरामीटर यहाँ पे लिखा है मीन्स वी हैव डिफाइंड अ requirement for the function and it need a argument while calling it. So if we are defining a parameter here, we need an argument that supplies the value to that parameter. Uh, correct correction here will be to provide an input argument to the function call. That fixes the. Now another common mistake people do is, let's say we have a function like this and we print the sum of a number and then we call function. So pause the video and see if you can find the error here. So I will run it and we again get error. Why? Because here we are asking for two parameters. That is, two values are required at the time of calling of the function, but we provided only a single value once we got the error. So to correct it, we will provide it another argument, and that is this the. Now let's see what's the problem here. Pause the video and see if you can tell what's the error and why it's happening in the first place. So now I will run the code and you see the error is that the function require only one parameter that we provided two arguments there. So इस बार हमने opposite mistake की है. एक parameter था और हमने उसे दो argument provide कर दिए, which is wrong. So simply we need to provide only one argument to one parameter to fetch the function. And this is fixed. So now हम करेंगे some practice challenge और मैं आपको एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दूंगा और आप वीडियो पॉज करके उसे खुद कर देंगे फिर मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा. So you guys need to write a function which is named as cube, which will take a number as a parameter and will print the cube of that number. And then we will call that function with different values of argument. So pause the video and try to do this yourself. So now I will do the question for you guys. Let's say we have a function named cube which has a parameter number. Let's simply print the cube of the number. So simply number raised to 3 is the exponent operator we will forward. And then we will call this function
For different arguments. Now let's see what will we get as solution. Yes, we get cube of all these numbers that we provided. So अब हम क्या करें? सो एक यूनिक फैक्टर क्वेश्चन रखते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया है. सो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है नेम डिस्काउंट जो दो पैरामीटर लेगा, दैट इज प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज. सो इसमें हमें क्या करना है, हमें दो पैरामीटर लेने हैं, दैट इज प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट. एंड इन दो पैरामीटर को यूज करके हमें फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, which is the actual price minus price into percentage. So whatever will be the value, calculation will give us, we will print it simply. So this function will allow us to provide the function, the current price and current discount percentage on that product, and which will give us the final price that we can print on the product. So it's a real life based program that can be used in real life situations. So pause the video and I hope you understood the question what you have to do and try to do it yourself. So now I will do the question. So we have a function in discount which takes two parameters, that is the original price and the percentage of discount. And it calculates the final price. So the final price will be the original price minus the original price into percentage divided by 100. So what it will do? It will simply subtract that percentage of amount from the price, and we will get a final price which we simply will print. Final price after this point is final price. Now they will call this function with different original price and the discount rate on it. So say if we have a product whose original price is 1,000 rupees and it has 10% discount on it. So how much will be the final price after discount? We can calculate using this function. And for another product has price of 2,500 and discount on it is of 20%. So we will see what the final discount we get on each. So these are the final um, price after discount for each of the product. So simply we found these final price without needing any extra, like I need to write any other extra code. We just wrote a single general uh, function and then provided it simple value and we get it calculated here so easily. We just now need to provide these two values for any product and we will get the final discounted price. So हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट इज ए रेस्टोरेंट बिल जनरेटर. सो ये सिंपल है और सिमिलर है हम एटीएम रिसीट वाले प्रोजेक्ट से. सो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, सो इस प्रोजेक्ट में हम एक फंक्शन लेंगे दैट विल बी बिल. उसमें हम तीन पैरामीटर लेंगे दैट इज आइटम, उसका हम फिर लेंगे क्वांटिटी एंड लेंगे हम प्राइस ऑफ अ सिंगल आइटम. So इस इन तीन पैरामीटर से हम कैलकुलेट करेंगे what will be the total amount of the amount of that item, means in terms of rupees, and then we will print item and its item name, quantity and the quantity of that item that is ordered in the bill, price per item and we will print the price, and total bill when we will print the total bill by multiplying the quantity into price. So and then we will call this function for multiple cases. So let's do this. You can do this with me or simply can see.
how to do this type of question, and we have already done kind of this kind of question, but still, practice is never. This way, quantity price. This will give us the total price of the item, and then we'll simply and all the information in beautiful numbers. First, we'll bring the total bill of that item, which is total. Now we will call this function for different items, and they will say we just need to provide this value for these three parameters, and we will get the bill for that item. So say we have a bill for burger. We two burgers were ordered, and one burger cost from 50 rupees. And we have another item that is say pizza. Um, one pizza was ordered, and one pizza cost for 50 rupees. Now we will see the how the bill will look for both of these items from. So we get the bill for the items that we ordered. We ordered burger, two items, each was 150. So the total bill for burger is 300 rupees. And we ordered pizza, quantity was one, price per item was 450, so total bill become 450. So ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है और लेकिन इसमें हमने फंक्शन पैरामीटर और कैलकुलेशन तीनों का कंबाइन किया इसी तरह ग्रेजुअली हम बड़े एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे सो नाउ आई विल do a mini quiz for you guys. I will ask you question, pause the video, try to think about the answer, and then see if you think correctly about it. So it's kind of variation. So what is a parameter? So I hope you guys will know it already that parameter is a variable written while defining a function. So it's a variable that that when we are defining the function, and it also sets the requirement for the function call that the what type of and how many arguments are required when we are calling the function call. Now the second question is what is an argument? So I hope you also would have answered it correctly. So the actual value that is passed while calling a function is called as an argument. Now, can a function have multiple parameters? This is question 3. I have to think about it. Yes, a function can have multiple parameters, which we can see here also. Now, the fourth question is, does the order of argument matter when we are calling a function? So the correct answer is yes. The order of argument matter because if we exchange these two, then the value provided to item will be 2 and quantity will be bulk, which will be very wrong. So can we, the fifth question and the last question will be, can we call the same function multiple times with different arguments? So absolutely we can call it and here we can see the example also. So आज हमने फंक्शन को और पावरफुल बना दिया हमने पैरामीटर और आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस समझा हमने एक पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर वाली फंक्शन देखी और हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे एटीएम रिसीप्ट स्टूडेंट रिपोर्ट और रेस्टोरेंट बिल जनरेटर भी बना सो अब आपके फंक्शन फिक्स नहीं रहे अब वो डिफरेंट डेटा के साथ काम कर सकते हैं सो एक्सेलेंट वर्क लेकिन अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है
अभी तक हमारे फंक्शन सिर्फ आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे फंक्शन की कोई वैल्यू वापस चाहिए हो, जैसे कैलकुलेटर का आंसर या स्टूडेंट का ग्रेड या किसी प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस, तब सिर्फ प्रिंट काफी नहीं होगा। उसके लिए पाइथन हमें देता है रिटर्न स्टेटमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंक्शन डेटा को वापस कैसे भेजता है और रिटर्न क्यों प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड माना जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट के बारे में सीखा और हम फंक्शन का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट्स। सो अब तक हमारा फंक्शन सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में सिर्फ आउटपुट प्रिंट करना काफी नहीं होता। हमें फंक्शन का रिजल्ट को फ्यूचर कैलकुलेशन में भी यूज करना पड़ता है, और इसी काम के लिए पाइथन हमें रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। और साथ ही इस लेक्चर में हम वेरिएबल स्कोप भी समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि फंक्शन के अंदर और बाहर वाले वेरिएबल्स कैसा बिहेव करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड रिटर्न? सो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज आप रेस्टोरेंट गए एंड कस्टमर ऑर्डर देता है, शेफ किचन में फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन अगर शेफ को कस्टमर तक भेजे ही ना, तो कस्टमर उसे उसे अ, कैसे यूज कर उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। सो फंक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर होती है और रिटर्न उस रिजल्ट को फंक्शन के बाहर भेजता है। सो अगर रिटर्न नहीं होगा, तो बाकी प्रोग्राम उस आंसर का यूज नहीं करता। So we will take a first example. Let's say that uh, if you it return. This is the written statement we were talking about. It will return equals b, equals the colon, and the answer is add 10, not we will print the answer. So you can see this program starts to look different already. So what is happening here? First we will run it and we get the answer 30. We would have get it on the same if we had written we have written print here. So यहाँ फंक्शन ने आंसर प्रिंट नहीं किया, उसने आंसर हमें रिटर्न करना है थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट, और हमने उस रिटर्न वैल्यू को आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और हम इस वैल्यू को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो the simple सा concept है, that is return statement simply returns this value to the line uh, which called the function. So simply this whole get replaced by this value here, and as it got replaced here, this value gets stored in the answer. Now answer have is storing the value which is written by the function. So now that value get printed from this here. So अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे. So let's say we will write a function which will be named calculate GST, and the parameter of it will be a price. So simply GST on the price is equal to, let's say, and we will return the GST that was applied on the product. So now if say we have product whose price is 100, then tax on that product is calculate
GSP. The product price will be the argument here, and the final price is product price plus tax, which we calculated using the function calculate GST. Simply, we will print GST equals to tax and print final price equals to final price. So what we are doing here, so we instead of doing everything inside the function, we have simply made a function that we needed, and that was calculate GST, and we simply used it only at this place where it was required to calculate the tax, and then whatever the value got calculated, it got written by the function, means this thing is replaced by the uh, GST variable which stores this value, and, and simply we enter text to the product price, and then we print the GST amount and the final price. So let's run this program to see if there's no problem, and it run very fine. So notice करिए फंक्शन सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट कर रहा है और प्रिंटिंग का डिसीजन मेन प्रोग्राम हो रहा है और इसी वजह से रिटर्न रीयूजेबल होता है. So now we will see what is the difference between return and print statement. So ये बिगनर्स का सबसे कॉमन कंफ्यूजन है, इसलिए इस डिफरेंस को हम बहुत ध्यान से समझेंगे. So let's take an example. We have a function square which have the parameter number. We will print that square of that number with exponent operator, then we will with like this. And then we will print that result. So now you guys will pause the video and 1 सेकंड सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्या ये हमने इसको सही लिखा है या इसमें कोई गलती है. So pause the video and try it first. तो अब इसे हम रन करेंगे. The output is no, and that means we do get the means 25 due to this statement here, but due to this statement we got no. So reason simple है, फंक्शन ने स्क्वायर प्रिंट तो कर दिया लेकिन with उसे वैल्यू को रिटर्न नहीं किया, इसलिए वेरिएबल रिजल्ट के अंदर नन स्टोर, because by default when we are not returning anything using the return statement, by default none get written by the function. So here the function returned none, and this was replaced by none, and hence result variable is storing value that is none, and it got printed here due to this print statement. So the correct version of it will be, instead of printing the square here, we will return this value which will replace this here, and we will get the square of 5 which will get stored in result, and then the result will get printed and it will be the correct form of this. Let's run it again and we get 25. So अब आंसर रिटर्न हुआ और वेरिएबल के अंदर भी वही वैल्यू आ गई. So now we will discuss a topic that is returning different data types. So return सिर्फ numbers के लिए नहीं होता, ये almost किसी भी Python object को return कर सकता है. So let's say we have a program that welcome name return from
Space, message equals to welcome to Rahul. Everything that. So what we are doing here, we are instead of returning any number or returning nothing, we are returning a string. So this is the string that we are returning here, and it will include the argument that will be passed through the parameter. It will get concatenated in here, and it will get returned, and it will replace this function call and get stored in this variable, and then will get finally. So now we will run it and see what we get here. So we got, let's see, run it, welcome home. So this issue, you would have seen it throughout the video, is due to the code runner extension. It's not added in the code, it's simply issue of the extension, but it's not a big issue, just you can just rerun it to fix it. So now we seen that how we can return a string from a function. Now we will see how a function can return a boolean value. So let's go. Def is even. This is a function that will receive a number and will return true or false according to the number is even or false. Or if it will be even, the function will return true, and if the function is odd, the function will return false. So it's a very simple program, and from here we will get an idea that how a function returns a boolean value. So let's go. We will take the parameter as a number, and we will return number. So we are using the remainder operator and this equals to operator, which will simply compare if the number remainder 2 is equals to 0 or not. If it will be 0, we return true, and that will also prove that the number is even. So here we are basically defining a boolean value, so which will get returned, and we instead of now storing that in the variable, we are simply printing it directly. So what's happening here? So when we call this function, 8 goes here, 8 remainder 2 is equals to 0, 0 equals to 0 is true. So the true, boolean value is returned, means it true replaces for this whole function call, hence it is like print true here now, hence print get printed, true get printed, and hence we get this. So यानी फंक्शन सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं डिसीजन भी रिटर्न कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. सो नाउ हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ना ही बस सिर्फ एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बट मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज देखेंगे एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर very useful and are used in a lot of ways and in many programs. And this make some prob this make some problems very easy to solve. So see this example where we will learn how to handle multiple return statements and what it basically means also. So say if marks is greater than 90, we will return. So what we are doing in this question, so we are defining a function that is named as grade. We are taking a parameter that is marks, and we are comparing that marks with, let's say, 90, 75, and 40. If the marks are greater than equals to 90, then we will return A. If the marks is greater than equals to 75, we will return B. And if the marks is greater than equals to 40, we will return pass. And if any of these are not true, we will simply return fail. And the special thing about return statement is it marks the end of the function. Means as soon as return statement is evaluated,
The value is returned by the function and function simply gets terminated. No matter how many lines are there after the return statement, they will simply be ignored and just will never get executed. So once a return statement is executed, anything after it will get not executed and will get ignored. So we will write the program. Ask return equals to what we return first. We are returning string title, and if none of these are true, finally return fail. So here if marks will be greater than 90, a string will get returned and none of these will get evaluated or executed. And if it is not true, this statement will not run. So the function will continue to run and it will see if marks is greater than or equal to 75 or not. If it's true, this statement will get executed. B will be returned by the function and the function will terminate. If not, this line is not executed, hence this will execute. And this way we'll get to this last line, which eventually will return fail to the function call. Now again, we will not store the value returned by the function, we will simply print it up like this. So now we'll run it and we got A because 92 is greater than equals to 90. So जैसे ही कोई रिटर्न एग्जीक्यूट होता है फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है और बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता. So to see this in action, we can try one more example. So we have a function named demo. We don't take any parameters. Let print one and then it return nothing. But we this return statement to get executed here and then we print line 2. Then we will see what will happen when we run the function. So thing the thing is here that if we have learned the things right, and that is that the function get terminated once the return is executed. And so if that case is true, then line 2 should not get printed as return is written just before it. So when the return statement get executed, print line 2 will not get executed every time the function is called. And you can see when VS Code is showing us that by bring bring this line out here. So we will run it and save that in my action, and you can see only line 1 got printed. This line didn't even got executed because return terminates the function before the print line 2 could get executed. So this was all about the return statement. Now we will move on to variable scope. So अब बात करते हैं हम वेरिएबल स्कोप की. स्कोप का मतलब होता है वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है. पाइथन में मेनली दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स. So local variables, we will see example where we have that student name equals to private will call this function. We run it, maybe not the name here. सो नेम सिर्फ फंक्शन के अंदर एडजस्ट करता है, फंक्शन खत्म वेरिएबल भी खत्म. मीन्स दिस वेरिएबल दैट इज इनसाइड द फंक्शन इज अ लोकल वेरिएबल and it is not accessible outside the function. For example, if we try to access this variable which is storing the value name equals to Rahul, if we try to access it outside of the function by printing it, we will get a error because print this variable is not
valid and is not defined outside of the function. We can access it in any number of times inside the function, but outside the function, this variable is just not accessible. So ये error देगा क्योंकि name function के बाद access भी नहीं करता. Now we will see what are global variables. So let's say we have written a variable that is outside of any function. We write a function say show which brings show. So what's different here? So instead of us defining the variable inside the function, we have defined it outside the function. Now we can see there is no red marking here. It means even inside the function that variable name is accessible, even if name is not a parameter or an argument in the function. It's simply a variable defined outside of the function, but it's still accessible inside the function. So because here name is a global variable means it's accessible uh, everywhere after it's defined. So it's accessible even inside the function. And we can see here it's accessible here also because simply it's defined outside, so it's accessible outside also. Now we will see it and we'll show no error here. See, there were no error because it was accessible both inside and outside of the function. So now एक छोटा सा क्विज लेते हैं. So आप वीडियो पॉज करेंगे and you will try to answer this question at the and then we'll see if we have answered the question correctly or not. So the first question is what is the difference between print statement and the return statement? Pause the video and try to think it out. So the answer is the print statement displays the value on the screen while return sends the value back to the column. That is the column that we do by writing the function name and the parenthesis. Now the second question is, does return immediately end the function? So try to answer the question. So the answer is yes. The return statement do terminates the function as soon as it got executed. Now, the third question is, can a function return a string or a boolean value? So answer obviously is yes. A function can return a string or a boolean value, and we even saw it by doing it in our course here. So now the fourth question is, where can a local variable can be accessed? So the answer is the local variable can only be accessed inside the function. It cannot be accessed outside the function. So congratulations, आपने function module successfully complete कर लिया है. इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइन और कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड रिटर्न, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. अब आप रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम लिख सकते हैं जो प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. So now in the next lecture we will start classes, and it's a very important concept not only in Python but many other object-oriented programming languages. So it's a very uh, key concept to know and to understand. So I will see you in the next section. So hello everyone, uh, welcome back. अब तक हम वेरिएबल्स यूज कर लेते आ रहे थे और हम जानते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है. सो फॉर एग्जांपल दैट name is equals to 1. So
लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हमें एक साथ बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी पड़ती हैं। जैसे एक क्लास का स्टूडेंट्स, शॉपिंग कार्ट्स के प्रोडक्ट्स या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज। हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पाइथन कलेक्शंस। आज हम तीन इम्पोर्टेंट कलेक्शन सीखेंगे, दैट आर लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। सो शुरू करते हैं लिस्ट से। सो व्हाट इज अ लिस्ट? सो लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। एंड लिस्ट म्यूटेबल होती हैं, मतलब हम बाद में इनके एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अनलाइक स्ट्रिंग एंड टपल्स, जिसे हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो हम उसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते without doing workarounds. We are workarounds to change the elements, but not directly as we can do in mutable data types like list, dictionary, sets, and sets. So let's see how a list look like. So we have already learned how to make a list. Not indirectly, but indirectly we already know that is we for making a list we use square brackets, and in square brackets we simply write elements like this, comma separated elements, where the elements don't need to be of the same data type. So this is the list of strings, but it can also have integers inside it, or even another list inside it. Means any element can be part of a list. It don't need to be of same data type. So यहाँ पे हमने तीन fruits element लिया और एक integer या एक list itself लिया, हमने एक list को inside. So now एक important concept आता है, that is indexing. So indexing हम use करते हैं to access the element inside the list. So say we have a list which is fruit here. So if we want to access, say, element first of the list, then we can do it by writing it like this. That is, if we write the name of the list, square bracket, and inside it we write 0, then we will be able to access the first element of the list. That is apple. So why 0? Because in Python indexing 0 से start होती है. So the first element is represented by 0, second by 1, third by 2, and this is like 4, and this is 5. और एक और इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, अगर आप रिवर्स में आना चाहें तो इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय -1, second has by -2, similarly -3, -4, and -5. So if we want to access, say, the last element, which is itself a list, we can simply write -1, and that will access us the last element, which is a list of 1 and 2. So let's we show you another example of accessing the second element by square brackets 1, and it will access the banana here. This is so as a list is mutable means we can change element inside it directly. We can do something like this. So what we have done here, we have simply said to the Python that the element that is at the second position on the list, that is banana, make it equals to orange. Means we have said that whatever is there at the first index of the list, make its value equals to orange and overwrite it simply. Means banana, this value will get lost and this value will get overridden over banana. Now, if we can see this change if we try to print the list. So see, now we have apple, orange, mango instead of banana here. So we have permanently uh, changed the list here.
So now we will see one method of list. Uh, let's give the list here. So say we want to add another fruit inside this list. So we can do it by using append method. So here whatever we can add anything here and it will simply get added at the end of the list. And you can see, let me print the list here. You can see the kiwi fruit got added at the end of the list. So this method we are calling because we use dot notation here. And whatever will we write here will get added at the end of the list. It's always added in the end of the list. Now, say we want to remove an element inside a list. So for that we have another method that is called as dot remove method. So it we will simply write friend dot remove and then we will write the name of the element. We will write the element that we want to remove. Say we want to remove an element which is apple. So Python will search for this element inside the list and if we find it, it simply will remove it from the list. It found, let's print it. So Python found apple in the list and we removed it. But say if apple was used. So this element is not present in the root list. So let's see what will happen. Yeah, we will get it. So if the element is not in the list and if we try to remove it, we will get a error. So हमने ये चीज अगर हम एक हर एलिमेंट ऑफ लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं उसके लिए हमने ये एग्जांपल दिखा दी है व्हेन वी वर स्टडिंग फॉर लूप so say we want to print all the fields that are present inside the list for some of them we can simply use the for loop to look through this list. Yeah. So we access each of the elements in the list and we print it. So now this was all about this. There are some more things on our list, but we are not discussing it here. Now we have tuples. So now next collection data tab we are talking about is tuple. So अब बात करते हैं टपल्स की टपल लिस्ट की तरह ही होती है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है इसमें दैट इज टपल आर इम्यूटेबल मीन्स उसमें हम एक बार हमने टपल अगर हमने डिफाइन कर दी हमने टपल एक बना दी तो हम उसके बाद उसके एलिमेंट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते दे आर वर्क अराउंड टू चेंज इट और डायरेक्टली वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द टपल we will now see how to create a tuple. Let's say we have available name color. For making tuple, we use bracket, not square bracket, normal brackets, and anything that we will write, and it will become the element of the tuple. We can see as list and any data types inside the tuple. Now we will print it, dot tuple as this. उसमें भी हम सेम लिस्ट के जैसे ही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्सिंग that is using the square bracket say this will give us the what it will give us the second element that is p now but if it that's where the similarity between list and tuple ends so let's say if we try to change any element in the list with any other thing by say using indexing it will not be possible because Apple are immutable and hence we will get a data like this thing. So क्योंकि tuple immutable होता है so क्वेश्चन आएगा फिर कि tuple हम यूज ही क्यों करें जब हमें डेटा जब हमें इन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो हम tuple यूज क्यों करें सो हम tuple यूज करते हैं जब हमें डेटा परमानेंटली सेम रखना हो और हमें
जब डेटा को कभी चेंज नहीं होने देना इन एनी सर्कमस्टेंसेस, जैसे मंथ्स, डेज ऑफ वीक, 24, ये कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है और हम नहीं चाहते कि इनके संग कोई भी छेड़छाड़ करे, and we store that data inside a tuple instead of in uh, a list. Now we will come on to the third type of collection data types, that is dictionaries. So अब हम इसे पढ़ेंगे और ये पाइथन का एक बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें हम वैल्यूज को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हम वैल्यूज को कीज के थ्रू एक्सेस करते हैं. So I will first show you an example how a dictionary look like. So we have a dictionary like this. Using enter to make it look cleaner. We first name the write the name of the key. This is a key here. Then we write a colon and we write the name of the value of the key, comma. We will write another key, say age, and we will write the value of the key, comma, then the key and the value of the key. So, what is a dictionary? Dictionary is a collection of key value pairs which are separated by commas. So, this is a key value pair, this is a key value pair, this is a key value pair. Yeah, these are the keys and these are the values. Where the thing is, two keys can never be same, means we cannot add here say name. Hmm. This will give us an error because there are two keys having the same name. That's just not allowed. Those values can have any number of duplicate values. There is no issue there. Now we will run it. There is no error. Now we will see how we can access the values inside a dictionary like we do English. So to access any value inside a dictionary, we will write dictionary name, and we will use square bracket, and then in the square bracket, we will simply write the name of the key. Now, whatever we enter, whichever keys name we enter, we will get in return the value that key is stored. So, name key is storing value Rahul, hence we got Rahul printed there. Now, dictionary as mutable means we can change the value of keys inside the dictionary. So if we say student name is equals to Anand, not Rahul, then this change will occur, and if we say full dictionary, we will see that change. See, now name is changed from Rahul to Anand. So before it was like before it, the name was Rahul, but after we did this, the name changed to Anand. So, just like list, we can also loop through the dictionary using for loop. For that, we use this. We write code like this. So, what is happening here? So, when we loop through a dictionary, so the loop variable takes the value of each of the key in each iteration. So, in the first iteration, key will get equals to name. We can write it any variable. We can give it any name. So, let's say A for removing any confusion between me here. So now A will get equals to name here. So name will get printed. We will have a column, then student, square bracket, and inside it, name will be there. And this will allow us to access the value inside the dictionary, which have a key name. So simply it will print Rahul. And the second iteration, A will become equals to age. So age will get printed here, and the
Student square bracket age will give us access to the value 19 here. So this way we can see element inside the dictionary. And we can see where we got. So uh, चलिए अब हम इन तीनों collection data types का difference quickly देखते हैं. So what are lists? Lists are ordered, mutable, and they are written between square brackets. Now what are tuples? They are also ordered, but they are immutable, and they are written enclosed between the brackets. And now at last, what dictionary? Dictionary is simply written making the curly braces, and there are key value pairs, comma separated key value pairs, and dictionary is also mutable, just like list. So now we will do quick quiz questions. We will pause the video and try to answer the question. So which collection data type are mutable? You can answer any number of them. Means जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हैं आप सारे collection data को list कर सकते हैं. So answer is list and dictionary. Both of these are mutable data types. And if we talk about immutable data types, then string, tuple are immutable collection data types. Now, which collection cannot be modified? The answer is tuple. String is also a type of collection. It is a collection of characters, and it is also cannot be modified, so it's also immutable. Now, the third question is which collection stores key-valued pair? So the answer is dictionary. Dictionary stores the key-value pairs. Now, which type of bracket are used in list, tuple, and dictionary? Answer for each of them. So the answer is list uses square brackets, tuple uses normal brackets, and dictionary uses curly braces. Now, so great. आज हमने पाइथन के तीन important collections सीखे. लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी. ये डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के सबसे कॉमन वेज हैं. अब हम डेटा को वेरिएबल्स, कलेक्शन और फंक्शन की हेल्प से मैनेज करना सीख चुके हैं. लेकिन एक फाइनल कंसेप्ट अभी भी बाकी है. अगर हमें डेटा और उस पर परफॉर्म होने वाले एक्शंस को एक साथ ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए पाइथन प्रोवाइड करता है हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स. सो अगर इसी के साथ हम एंटर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो इसका फाइनल और सबसे एक्साइटिंग मॉड्यूल होगा. मैंने ये वाला कंसेप्ट दैट इज लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी कवर कर दिया है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट क्लासेस as I had forgotten it and to add it in the course. Now I have added. So next lecture we will see the last module of this course, which will be classes or object-oriented programming. So see you in the next section. So hello everyone, welcome to the final module of the Python course. So सबसे पहले congratulations. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने Python के बहुत से सारे important concepts successfully complete कर लिए हैं. हमने variables, data types, operator, conditional statements, loops, functions and collection data types सब अब cover कर चुके हैं. लेकिन अब एक क्वेश्चन है. अब तक हम सिर्फ छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे थे. लेकिन अगर हमें एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या शॉपिंग वेबसाइट बनानी हो तो क्या सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन काफी होंगे? नहीं. जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता है उसका कोड ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी हो जाता है. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज oops. और oops का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. आज हम इन दोनों कंसेप्ट को बिगनर फ्रेंडली एग्जांपल के साथ समझेंगे. व्हाट इज क्लास?
सबसे पहले समझते हैं कि क्लास क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब एक डिजाइन, एक प्लान या एक मॉडल। सो फॉर एग्जांपल हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो सपोज एक कार कंपनी को एक ही मॉडल की 10,000 कार बनानी है। तो वो हर कार का डिजाइन अलग से नहीं बनाता, वो कंपनी अलग से नहीं बनाती। पहले एक वो कंपनी वो एक ब्लूप्रिंट बनाएगी और उस ब्लूप्रिंट की बेसिस पर हजारों कार बनाई जाती है। सो पाइथन में भी हमारे पास क्लास है जो उस ब्लूप्रिंट के जैसे काम करती है। Now another question is what is an object? अब क्वेश्चन है कि अगर क्लास ब्लूप्रिंट है तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनी हुई वो रियल चीज है। That is, if class is the design or the blueprint of the car, then object is the car. एक ब्लूप्रिंट से बहुत सी कार बन सकती हैं, वैसे ही एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। Another real life example will take, for example, हमारे पास एक क्लास है which equals to student. हर स्टूडेंट का नाम अलग है, रोल नंबर अलग है, मार्क्स अलग है, लेकिन सब स्टूडेंट एक ही टाइप के हैं। इसलिए हम एक स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं और उनमें उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं to represent each of the student. Now we will create our first class here. What is the syntax or how do we make the class? To make class, we simply write the class keyword, name of the class, and then simply the blueprint of the class. Here we are just using past because we have not decided what we are going to add in the content of the class here. पाइथन में हम क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड टैग यूज करते हैं। उसके बाद क्लास का नाम आता है और अभी इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है भरने के लिए, तो इसलिए हमने पास लिखा है विच इज अ प्लेस होल्डर कीवर्ड। Now we have a class now. It's a simple class, it don't have anything special in it, but still we have a class. Now we can make a object using it. That is, we have made the blueprint of the car. Now we will make the car actual car itself. Let's make the object. For making an object, we will define a variable say name student, and student will be equals to student. We will print it. यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्लास का नाम पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं। Same like the function, but it's different from it. This give us an object, which means this variable now became an object of class student. Now let's see what we will get after running this. Run it again, and you see we get that the student variable is now an object of class student. Now इसके आगे हम बढ़ते हैं in class by learning the concept of adding attributes. अभी हमने क्लास के ऑब्जेक्ट के पास कोई हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए हम इस क्लास के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, मीन्स क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट। say we have an object or say student one, we will make it a object of class student. Uh, let's say student one का नाम है Harry. Student one का रोल नंबर है से 48 and student one का ब्रांच है CS. Now these are the information that we have provided about the object student one, and
These will now be stored about the student one permanently. Means as long as the program is running. Now, to see if these are stored or not, we can simply run print each of these items. So the very and we got all of these are stored in this objects information and we can access them using dot notation. So ये values object के attributes कहलाती है और हर object को अपने अलग अलग हर object के अपने अलग अलग attributes हो सकते हैं. So now we will make a say. Now we will make an another object like let's say student 2 which is also a student means it derive itself from student 1. Say student 1 name is student 2 name um, now we will print it. So what's happening here? We have created two objects here from the class student where we have provided each of the objects their individual names and see if they will get printed or not and let's click. So notice करिए दोनों ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बने हैं लेकिन दोनों का डेटा अलग है यही उसकी पावर. ना अब एक प्रॉब्लम है अगर हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार एट्रीब्यूट्स लिखने पड़े लाइक दिस तो कोड लंबा हो जाएगा और इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट. सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड which is the init method. It's look like this double underscore init double underscore. So ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या है? So ये कंस्ट्रक्टर मेथड एक फंक्शन है जो हम लिखते हैं इनसाइड द क्लास like this def double underscore init double underscore then we write self program I will show you what we are doing here and self name is self तो यहाँ पे इन इट ऑटोमेट एक ऐसा फंक्शन अब बन चुका है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो से इफ वी मेक अ ऑब्जेक्ट student 1 is equals to student then this function will get automatically executed as soon as this line get executed. And as this function will execute it, it will require three arguments while three arguments when we are creating the object. So we will now need to provide the value for these three parameters here. Otherwise, we would get a error like this. So what are these three parameters? The first parameter is self. So this is a parameter for which we don't need to provide a value. It simply represents the object which get passed automatically when we write this line. So this self here represents student 1 in this case. So we just need to provide these two values, say 12 and 43. So now we have in this line provided all the three values for the parameter that is self, which is student 1 itself, that is the object. Rahul with name here and roll number is 48.
Now, as the line is executed, this function get executed on its own, and then these three values are provided like this. So now we don't need to write to provide the attributes for each of the object we need. We simply can provide it while making the object like this, and uh, they will automatically get stored in this object, just like we were doing student1 dot name. It is same as that, but just it's happening inside the class. So it simply means student1 dot name is equals to name, which here we have provided here. Student1 dot roll number is equals to 48, which we have provided here. We can even see it by printing it here. So student1, let's see what we have here. And it's done. So it worked in the same way. The only thing, the difference is we are just dividing it here. So let's take another example where we have another object which is also a student, and his name is Aman, and his roll number is say 50. So it is will create another object, it will pass student 2 as self, name Aman as name, 50 as roll number, and then it will be student 2 dot name is Aman, student 2 dot roll number is 50. We can print this also student. You see this happened wonderfully. So अब देखिए कितना क्लीन कोड हो चुका है और हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही उसका डेटा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रहा है. सो अब हम सेल्फ को फिर से समझने की कोशिश करें. तो अब हमसे कॉमन बिगिनर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सेल्फ क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में. सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू. ना हम आते हैं मेथड्स पे. हमने समझ लिया कि ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, खुद इनिशियलाइज हो जाता है जब हम एक ऑब्जेक्ट पर आते हैं, और यहाँ पे सेल्फ और ये सब पैरामीटर्स के. तो हम आते हैं मेथड पे. सो अब तक हमारे ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ डेटा का मीन्स हम वी आर स्टोरिंग डेटा अबाउट द ऑब्जेक्ट हियर, so like this, the name of the object, the roll number of the object. लेकिन ऑब्जेक्ट एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, और इन एक्शन को कहते हैं मेथड्स. So let's see how we write method for each object. So for writing a method, we simply define our function inside the class. So let's say we want a action for this student object that is introduce. So what this action do for the object is it introduces the student simply. So well, what we will do is when this method is called upon an object, then simply the full introduction of our student will get printed in a beautiful manner. For example, hello, I roll number is will be 12. So now this has become a if cell become a method or an action, then we can now perform on these objects individually. So what will it will do and how to all this action. So simply we will write the object name on to need to do this action. We will use dot notation, and then we'll simply write the method name, and that's it. Uh, Now here the parameter is self here. Every method have a parameter which is self, because we are providing this
object name to this function here. So it will be student1, and then we will write student1 dot name will get access from here, and student1 dot roll will get access from here. So self represent the student, and through its representation, we can access the data stored inside it, that is roll number and name. And we will run it, and we got the introduction of the student one. If we want the introduction of student two, we'll simply write the name of object and use the introduce action or method of it. Now to we get the introduction of the second student also. So चलिए अब हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम अगेन एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। हम उस क्लास में कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट का नाम एंड मार्क्स, and then we will define a method inside the class that will display the name and the marks of the student. So let's make it back. We will make a class first, name student. We will make a constructor which we get self-initiated. We will provide the object as the parameter. We will provide the name as the parameter and the marks of as parameter. And then we will store it and it inside the object using self.name, self. And then we will make the method which will be for display. It will simply take only the object as a parameter and will print the name of the student and access the name from self, and will print the marks of the student and also will access them from the self. Now we will make one object, say student one. We will initialize it by the class name. Self will get automatically the student one as the argument. We just put it right now the name and marks of the student. And once we have provided the information, we have an object for student one with its information. Now we will simply use the method on it to display that information. So we got it. सो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। हमने एक क्लास बनाई, उसके एक ऑब्जेक्ट बनाए और हर ऑब्जेक्ट अपना खुद का डेटा स्टोर कर रहा है। सो नाउ वी विल एक कॉमन बिगनर मिस्टेक्स कहते हैं जो मैंने यहाँ पे खुद कर रखी है। सो मिस्टेक नंबर वन इज क्लास का नाम लोअर केस रखना। सो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लास नेम्स हमेशा पास्कल केस में लिखे जाते हैं, and Pascal case is anything written like this. That is, the first letter of each word is written in capital letter and all other letters are left in lowercase letter. So जैसे अगर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई तो हम स्टूडेंट क्लास ऐसे लिखेंगे, ना कि all in lowercase. And so this is a convention that is followed generally to write the name of the classes, and you can see this being followed in documentation and code of all different Python programmers. मिस्टेक टू है कि क्लास में बहुत लोग सेल्फ लिखना भूल जाते हैं, but it's inside the constructor function or any methods, but self is very important to be written as a parameter of the class. Without it, things will just not work. So now we will do some challenge question. So first challenge question हमारे पास, वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे।
So the description of this challenge is we will make a class which will be named car. इस कार फंक्शन को जब हम उस क्लास को जब हम इनिशिएट करेंगे जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन फंक्शन इनिशियलाइज होगा और वो इनिशियलाइज होके यूजर से मांगेगा ब्रांड ऑफ द कार एंड मॉडल ऑफ द कार. So हमें वो प्रोवाइड करनी है when we are making the object of this class and simply provide it the information and then write a method that will display this information when dot display method on any object is called. So pause the video and try this yourself. So now I will do this question for you guys. We have done the similar things. We will write the initialize a constructor function. We'll take self as a parameter, then as a parameter, and model as a parameter. We will simply take brand, store brand method on the object like this, and model of the car like this. Now we will make a method to display the model and the brand of the car. If itself as the parameter as entry. Function inside class takes self as a parameter as it store the value data about it. Then parameters self model as self. Now we will make an object one and provide with the information explain and its model. We will now simply display the information using the display factor. Now we will run it and we got the search. If there is some spelling mistake, we run it and we got the answer. So this was all about the classes there. Now we will do a mini quiz where you will pause the video and try to question it on yourself. So what is a class? A simple basic question. So pause the video, try to think of the answer and then match it with the answer. So class is a blueprint or template for creating object. Now the second question is what is an object? So object is an instance of a class. Means as we have understood it from an example, if class is the blueprint, then objects are the products that are made using that blueprint. Now, what does self represent inside a class? So inside the class, self represents the current object we are working on, and using self, we can access the data stored inside the object. Now, what is the purpose of init function inside the class? This is our question 4 or 5. And the answer is the purpose of init function is to initialize an object when it's created and to store the initial data about the object that make it free. So congratulations, आपने इस Python कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया. इस कोर्स में हमने पाइथन की कंप्लीट बिगनर फाउंडेशन कवर की. हमने प्रोग्रामिंग की बेसिक से शुरुआत की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक सफर कंप्लीट किया. लेकिन याद रखिए प्रोग्रामिंग सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आती है. इसलिए जितना हो सके खुद प्रोग्रामिंग की
मिस्टेक करिए, उन्हें डीबग करिए और नए प्रोजेक्ट बनाइए। यही प्रोसेस आपको एक कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर बनाएगा। Thank you so much for watching this course and I hope this series इस सीरीज से आपको पाइथन लर्निंग जर्नी में हेल्प मिली होगी। Happy coding and I will see you in the next course. Bye guys. Bye.